Hi everyone, a very good evening to each one of you. Myself, Dr. Vaibhav Jain, and today we are going to discuss about the subject of anesthesia. Please give me a quick confirmation so that we can proceed with the session. Let me know whether I'm clearly audible and visible. Audio visuals are okay, then we can proceed for the session. Hello, Dr. Hari. Good evening. Good evening. Welcome to the session, guys. So today what we are going to proceed, we are going to do the subject of anesthesiology. We are going to focus on all the high yield topics that can be asked from this particular subject. There are not a lot of questions are coming from this particular subject, but yes, it is very important for understanding because when you are going to work on a hospital, you should be knowing about the anesthesia as well as it is allied with the surgical parts also, right? So we will be focusing on all the important questions that would be good enough for your examination. You will be able to solve most of the questions, right? I have kept the things quick, crisp and concise, so feel free about anything. I will be covering most of the things, right? Yes, I have incorporated all the questions, all the previous year questions. So first we will be learning about the things, then we will also solve the questions together, right? Hello, Lokesh, Neat, Nitigya. Yeah, welcome. So, what is going to be the sequence? So, we are going to study again in the form of a story. So, we are going to start it off with the introduction. Then, we are going to discuss what are the different types of anesthesias we are having. Then, we are going to discuss about the pre-anesthetic checkup. Pre-anesthetic checkup, we are going to see about the intubation, monitors, anesthesia machine, and anesthesia circuits, right? And then we are going to discuss about the different anesthetic agents, oxygen therapy, fluids, and miscellaneous topics. So this is what we are going to discuss today, right? In the introduction we will study. Yes, I will be covering everything, don't worry about it. Just be with me till the end of the session and please try to be interactive. Whatever I am going to ask, you have to answer, right? So I'm going to teach you in a fashion that a patient is coming to you for some kind of a surgery, then the surgeon will send the patient to the anesthesia department. What will happen in that particular anesthesia department? We will be doing what? Pre-anesthetic checkup. After the pre-anesthetic checkup, the patient will be it is a kind of elective surgery. If it is elective surgery, then the patient will be coming again with the some kind of drugs he will be taking. We are giving some anxiolytics, right? All these things we will be discussing. When the patient will come, we are going to intubate that patient. What are the different kind of intubations we are having, right? When the patient will be intubated, he will be in the OT room, so we are having different monitors. We are going to discuss about that. We are having anesthesia machine. What are the important components and what are the questions being asked on that? We are going to see that, right? An anesthesia machine and patient will be connected with the help of a circuit, right? So we will be discussing about that particular circuit, or uske baad mein we are going to see about the anesthetic agent. What are the different kind of anesthetic agents we are having? We are having a look on that, right? And lastly, oxygen therapy and fluids. So this is how we are going to see, right? So let's begin with the history part. What is the history? Who is this particular gentleman in front of you? This was the question they have asked you. So this is your WTG Morton. WTG Morton. He is also known as father of anesthesia. He is also known as father of anesthesia. This WTG Morton is known as father of anesthesia. Can anyone tell me when we celebrate the anesthesia day? And who has given the term anesthesia? Remember, the term anesthesia was given by Oliver Wendell Holmes. The term anesthesia was given by Oliver Wendell Holmes, right? When do we celebrate World Anesthesia Day? World Anesthesia Day, right? We celebrate World Anesthesia Day on 16th of October, 1846. 1846 was the time. So what was happening? He was the scientist. This is known as WTG Morton. He has firstly demonstrated the ether, right? He has demonstrated the first time anesthesia, right? One more scientist who was standing there, he is your Oliver Wendell Holmes. तो उन्होंने देखा something is happening and he has coined the term anesthesia. The term anesthesia means absence of sensation, right? And what was the date? The day was 16th of October 1846, right?
So that is going to be World Anesthesia Day. Who is this particular gentleman? This is your PSM question also. He is your John Snow. He is your John Snow. John Snow is also considered as the father of, he is also considered as the father of epidemiology. We study epidemiology in PSM. So father of epidemiology is going to be John Snow. John Snow. He is also a practicing anesthetist, right? He has also done the anesthesia, right? Then who is this particular scientist and what is this machine? This is your Edmund Gaskin Boyle. This is your Edmund Gaskin Boyle, and he has given the Boyle's machine. He has given the Boyle's machine. He has given the Boyle's machine. So Boyle's machine किसने दिया? Gaskin Boyle ने, right? Who is the father of anesthesia? That is going to be W.T.G. Morton. And who is this John Snow? He is also anesthesiologist, right? He is also known as the father of epidemiology, right? One more scientist you have to remember. These are all questions that has been asked in your past. So one more scientist you can remember, that is going to be your August Bayer. August Bayer has given the Bayer's block. I am going to make you understand what is Bayer's block. So he is the scientist who has given Bayer's block, right? Wonderful, right? So these are the important things as far as history is concerned. History of anesthesia, these are the questions that has been asked in your previous year examinations, right? So you can remember who is the father of anesthesiology. That is going to be Morton, right? This is your John Snow, and he's your Edmund Gaskin Boyle. Anesthesia was celebrated on Anesthesia Day is going to be your 16th of October, right? And who has given the terms? That is going to be your Oliver Wendell Holmes. Right? Yes, he is the modern father of anesthesia, right? Now, what are the different types of anesthesias do we have? We are having general anesthesia. So what we are going to see in the general anesthesia, can you appreciate the whole body is going to get anesthetized? Right? In general anesthesia, the whole body is going to get anesthetized, right? That is going to be your general anesthesia. How many types of general anesthesias do we have? We can use two type of thing. One is your inhalational agents. We can use inhalational. That means हम किसी को कुछ ना कुछ inhale करवाएंगे. That is going to be inhalational. Second one is going to be IV agents. We can use intravenous agents. So we can give someone general anesthesia. If I want to anesthetize the complete body, I can use two things. One is inhalational. Second one is your IV agents, right? Second is going to be your regional anesthesia. In regional, we are going to anesthetize the complete region, right? So we are having central neuraxial blockade, we are having peripheral neuraxial blockade. Complete region will be anesthetized. Central neuraxial blockade, that means it will be present in your center. What are the things we are having in the center? We are having spinal block, so we can give spinal anesthesia. We are having epidural anesthesia, right? Classification is important. We are also having caudal anesthesia. We are also having what? Caudal anesthesia. So central neuraxial blockade is going to be spinal, epidural, and caudal anesthesia. What about this peripheral? We can give different blocks, like we are using sciatic block. We can do femoral block or brachial block. Femoral or brachial. So wherever there are going to be nerves are the thing that are going to take up the sensation, right? So we can block it, right? We can block brachial plexus. That is going to be your brachial peripheral neuraxial blockade. We can use sciatic block. We can use femoral block, right? These are going to be three types. One is going to be your spinal, this is going to be your epidural, and this is going to be your peripheral. Spinal is going to be below the waist, okay? Epidural is going to be just below the waist. Also it will be covering some part of the above the waist also, right? And peripheral is going to be to a particular peripheral part, right? That is going to be your regional anesthesia. Lastly, we can also use local anesthesia. Local anesthesia में क्या पढ़ोगे बच्चों? Look here. Lastly, we can use local anesthetic agents. Look here. So we are having two types. One is going to be your infiltration. This was the question they have asked you. One is going to be your infiltration. Second one is going to be topical anesthesia. So this is the short summary that we are having different types of anesthesia, right? So we are having inhalational, we are having IV, that is going to utilize for the general anesthesia purpose. Complete body will get anesthetized. Second, we are having regional will be spinal, that means below the waist.
Epidural will be there. It will be covering some part above the waist as well. And right, lastly, we are having peripheral, that is going to cover the peripheral part, right? And then we are having local anesthesia. Local में दो चीजें याद रखनी है. One is going to be infiltration. That means we are putting drugs all around the nerve fibers, right? For example, I want to do tooth extraction. So what we are doing, we are giving drugs all around the tooth, right? That would be doing for the RCT or tooth extraction, right? That was the question they have asked you, right? And one is going to be topical. I can use topical anesthesia as well, right? So these are the different types of anesthesias we are having, right? No issues with this. Now we are going to discuss about the pre-anesthetic evaluation. That means when a person, let's say the particular person is having cholelithiasis, that means person is having stone, and now this particular person is presenting to the surgery OPD में गया, उन्होंने चेक किया, and what they will do, they will directly proceed for the surgery? No, they are going to send this particular patient to the anesthetic department, and now this anesthesiologist will do what? They will be doing an evaluation on the particular person, and this is known as pre-anesthetic evaluation. That means before doing the surgery, we are going to take the clearance from the anesthesia team. That is going to be pre-anesthetic evaluation, right? So first thing, what are the components of PAC? We are going to have this type of form that we are going to do, right? This is going to be your pre-anesthetic examination form we are going to have, right? So what are the things we are going to ask? We are going to ask name, we are going to ask age, sex, same history that we are taking. Why history is important? Age is important because some diseases are more common in males, some diseases are more common in females, some diseases are most likely seen in the older age, right? And names are also important because they can tell you about the religion of the person, right? So that will be telling us about the eating habits of that particular person, right? So that is why it is also important. Then we are going to take the drug allergy history. We are going to take the allergy history. Patient is having some drug allergy history. We are going to take the medication history. What are the drugs that particular patient is taking? Medication history. We are going to take up the surgical history. That means this particular patient has previously, whether he is exposed to some kind of anesthesia or not, right? So we will be taking surgical history, right? Ultimately it is about the anesthesia exposure, right? So we are going to check up for the anesthesia exposure history, right? And we are going to understand that if this particular person is went through previous surgeries, so we can understand whether this person is having some allergy to certain kind of drugs or not, right? Then we are going to do for general systemic physical examination. In physical examination, we are going to check pulse, BP, cyanosis. Is there any signs of cyanosis? Is there any pallor? Pallor is indicative of what? Pallor and fatigue are the feature you will be finding in the anemia cases, right? Then we are going to see for the systemic examination, where we are going to check the particular system of the person, like cardiovascular system, respiratory system, CNS of that particular patient, GIT of that particular patient. So we are going to understand whether the kidneys are working fine or not. If kidneys are not working fine, creatine is elevated, we are not going to give a drug which is going to be nephrotoxic, right? So we are going to make this understand with the help of these things, right? Then we are going to do certain investigations like CBC, complete blood count, electrolytes of the patient, urea, creatinine, these LFT. These are the things we are going to do for this particular patient, right, before giving the clearance. And the most important question that can be asked here, that is going to be your airway evaluation. The anesthesiologist is going to do airway evaluation, and in that particular airway evaluation, what we are going to do, we are going to understand whether the mouth of the patient, whether the tongue of the patient is good enough, or size of the tongue is good enough to intubate that particular patient. So we are going to do airway evaluation and pre-anesthetic checkup. The most important thing is going to be your airway evaluation. Most important thing is going to be your airway evaluation, right? So you understand how we are going to proceed for the things, right? We are going to do pre-anesthetic checkup first. We are going to do pre-anesthetic checkup, right? Then these are the questions that has been asked. First question, try to answer. Big fan of you. Thank you Nasimha. Pleasure is all mine. Okay, try to answer this question. How is the preoperative evaluation of the oral cavity conducted in adults to facilitate endotracheal intubation? Are we going to do Mallampati score? Are we going to do Cormack-Lehan grading?
ASA grading or AHA grading? Which kind of grading system we are going to use for oral intubation? Yes, Rahul is saying A. So everyone is answering A. Yes. So what is this Cormack-Lehan grading? Remember, this is a laryngoscopic view of glottic opening. Laryngoscopic view of glottic opening. Malampati is going to be an important question. They have asked this particular question multiple times. Yes, Mehboob, we are going to do what? We are going to do Malampati score. Malampati score. I'm going to make you understand what is this Malampati score. अभी समझते हैं इसको. Then what is this ASA grading? ASA grading क्या होता है? American Society of Anesthesiologists. Yes, that is going to be your ASA grading. They are going to understand certain things. I am going to teach you about that. AHA grading you are going to study in medicine. That is going to be your, it is going to be your heart. It is going to be for your heart condition, right? So here we are going to do a score that is going to be your Malampati score. So now we are going to understand what is this ASA grading. ASA grading का मतलब क्या है और क्यों करते हैं? Let's try to understand this, right? This is going to be your American Society of Anesthesiologists. This grading system was given by American Society of Anesthesiologists. Note, yes, health status or comorbidity of the person is going to be understand with the help of this ASA grading. With the help of this ASA grading, right? So we are having ASA grade 1, we are having ASA grade 2, 3, 4, 5, 6. Right, we are having 6 ASA grading, and remember we are having two types of surgeries. One is your elective surgery, another one is your emergency surgery, right? If a patient is coming to you with the gallstones, right, you are not just going to treat him immediately, right? उसमें हम लोग टाइम लेते हैं, उसमें हम लोग असेस करते हैं. बट इफ समवन इज हैविंग सम इमरजेंसी सिचुएशन, देन वी आर गोइंग टू यूज this particular grading system, that is going to be ASA grading. But here we are going to write what? 1E, 2E, 3E, 4E, like that. Okay, so this is how we are going to do. What we are going to understand with this ASA grading, that is what is going to be your physical status of the person. We are going to understand what is the physical health status of the person, that is going to be understood with the help of this ASA grading, right? So what is this ASA grade 1 is going to tell you? They have asked questions in the past and they can ask you questions now also. So this is important topic, right? We are having ASA1, that means patient is going to be your healthy patient. ASA1 is going to be your healthy patient, right? ASA1 is going to be normal healthy patient without organic, biochemical or psychiatric disease. यानी कोई patient आ रहा है first time and he is completely fine, otherwise he is completely fine apart from the disease, that is going to be your ASA1. ASA2, this patient is going to have mild systemic disease, but these diseases are going to cause no significant impact on the activity of that particular person. Like patient is having mild diabetes, that means HbA1c can be 7, right? That can be mild diabetes, right? So this particular person can have mild diseases like mild diabetes. Examples are important. Nowadays they are not asking directly what is the ASA grade 2, they are giving examples. Patient is having obesity is also ASA grade 2. ASA grade 3, here you will be having severe systemic disease that limits the activity of the person. Like this person cannot run because he is having what? Angina. This patient is having what? COPD or prior myocardial infarction, that is going to be your ASA grade 3. ASA grade 4 is going to be this particular patient is having constant threat to life. That means he is a patient along with the disease, he is also having CHF, he is also having unstable angina, right? He is having renal failure, acute MI, respiratory failure. So they have given you the question in the history, they have given you the patient is having left-sided heart failure. What will happen if the left-sided heart failure is there? This is going to be right-sided, right atrium, left atrium. So if the patient is having left-sided heart failure, what will happen? Heart failure matlab heart is not able to pump blood effectively. So they have given you symptoms like patient is having symptoms of dyspnea. Patient is having symptoms of dyspnea, right? He is having accumulation of fluid in the lungs. What will happen in heart failure? This side of the heart is not able to pump correctly, right? So what will happen here? You will be having pooling of blood, and this blood is going to go to your lungs, and when this blood is going to go to your lungs,
what will happen? This person is going to present with the dyspnea. He will be having heart failure, right? So they have given you this particular situation, and they have asked you that what is happening to the patient, what is the grade of this particular patient. So if patient is having constant threat to life CHF, that is going to be your ASA grade 4. ASA grade 5 is going to be your moribund patient, which is not expected to survive more than 24 hours. That is going to be ASA 5, and the example you have to remember is ruptured aneurysm, right? And aneurysm is what? Dilatation, right? Coarctation is what? Contraction, right? We are having ASA grade 6, that is going to be a brain dead patient, and now we are doing what? Organ harvesting. Now we are doing organ harvesting. So just try to remember with me here itself. ASA 1 is going to be a healthy patient, ASA 2 mild systemic disease, 3 severe systemic disease, 4 constant threat to life, 5 is going to be moribund patient, and 6 is going to be organ harvesting. This is what you need to remember. ASA 1 is going to be healthy patient, 2 is going to be mild systemic disease, 3 is going to be severe systemic disease, here 4 is going to be constant threat to life, 5th is going to be moribund patient, and lastly we are having what? We are having organ harvesting. Organ harvesting. So this is what you need to remember about the ASA, American Society of Anesthesiologists grading system that we are having, right? So how this particular after, when the patient is coming for the ASA checkup, when the patient is going to come for PAC, pre-anesthetic checkup, then this anesthesiologist is going to write like ASA 1. Now ASA 1 मतलब patient क्या है अपना? Healthy patient है. This is what they are going to write anesthesia department, and surgery department will understand. अगर यहाँ पर लिखा है ASA 4, that means we have to take this patient seriously, because this patient has constant threat to life. We have to take care of other things as well, right? So this is what we need to understand with the help of this ASA grading. Apart from this ASA grading, we are going to see the most important thing. The question has been asked, that is going to be your airway evaluation. Airway evaluation के लिए हम लोग क्या करते हैं? The grading that we are going to use is known as, क्या बोलते हैं बच्चों इसको? मल्लम पट्टी grading. मल्लम पट्टी grading में question they have asked you what we are going to assess in the मल्लम पट्टी grading. So look here, in the मल्लम पट्टी grading there will be assessment of oral cavity. Assessment of oral cavity with respect to the size of tongue, with respect to the size of tongue. यहाँ पर ओरल कैविटी को हम लोग चेक करेंगे विद रेस्पेक्ट टू साइज ऑफ द टंग. कुछ लोगों में टंग छोटी होती है, कुछ लोगों में टंग इतनी बड़ी होती है कि नथिंग इज गोइंग टू बी विजिबल. सो व्हेन वी आर इंट्यूबेटिंग आवर पेशेंट, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? अगर यहाँ पर एयरवे में इशू है, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? इट इज गोइंग टू प्रेजेंट विद द डिफिकल्ट इंट्यूबेशन. तो ये भी हम लोग कभी चेक कर लेते हैं? व्हेन वी आर गोइंग टू डू PAC. व्हेन वी आर गोइंग टू डू PAC. तो यहाँ पर क्या याद रखना है? क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4. एक निमोनिक याद कर लो, दैट इज गोइंग टू बी पुश. फर्स्ट लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द पुश, राइट? सो क्लास 1 इज गोइंग टू बी, क्या क्या दिख रहा है यहाँ पर? आर यू एबल टू सी सॉफ्ट पैलेट? यस, सॉफ्ट पैलेट इज विजिबल, यूवुला इज विजिबल, फॉसेट इज विजिबल, and pillars are also visible. That is going to be grade 1 or class 1. That is going to be class 1. That means class 1 में क्या याद रखना है? Everything is visible sir, easy intubation, everything visible. अगर डॉक्टर ने लिख दिया मलम पट्टी ग्रेड 1, दैट मीन्स इजीली इंट्यूबेटेड, कोई भी इंट्यूबेट कर सकता है, कोई भी मतलब एज अ प्रोफेशनल, राइट? सो दैट इज गोइंग टू बी योर क्लास 1. क्लास 2 इज गोइंग टू बी व्हाट यू आर गोइंग टू सी? यू आर गोइंग टू सी सॉफ्ट पैलेट, uvula and fauces are visible, but what is not visible here? Pillars are not visible here. Pillars are absent. Pillars are going to be absent. So you can remember in class 2 P will be absent. Class 2 what is going to be missing? P will be missing. Class 1 everything visible. Class 2 pillars will be missing. Class 3 is going to be soft palate is visible and base of uvula are visible, right? Soft palate is visible and only the base of uvula is visible. So if soft palate and uvula, base of uvula is visible, that is going to be uvula and soft palate, that is going to be class number 3. Class number 3. And in class 4 what is going to happen? Only and only H4 hard palate is going to be visible. Only and only hard palate is going to be visible. Hard palate is visible, right? So this is how you can remember. I will be asking you certain questions so that I hope you can understand this.
right? So this is going to be class 1 सब कुछ दिख रहा है, that is going to be everything visible. Class 2 क्या नहीं दिख रहा, P is going to be absent, pillars are not visible. Class 3 U for base of uvula is visible, as for soft palate is going to be visible, that is going to be class 3. And class 4 is going to be only and only hard palate is going to be visible, that is going to be your hard palate, and this is going to be your class 4. So these are the grading system. This is your Mallampatti grading. So 2 grading we have understood till now, ASA grading, Mallampatti grading. Third grading we are having is Cormack-Lehane grading. Cormack-Lehane grading is the laryngoscopic view of glottic opening. It is the laryngoscopic view of glottic opening. Laryngoscopic view of glottic opening. So यहाँ पर भी चार क्लासेस है. वी आर हैविंग grade 1, grade 2, grade 3, grade 4. So what we are seeing under the laryngoscope is going to be understood with the help of Cormack-Lehane grading. Once they have asked this question, right? So grade 1 is going to be everything is visible. These are your epiglottis, everything is going to be visible, right? Arytenoids will be there, right? Then grade 2 will be this is going to be grade 2. It is also easy intubation, but grade 3, can you appreciate the glottis opening is not there, right? Grade 3 and grade 4 are going to be here also difficult intubation. In Mallampatti also grade 3 and grade 4 are going to be difficult intubation. This is how we are understanding this, right? Grade 3 and grade 4 are going to be difficult intubation. मतलब कोई experienced person चाहिए, right? Difficult intubation. If they have written this is a difficult intubation, at this particular point of time we need a experienced person. Now try to solve this question. We are having, when assessing a patient before anesthesia, the oral cavity should be examined. The image provided below displays the examined oral cavity. Now you try to answer what is this grade. This is your NEET PG previous year question. You have to answer this. So is there everything visible? Everything is not visible, sir. So it cannot be A. You can remember the mnemonic, that is your push. क्या pillars दिख रहे? Yes, multiple things are visible. Can you appreciate the base of uvula? Can you appreciate the soft palate? Yes, you can appreciate the base of uvula. You can appreciate the soft palate. That means it is going to be what? It is going to be grade number 3. It is going to be grade number 3. Is it going to be a soft, easy intubation or a hard intubation? Very good, Nitival, Manoj, very good, Ambuj. Right, it is going to be a easy intubation or a hard intubation. Yes, it is going to be grade 3, and grade 3 always remember is going to be difficult intubation. Intubation मतलब क्या है? We are putting endotracheal tube inside. We are taking the laryngoscope and we are opening the cavity. We are putting endotracheal tube inside, right? So this is going to be C. Answer is going to be C. Everyone is right. Wonderful, guys. Wonderful. Very good. Now try to solve this particular question. Identify the Mallampatti class of this particular patient. Right, earlier they were asking simple questions. Earlier they are asking which is the grading system we are using, but nowadays they are changing their pattern, and nowadays they are giving you the image and they are asking you which grade is this particular thing, right? So nowadays pattern has changed, तो ये ऐसे ही याद रखना है, ठीक है? कर लोगे ऐसे questions, right? The next question, try to solve this one. Is it going to be class 2, class 1, class 3, class 4? Excellent, guys. Excellent. It is going to be class 4. Why? You can remember the push. Only hard palate is visible. No base of uvula. Nothing is there. It is going to be definitely, sir. It is going to be class 4 intubation. That is also a difficult type of intubation. Right? Now try to solve this particular question. What is the appropriate preoperative fasting recommendation? That we are having? So this is the second question they are asking commonly. Try to solve this one. Yes. So what is the appropriate pre-fasting recommendation that we are having? So let me make you understand first. We are having these orders. These are known as NPO orders. NPO matlab nil per oral orders. NPO matlab nil per oral orders.
दैट मीन्स व्हेन यू आर गोइंग फॉर द पीएससी, पीएससी पे जब आप जाते हो प्री एनेस्थेटिक चेकअप के लिए, द डॉक्टर विल राइट यू, द एनेस्थीसियोलॉजिस्ट विल टेल यू that you have to come, like if you are going on Saturday, then the anesthesiologist will say, okay, you are, everything is fine, you will be coming on Monday morning, right, for your surgery, right? It is going to be a 1 day surgery, cholecystectomy, right? So that is going to be on Monday, the patient will be coming, तो anesthesiologist उसको पहले ही बता देगा what you need to eat, what you need not to eat. So this is going to be your nil per oral order. Here the doctor will tell the patient before surgery what you can eat, before surgery what patient can eat. That is going to be your NPO order. That is going to be your NPO order. मतलब सर्जरी के 8 घंटे पहले कुछ नहीं खाना है, 6 घंटे पहले नहीं खाना है. सो इट विल बी वेरिंग बिटवीन अडल्ट्स एंड चिल्ड्रंस. तो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं. अडल्ट्स में रिमेंबर 8 घंटे पहले, अडल्ट्स में रिमेंबर 8 घंटे पहले यू कैन हैव अ फुल फैटी मील्स, आप खाना खा सकते हो. दैट मीन्स इफ इट द सर्जरी इज इन द मॉर्निंग, यू कैन ईट द फूड इन द नाइट, रात को खाना खा सकते हो, राइट? 6 घंटे पहले यू कैन टेक सेमी सॉलिड फूड लाइक दलिया खिचड़ी, यू कैन हैव 6 hours बिफोर. और 2 घंटे पहले यू कैन टेक क्लियर फ्लूइड लाइक वाटर, राइट? सो वी आर हैविंग क्लियर फ्लूइड वाटर, यू कैन टेक 2 hours बिफोर द सर्जरी. 2 घंटे पहले तक यू कैन टेक इट, right? So 8 hours, 6 hours and 2 hours are the protocols for adults, but right, but second thing, for the pediatric age group patient, it is going to be same 8 hours, it is going to be 6 hours for the semi solid, or you can also remember formula milk के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, right? So that is going to be your, how much time? Formula milk is going to be your 6 hours. That is going to be your 6 hours. What about this breast milk? Breast milk का याद रखना है, that is going to be 4 hours. So 8, 6, 2 we have already remembered. 2 is going to be clear fluid, 8 is going to be your full fatty meals, right? And 6 hours for formula milk and 4 hours for breast milk. This is what the patient can eat before the surgery. These are your NPO orders. NPO matlab nil per oral orders. Nothing you have to eat before surgery apart from the doctor has guided you, right? Apart from this NPO orders, the anesthesiologist will also give a pre-anesthetic order. Pre-anesthetic order will be incorporating your drugs. That means patient must be taking multiple drugs. हो सकता है patient hypertensive हो, वो बहुत टाइम से एंटी हाइपरटेंसिव ले रहा हो. मे बी द पेशेंट इज हैविंग डायबिटीज, राइट? सो डायबिटिक पेशेंट क्या करेगा? पेशेंट इंसुलिन लेगा. मे बी ही इज ऑन इंसुलिन, मे बी ही इज ऑन मेटफॉर्मिन, राइट? सो दीज आर द क्वेश्चंस दे हैव आस्क्ड यू, राइट? तो अगर सर्जरी है तो डॉक्टर, व्हाट द डॉक्टर विल टेल, यू शुड स्टॉप स्मोकिंग 8 वीक्स बिफोर द सर्जरी. स्मोकिंग के इफेक्ट्स कितने टाइम में जाएंगे? दैट इज गोइंग टू बी 8 वीक्स, यानी 2 महीने पहले सिगरेट छोड़ना है, राइट? वी नीड टू स्टॉप herbal things or HRT. HRT is what? High dose of estrogen plus progesterone is the HRT. OCP मतलब क्या हो गया? Low dose of estrogen progesterone, that is going to be OCP. High dose of estrogen progesterone, that is going to be your hormone replacement therapy. अगर patient herbal medication ले रहा है और HRT पे है, तो also he needs to avoid these drugs 6 to 8 weeks before the surgery. Why? Because we don't know what is there in the herbal medication. We don't know the constituent. So that is why we need to stop it, right? If the patient is on TCA, 3 से याद रख लो, 3 से 3 हफ्ते पहले TCA 3, you can remember 3 letters are there, that is going to be stopped 3 weeks prior to surgery. All of them are has been asked in your examination, very very important, right? Yes, I will be sharing the PDF on my Telegram group, that is also in the list, right? You can you can join and you can get the PDFs, right? So we are having all the PDFs of all the classes. I have already taken 5 sessions, that is already there in the group itself, right? So TCA is going to be tricyclic antidepressant. Patient is on TCA, he needs to stop these drugs 3 weeks before the surgery. टिक्लोपिडीन, यू कैन रिमेंबर टिक्लोपिडीन 13-14 दिन पहले छोड़ना है. टिक्लोपिडीन 13 to 14 days before the surgery you need to stop. Clopidogrel 5 to 7 days before the surgery. This ticlopidine and clopidogrel, they are going to be your antiplatelet drugs. और किन patients में मिलेगी? Those patients who had previously had myocardial infarction or maybe stroke, right? Prophylaxis में हम लोग for the post MI, what we are giving clopidogrel, ticlopidine, atorvastatin, right? Aspirin to these patients, right? So these are the drugs you have to remember. What about this warfarin? Warfarin is an anticoagulant. These are your antiplatelets. Warfarin is an anticoagulant drug. We are going to stop the warfarin
4 days prior to surgery, 4 दिन पहले वारफेरिन बंद करना है. और लिथियम कब बंद करना है? 24 to 48 आवर्स. लिथियम हैज मल्टीपल साइड इफेक्ट, यू हैव टू रिमेंबर, राइट. लिथियम के साइड इफेक्ट लिथियम से ही याद कर सकते हैं, राइट. दैट इज द निमोनिक. वी आर हैविंग heparin. Heparin we need to stop 12 to 24 hours before the surgery. Heparin we can use subcutaneous or IV, right? We are also having unfractionated heparin that we need to stop 6 hours before the surgery. So these are the drugs you have to remember. Just revise with me. Smoking कितने टाइम पहले छोड़ना है? 2 महीने, right? That is going to be 8 weeks. HRT that is going to be again 6 to 8 weeks. TCA 3 से याद रख लो, 3 week. Ticlopidine 13-14. Clopidogrel 5 to 7. Warfarin is going to be 4 days. Lithium is going to be 24 to 48 hours before the surgery. 2 दिन पहले छोड़नी है, right? And heparin is going to be 12 to 24 hours. And low weight, or you can remember unfractionated heparin, you can stop 6 hours before the surgery, right? Apart from these drugs, we are also having patient on oral hypoglycemic agent. Oral hypoglycemic agent में अगर कोई patient है, हाइपोग्लाइसीमिया कॉज हो सकता है क्योंकि पेशेंट 8 घंटे से भूखा है, राइट. सो व्हाट वी नीड टू डू, वी जस्ट नीड टू ओमिट द लास्ट डोज. लास्ट डोज नहीं लेना, राइट. ओमिट द लास्ट डोज. मेटफॉर्मिन से हाइपोग्लाइसीमिया होता है क्या? एनीवन ट्राई टू आंसर. मेटफॉर्मिन इज इट अ ड्रग विच इज गोइंग टू कॉज हाइपोग्लाइसीमिया? सल्फोनिल यूरिया से होता है, राइट. नेक्स्ट वी आर हैविंग, इफ द सर्जरी इज गोइंग टू बी लॉन्ग, इफ द सर्जरी इज गोइंग टू बी long term surgery, then we need to shift the patient on insulin. We can shift the patient on insulin. तो ये कब बताना है? ये हम बता रहे हैं प्री एनेस्थेटिक चेकअप के टाइम पे. दैट मीन्स व्हेन यू आर गोइंग टू कम फॉर द सर्जरी, ओके, आई एम प्लानिंग योर सर्जरी आफ्टर 2 months बिकॉज यू आर स्मोकिंग, राइट. आफ्टर 2 months व्हेन यू कम, यू नीड नॉट टू ईट एनीथिंग एंड वी कैन स्केड्यूल लाइक दैट, ओके. सो दैट इज गोइंग टू बी OH. व्हाट अबाउट दिस एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स? Hypertensive drugs, remember you need to continue antihypertensive drugs. You can continue antihypertensive drugs, but 2 things you have to remember. What are the 2 drugs you need not to continue? That is going to be your angiotensin receptor blockers. These are your sartans groups of drugs, telmisartan, valsartan, right. And second is your ACE inhibitor group of drugs. ACE inhibitor are your captopril, lisinopril group of drugs, right. These 2 you need to stop. Apart from that you can continue. Apart from that you can continue. What about this aspirin? Yes, you can take the aspirin. Which is aspirin we are using? We are using baby aspirin, which is going to be a anti-aggregant. वो platelets को जुड़ने नहीं देगी, right? What about the thyroid medication? If someone is having hypothyroidism, or that is going to be, you need to continue. Thyroid is very necessary, you need to continue. So this is a slide, you can expect a question from here. This is a very very important slide, right. So these are the drugs you need to go before, just before your examination. Very very important. Mallam patti and these questions are very commonly asked, right. Next thing we are having the question. What is the question? Glycopyrrolate is used as a pre-anesthetic agent. Try to answer. What is the use of this glycopyrrolate? I have already taught you in the pharmacology, in the physiology section also. In pharmacology we have discussed this glycopyrrolate in the chapter of nervous system, that is parasympathetic nervous system, or we have discussed ANS. Glycopyrrolate is a pre-anesthetic medication that we are going to use for, yes, what I have taught you, parasympathetic nervous system. Cholinergic drugs are going to cause contraction of M1, M3, M5. So contraction of this salivary gland will produce saliva. So we are going to use what? We are going to use anticholinergic. We are going to use anticholinergic, and anticholinergic drug that we are having is going to be your glycopyrrolate. And what is the function of these anticholinergic drugs? The most common function that you can remember, cholinergics क्या करते हैं? सबको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होगा? सिक्रीशंस होगा, राइट. एंटीकोलिनर्जिक क्या करेगा? इसको रिलैक्स कर देगा. सो व्हाट विल हैपन? दैट विल बी रिड्यूसिंग द सिक्रीशंस, दैट विल बी रिड्यूसिंग द
secretion. If it is going to reduce the secretion, what is going to happen when you are intubating? This will decrease the chance of aspiration. So we are using glycopyrrolate. Previous year question exam ka, right? FMG examination previous year question. When we are using glycopyrrolate, we are giving glycopyrrolate to the patient then before intubation. So when you are intubating the person, what will happen? The secretions will be decreased. If the secretions will be decreased, this patient will not do aspiration. A patient aspiration nahi karega, right? That is going to be preventive aspiration, right? So this is why we are using this glycopyrrolate. Wonderful, guys. I can see you are answering, right? Very good. Right now we are having pre-operative medications. Till now what we have seen, एक बंदा है उसको सर्जरी करवानी है, वो पीएससी के पास में आ रहा है, पीएससी वाले उसको लिख के दे रहे हैं कौन से ऑर्डर्स देखे, दो तीन ग्रेडिंग सिस्टम देखे. वी हैव सीन द ग्रेडिंग सिस्टम. ओके, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्टोरी अगेन. व्हाट इज द स्टोरी? एक पेशेंट आ रहा है अपनी सर्जरी करवाने के लिए. बिफोर द सर्जरी वी आर गोइंग टू डू व्हाट? प्री एनेस्थेटिक चेकअप. इन दैट प्री एनेस्थेटिक चेकअप वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट. वी आर गोइंग टू डू एयरवे evaluation. In airway evaluation we are going to write the ASA grading of the patient. We are going to write the मल्लम पट्टी grading of the patient. These are the two important things you have to remember. ASA grading में क्या पता चलेगा? उसकी कंडीशन कैसी है, हेल्थ स्टेटस कैसा है. मल्लम पट्टी grading is going to tell us about the oral cavity size of the patient, right? कि हम उसको easily intubate कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं. Then this patient is going to come for the surgery. When this patient is going to come for the surgery, we are going to tell the patient NPO orders. क्या खा के आना है, क्या खा के नहीं आना है, right? Second thing we are going to understand pre anesthetic order. उसको बताना है what are the drugs you should be taking, what are the drugs you should not take. कितने दिन पहले कौन सी दवाई बंद करनी है. That is what we are going to give. This is known as pre anesthetic order. उसके बाद में the patient is coming to us for the surgery. अभी पेशेंट सर्जरी के लिए आया है. सो वी आर गोइंग टू गिव सर्टन मेडिकेशंस टू द पेशेंट. दीज आर नोन एज pre-operative medication. Before the surgery we are going to give this particular patient certain drugs. These are known as pre-operative medication. One thing, right? Apart from that we are going to have what are these pre-operative medication. One is going to be your anxiolytics. Why? Because he must be anxious. किसी की सर्जरी होगी, he will be anxious. So we are going to use benzodiazepines. These are going to be your GABA facilitatory drug. GABA is the inhibitory neurotransmitter. So what is going to happen when we are giving GABA facilitatory? GABA बढ़ जाएगा ब्रेन के अंदर. Patient will be having sedation. वो ब्रेन को inhibit कर देगा. Patient will be having what? Sedation, right? So we are using drugs like midazolam. These are all important things. We can use diazepam. These are going to be your benzodiazepines, right? Second thing, we want to decrease the emesis in this particular patient. So for decreasing in the emesis, we are going to use 5-HT3 blocker. Okay, 5-HT3 blocker. These are going to be your ondansetron. We can use ondansetron on the patient. That is going to decrease the sensation. Because हम ड्रग्स देंगे तो क्या होगा? ड्रग सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगी, जाके ब्लड ब्रेन बैरियर के पास में CTZ सेंटर होता है, उसको एक्टिवेट करेगी. CTZ सेंटर को इरिटेट करेगी. पेशेंट विल बी हैविंग वोमिटिंग. और हमने क्या डाल रखी है? इंट्यूबेशन कर रखा है पेशेंट का. वी हैव पुटेड द एंडोट्रेकियल ट्यूब. तो क्या हो सकता है? प्रॉब्लम हो सकती है. टू अवॉइड दैट व्हाट वी आर गिविंग प्रोफाइलेक्टिकली वी आर गिविंग 5-HT3 ब्लॉकर. अभी ये CTZ सेंटर एक्टिवेट नहीं होगा. जो भी ड्रग्स आपकी जाएगी वो उसको ज़्यादा इरिटेट नहीं करेगी. अपार्ट फ्रॉम दैट we can also use drugs like metoclopramide. These are going to be prokinetic drug. Metoclopramide क्या है? प्रोकाइनेटिक. क्या होती है प्रोकाइनेटिक ड्रग? दीज आर गोइंग टू इंक्रीज द मूवमेंट्स ऑफ जीआईटी. तो क्या हो जाएगा? एम्प्टिंग हो जाएगा, गैस्ट्रिक एम्प्टिंग हो जाएगा. दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर अस, क्योंकि कंटेंट ही नहीं है अगर गैस्ट्रिक में, तो वो बाहर कैसे आएगा? फर्स्ट थिंग, वी हैव स्टॉप द फूड ऑफ द पेशेंट. सेकेंड थिंग, वी आर डूइंग व्हाट? वी आर गिविंग metoclopramide. That is going to increase the prokinetic movement in the GIT. Next we are going to have is antacid. We are going to prevent the acid to prevent the acid. We can use PPI. PPI are going to decrease the secretion of acid, right? Pantoprazole, omeprazole, that is what you are going to use. Then we are also having anti-sialogogus drugs. That is going to be your anticholinergic. We are going to use. That is what we have seen in the question. That is your glycopyrrolate. Glycopyrrolate is going to decrease the secretion of the patient. It is going to decrease the secretions in the patient. And we are also giving antibiotic. What kind of antibiotic we are using? We are using broad spectrum cephalosporin. We are using broad spectrum antibiotic like
we are giving injection of ceftriaxone. We are giving injection of ceftriaxone to the patient. What this ceftriaxone is going to do, it is going to be a broad spectrum cephalosporin. It is a cell wall synthesis inhibitor. So what it is going to do, it is going to kill the bacterial infections that can happen, right? And remember the question they have asked you, PYQ, that is going to be, we need to give this injection 1 hour prior to incision. Surgical question also, when we are going to administer this antibiotic, that is going to be 1 hour prior to incision. Why? There are certain reasons. 1 घंटे पहले देंगे तो क्या होगा, इसका एक्शन इफेक्ट अच्छा आएगा. सेकेंड थिंग, इट इज़ नॉट गोइंग टू रिएक्ट विद द ड्रग्स दैट यू आर गोइंग यूजिंग ड्यूरिंग योर सर्जरी. तो जो भी दवाइयाँ आप यूज़ में ले रहे हो, इनहेलेशनल एनेस्थेटिक एजेंट्स, तो उनके साथ में ये रिएक्ट नहीं करेगा. सो वी आर गिविंग एंटीबायोटिक्स 1 hour prior to incision. You understand this? Right. So now try to solve this question. What is the preferred drug for preoperative antibiotic prophylaxis in a patient who is about to undergo cardiac surgery? This is your INISET exam question. Try to answer this one. Yes. Waiting for your response. Yes, what is the preferred drug? What is the preferred drug we are going to use for pre-operative antibiotic prophylaxis? कौन सा use में लोगे? Are you going to use penicillin G? It is a broad spectrum drug, but penicillin G has multiple problems, right? Penicillin G पढ़ा होगा, that is the first antibiotic, right? It has multiple problems, right? Second, we erythromycin or azithromycin, both of them are what? They are macrolides. They are macrolides, and this cefazolin is going to be your cephalosporin, and we are always preferring third generation or second generation cephalosporin for this particular purpose. So the drug of choice in this particular case is going to be your cefazolin, a broad spectrum antibiotic. Then very good, guys. Okay, now अपना पेशेंट कहाँ पर आ गया? अपना पेशेंट आ चुका है अपने पास में इन द OT रूम. नाउ वी आर गोइंग टू इंट्यूबेट आवर पेशेंट. वी आर गोइंग टू सी व्हाट आर द डिफरेंट डिवाइसेस वी आर हैविंग for the intubation. So let me make you understand how you are going to do intubation. So remember, we are going to have this trachea, we are going to have glottis, right? So there are going to be two types of devices. One is going to be above the glottis. These are known as supraglottic airway devices, and one devices, they are going to go below the glottic. They are known as infraglottic airway devices. जो ग्लोटिस के नीचे जाएंगे, these are going to be your infraglottic airway device. जो ग्लोटिक ओपनिंग के ऊपर रहेंगे, these are going to be your supraglottic airway devices. इंट्यूबेशन के लिए what is the instrument that we are going to use? That is going to be laryngoscope. I am going to make you understand how to differentiate between different types of laryngoscope. Image based question आता है, right? Airway devices, we are going to have certain airway devices. We are going to have supraglottic airway devices. First one, supraglottic airway devices. We are going to have infraglottic airway devices. Glottic opening के ऊपर वाला supra, नीचे वाला infra. Apart from that, we are also having certain adjuncts. These are the things you are going to see when you are going to enter your internship. These are going to be your daily routine, right? So we are going to have adjuncts. We are going to have oropharyngeal devices. Adjuncts में क्या क्या चीज़ें काम में आएंगी, क्या क्या चीज़ें हेल्प करती है? We are having nasopharyngeal devices. We are having oropharyngeal devices. We are having nasopharyngeal devices. Oropharyngeal में one thing you have to remember, that is going to be your Goodell's airway. In nasopharyngeal, you have to remember about the nasopharyngeal tubes. You have to remember, right? So this is going to be a short story that we are having. Now the patient is in the OT. Now we need to intubate the patient. For intubation, we are going to use laryngoscope. And what are the airway devices you are going to use? Airway devices मतलब क्या डालोगे मुंह के अंदर, क्या डालोगे, right? That is going to be your supraglottic airway device. Supraglottic अगर ऊपर तक डाल रहे हो, that is going to be supraglottic. अगर deep डाल रहे हो, that is going to be your infraglottic. और adjuncts डालने के लिए what are the things you are going to use? That is going to be oropharyngeal मतलब it is going to be going via mouth, right? और nasopharyngeal मतलब क्या हो गया, ये नाक से जाएगा, right? That is going to be NP tube, nasopharyngeal tubes. चले आके, so what are the laryngoscopes? That we are having? We are having this laryngoscopes. Can anyone tell me what is this particular laryngoscope? Yes, try to answer. What is this particular laryngoscope? Is it your McCoy? Is it your Miller's? What is it? Try to answer.
Try to answer this one. What kind of laryngoscope is this? I'm waiting for your response. कौन सा laryngoscope है? This is your straight blade. This is your straight blade. मैकोय है, मैकिनटॉश है या मिलर्स है? Which one is this one? Which one is this one? मर्कल, नॉट मर्कल, बट मर्कल सेल्स हमने डर्मा में पढ़े थे कल. इट्स नॉट मर्कल. मैकोय, मैकिनटॉश और इसमें से बताओ. मिलर्स. मैकोय, मैकिनटॉश और मिलर्स. राइट, दिस इज योर स्ट्रेट ब्लेड. देखो कैसे आइडेंटिफाई करना है. स्ट्रेट ब्लेड बच्चे सीधे होते हैं, दैट इज गोइंग टू बी यूज इन द children, and right, it will be having straight blade. ये straight blade वाले दिख रहे हैं, these are going to be your straight blade laryngoscope. These are going to be used in the children. They are known as Miller's laryngoscope. इनके नाम में दो डंडे आते हैं, इसे याद रख लो. ये straight double L is going to be there, so that is going to be your Miller's laryngoscope. Miller's laryngoscope, that is going to be your Miller's, right? This particular thing, can you appreciate? This is a curved blade. This is a curved blade laryngoscope. Here you will be having what? Here you will be having a source of light. इसमें क्या होता है? लाइट लगी होती है. Source of light which is going to help you to visualize everything, right? और क्या दिख रहा है यहाँ पर? What else you can see? Here you are having a handle. Right, but apart from these three things, one more thing is there, and that is going to be a extra lever. भी दिख रहा है, right? And this extra lever is responsible for the identification. Very good, guys. Very good, Kanika. Yes, if it is given with the handle, if it is given with the extra lever, that is going to be your McCoy laryngoscope. That is going to be your McCoy laryngoscope. अगर ये लीवर दिख रहा है, if you are finding this lever, that is going to be your McCoy laryngoscope. Confusion के लिए डाल देते हैं क्वेश्चन में, right? Curved blade है. Curved blade में you can remember C से दो चीज़ें याद रखो. Either it can be McCoy, either it can be Macintosh. This is your Macintosh. This is going to be your Macintosh. तो दोनों में याद रख लो. Curved blade will be there. Here also C, here also C. You can remember, right? But this is your Macintosh. This is your Macintosh. ये कैसा होगा? ये भी curved blade होगा. This is going to be curved blade and used in the adults. ये कहाँ पर use होंगे दोनों? They are going to be used in the adults. For the children, we are going to use Miller's. For the adults, we are going to use McCoy, and we are also going to use what? Macintosh, right? This Macintosh. What is this particular thing we are having? This is your video laryngoscopy. This is going to be your video laryngoscopy. We are having this, जिसमें स्क्रीन के ऊपर सब कुछ दिखेगा. अगर स्क्रीन दिख रही है और समथिंग लाइक दैट कर्व्ड प्लेट इज देयर, दैट इज गोइंग टू बी योर वीडियो laryngoscopy, राइट? अगर यहाँ पर nowadays we are also having this fiber optic. This is your fiber optic. ये पतला होता है, fiber optic laryngoscope. This is what? This is your fiber optic laryngoscope. तो समझ में आया? पांचों laryngoscope अगर इमेज आता है, you are not going to make it wrong. What you need to remember, straight अगर दे रखा है, that is going to be two double line straight line, that is going to be Miller's. Curved दे रखा है, तो that is going to be C for curved is going to be Macintosh. C for curved is going to be McCoy और Macintosh याद रखना है. अगर एक्स्ट्रा लीवर दे रखा है, if there is a extra lever, you will be going in the terms of McCoy. अगर एक्स्ट्रा लीवर नहीं है, that is going to be your Macintosh. This is going to be your video laryngoscope, जिसमें अगर स्क्रीन दे रखी है, वीडियो पे सब कुछ दिख रहा है, that is going to be video laryngoscope. And this is going to be your fiber optic. Here we are having the fibers, that is going to be your fiber optic laryngoscope. तो नाउ व्हाट वी हैव अंडरस्टूड, हमारा पेशेंट कहाँ लेटा हुआ है? हमारा पेशेंट ओटी के अंदर है. ओटी के अंदर फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू यूज इज व्हाट? मुंह के अंदर क्या डालोगे? लेरिंगोस्कोप डालोगे. लेरिंगोस्कोप कौन से हाथ में पकड़ना है? राइट, इट विल बी इन द लेफ्ट हैंड. ऑन द राइट हैंड व्हाट विल बी देयर? राइट हैंड में क्या पकड़ूंगा मैं? राइट हैंड में आई विल बी हैविंग इंट्यूबेशन, आई विल बी हैविंग एंडोट्रेकियल ट्यूब. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू इंसर्ट द लेरिंगोस्कोप, आई एम गोइंग टू पुट द ट्यूब फ्रॉम द
राइट हैंड, ठीक है। तो क्या देखूंगा, ग्लोटिक ओपनिंग देखूंगा। जैसे ही ग्लोटिक ओपनिंग दिख गई, अगर ग्रेड 1 है मलम पट्टी इजीली दिखेगा, ग्रेड 2 है तो भी इजीली दिखेगा, राइट। लेरिंग कॉर्मेक लेहान ग्रेडिंग में भी पता चलेगा, ग्रेड 1 ग्रेड 2 इजीली दिखेगा। आई कैन इजीली डायरेक्टली इंटूबेट द पेशेंट, राइट। दैट इज गोइंग टू बी 1 and 2, right? That is going to be the thing, right? Identify the given instrument now. What is this given instrument that we are having? What is this instrument that we are having in the list? Is it a Goodell's airway? Is it a laryngeal mask airway, endotracheal tube, or nasogastric tube? This is your, yes, we are going to hold the laryngoscope on the non-dominant hand. Dominant hand में क्या होना चाहिए? Dominant hand you will be having what? Endotracheal tube. This is your eye gel. Let me make you understand, then you will be answering. This is your eye gel. It is going to be your laryngeal mask airway. It is going to be laryngeal mask airway. So now let's try to understand what are the supraglottic airway devices that we are having. Supraglottic मतलब बताया, ग्लोटिक के ऊपर जो डिवाइसेस विल बी वर्किंग दे आर नोन एज सुप्राग्लोटिक एयरवे डिवाइसेस। ग्लोटिक के नीचे जो जाएंगी दैट इज गोइंग टू बी योर इंफ्राग्लोटिक एयरवे डिवाइसेस। नाउ व्हाट वी आर स्टडिंग सर, हमने इंट्यूबेशन के लिए लेरिंगोस्कोप्स के टाइप्स देख लिए। नाउ वी आर गोइंग टू सी अबाउट द एयरवे। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सुप्राग्लोटिक एयरवे डिवाइसेस, देन इंफ्राग्लोटिक एंड देन एयरवे adjuncts, right? So first one we are having is supraglottic airway device. This is going to be inserted in your mouth. That is going to be LMA, laryngeal mask airways. They are also known as what? LMAs. इनको क्या भी बोलेंगे? LMA भी बोलेंगे, right? First one we are going to have is your classical. Classical में always remember there will be a single opening will be there. यहाँ पर कितनी ओपनिंग दिख रही है? अगर सिंगल ओपनिंग दिख रही है क्वेश्चन के अंदर, इफ इट इज अ सिंगल ओपनिंग विद अ पायलट बलून, दिस इज नोन एज पायलट बलून. सिंगल ओपनिंग विद अ पायलट बलून, दैट इज गोइंग टू बी योर क्लासिकल एयरवे. दैट इज गोइंग टू बी योर क्लासिकल लेरेंजियल मास्क एयरवे. दैट इज गोइंग टू बी योर क्लासिकल लेरेंजियल मास्क एयरवे. इसमें पूरा इंट्यूबेट करने की जरूरत नहीं है, वी कैन डायरेक्टली इंसर्ट इट, राइट. दैट इज गोइंग टू बी सुप्राग्लोटिक. ये ग्लोटिक के ऊपर रहेगा, दैट इज गोइंग टू बी योर सुप्राग्लोटिक airway device, right? What is the second one that we are having? This is your fast track. Remember here we will be having double opening. Here we will be having double opening. यहाँ कितनी opening होगी? You will be having double openings over here. This is going to be your fast track. What else we are going to have? We are going to have a handle here, and this is going to be curved. Fast track में three things you have to remember. First one, it is going to have a handle, it is going to be curved, it is going to have double opening. It is going to have double opening. That is going to be your fast track. That is going to be your fast track, right? That is going to be your fast track supraglottic airway device, right? What about this particular thing? अगर straight दिख रहा है, look here, double openings तो है, double opening second generation में मिलेगी, but if it is straight, अगर ये straight दिख रहा है, straight है, along with the pilot balloon, that is going to be your proceal. इसका नाम क्या हो जाएगा? proceal. Proceal is going to have double opening. It is going to be straight. अगर curved है तो fast track. अगर straight है, double opening, curved is going to be fast track. Double opening, straight is going to be your this one proceal. This one is going to be your proceal. ठीक है, तीनों में कोई दिक्कत नहीं है. फर्स्ट वन इज गोइंग टू बी क्लासिकल, सिंगल ओपनिंग क्लासिकल, डबल ओपनिंग कर्व्ड ब्लेड अलोंग विद द हैंडल इज गोइंग टू बी फास्ट ट्रैक. डबल ओपनिंग है लेकिन स्ट्रेट है, दैट इज गोइंग टू बी प्रोसेल. व्हाट अबाउट दिस वन? ट्राई टू आंसर. व्हाट इज दिस पर्टिकुलर वन? कैन यू अप्रिशिएट व्हाट इज दिस पर्टिकुलर वन? यस, कनिका, मोहम्मद, राहुल. Yes. So what is this particular one? This is going to be your LMA Supreme. This is going to be your LMA Supreme. Supreme में क्या याद रखना है? It is going to be curved. LMA Supreme is going to be curved. And here, can you appreciate something is there? Right, this particular plastic like thing, can you appreciate this? This is known as fixation tab. अगर fixation tab दिख रहा है, if fixation tab double opening is there, this is going to be LMA Supreme. Here also you are going to find
pilot balloon. Here also you are going to find pilot balloon. So LMA Supreme में क्या होगा, double opening fixation tab. Fixation tab is a feature you will be finding with the Supreme. अगर straight blade की बात करूँ, that is going to be Proseal. That is going to be Proseal. Apart from this, we are having this one. This is going to be your iGel. This is going to be your iGel. Can you appreciate any pilot balloon over here? यहाँ पर क्या पायलट बलून है सर? देयर विल बी एब्सेंस ऑफ पायलट बलून. देयर विल बी एब्सेंस ऑफ पायलट बलून. हियर यू आर नॉट गोइंग टू फाइंड एनी पायलट बलून. दैट इज गोइंग टू बी iGel. एंड लास्टली, अगर पायलट बलून दिख रहा है, इफ पायलट बलून इज प्रेजेंट एंड कलरफुल दिख रहे हैं, दैट इज गोइंग टू बी LMA अम्बू. दैट इज गोइंग टू बी LMA अम्बू. बस इतना याद रख लो, यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन. कैन यू अप्रिशिएट दिस? राइट. तो यहाँ पर क्या है, पायलट बलून एब्सेंट है, कलरफुल दिख रहा है, दैट इज गोइंग टू बी iGel. पायलट बलून प्रेजेंट है फिर भी कलरफुल है, दैट इज गोइंग टू बी योर LMA अम्बू. दैट इज गोइंग टू बी योर LMA अम्बू. अगर फिक्सेशन टैब दिख रहा है, दैट इज गोइंग टू बी LMA सुप्रीम. अगर फिक्सेशन टैब नहीं है और स्ट्रेट ब्लेड है, प्रोसील है, दैट इज गोइंग टू बी योर प्रोसील. राइट. अगर कर्व्ड ब्लेड है और हैंडल दिख रहा है, दैट इज गोइंग टू बी योर फास्टैग. दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन. राइट. नाउ ट्राई टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. आइडेंटिफाई द गिवन इंस्ट्रूमेंट. कौन सा इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है? ट्राई टू आंसर. लेट मी टेस्ट यू. yes, is it a straight blade? Is it a Proseal? Is it a okay? आंसर में ही नहीं है. But if I have given you options like Proseal, iGel, Ambu, okay, and Supreme, what you will be answering? This is going to be what? Is it going to be iGel, Ambu, or Proseal, or Supreme? Very good. Excellent, guys. Excellent, Mohit. That is going to be, it is definitely is going to be a laryngeal mask airway, but in the laryngeal mask airway, it is going to be what? It is going to be here. Can you appreciate the fixation tab? Yes, double opening fixation tab is there. Fixation tab is there, double opening is there, so it is going to be LMA Supreme. It is going to be LMA Supreme. So now I hope you can understand this, right? This is going to be LMA Supreme. This is going to be LMA Supreme. Wonderful, guys. Right? Try to solve this one. Which devices will be having the Murphy's eye? Murphy's eye कहाँ देखा है? Have you seen about the Murphy's eye? Murphy's eye will be seen in which device? Where do you find Murphy's eye? Is it going to be seen in the nasopharyngeal airway, laryngoscope, bronchoscope, or ET tubes, endotracheal tubes? Right? So let me make you understand first about the endotracheal tubes. Now we are going to discuss about the endotracheal tubes, right? What are these endotracheal tubes? These are going to be infraglottic devices. That means they will be going below the glottis. Supraglottic में हम लोगों ने देखे different types of LMAs we are having, laryngeal mask airways, right? We have seen Supreme, iGel, Ambu. Now we are going to discuss about the endotracheal tubes. We are having certain endotracheal tubes, right? This one is going to have, this is your B-whale end. This is going to be B-whale end. That means ये थोड़ा सा कटा हुआ end होता है, right? Apart from that, we are having another opening. This is known as Murphy's eye. This is known as Murphy's eye. अगर गलती से B-whale end बंद हो गया, so for giving oxygenation, right? यहाँ पर क्या होता है कि एक्स्ट्रा कट होता है एंडोट्रेकियल ट्यूब में. वी आर ऑल्सो हैविंग वन मोर कट, दैट इज नोन एज मर्फीज आई. क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड ऑन दिस, राइट? दिस आर गोइंग टू बी योर वोकल कोड गाइड, और यहाँ पर नंबर लिखा होता है. दिस इज गोइंग टू बी द नंबर, दिस इज गोइंग टू बी द डायमीटर, दिस इज गोइंग टू बी द नंबर. यहाँ पर डायमीटर लिखा होता है. This is going to be the number that we are having. Here we are having pilot balloon, and this is the connector. Remember, all the connector are going to be same. जैसे सारे आजकल C type चार्जर आ रहे हैं, like that all the connectors will be same. मतलब सारे connector direct anesthesia machine से connect हो जाएंगे, right? So this is going to be a universal connector. साइज कुछ भी हो ET ट्यूब का, it will be having a 14 to 15 mm adapter will be there, right? Right? So these are going to be the things that you have to remember. So question here we are having, where do you see Murphy's eye? So Murphy's eye will be seen in the endotracheal tubes. Endotracheal tubes can be cuffed हो सकती है, it can be non-cuffed. It can be cuffed, it can be non-cuffed. Cuff मतलब this is the cuff. इसमें क्या करना है, इसको हम लोग फुला देंगे, इसको फुला देंगे तो अच्छे से फिक्स हो जाएगा. That is going to be the thing. Now try to solve this question. Resistance of the tube shown below
is primarily because of resistance of the tube. Endotracheal tube is because of what? Try to answer. Is it the curvature? Is it the circumference? Is it the length or diameter? This is your FMGE PYQ. This is your FMGE PYQ. Right? So this is going to be what? This is going to be what is the most important thing that is going to change here, right? Resistance of the tube shown below is primarily because of what? What is the thing that is going to alter this? This is going to be the diameter of the tube. The diameter is going to be the most important thing. You have to remember this, right? Diameter is going to be the most important thing. Try to solve this one. What is this device is known as? Is it a armored endotracheal tube? Is it a double lumen tube? Is it a RAE tube? Is it an endotracheal tube with bronchial blockers? Right? What is it? What is this particular thing? Can you appreciate the two openings here? Here we are having two openings, right? Here we are having two openings. Here we are having two openings. So let me make you understand first how many types of tubes do we have, then you will be answering this particular question, right? So we are having 80 tubes. We are discussing about the endotracheal tubes. We are having different types of endotracheal tubes. The first one that we are having here, can you appreciate? This is your RAE tubes. This is your RAE tubes. RAE matlab that is going to be the names. The names are ring, Adai, and Alvin tube. These are going to be RAE tubes. इसमें क्या याद रखना है? Two things you have to remember. Map के अंदर, in the map, always remember the north is going to be on the top, right? In the map, north is going to be on the top. So here you can remember this is facing the top. The tube which is going to face the top, that is going to be a north facing top tube. This is going to be a north facing tube. अगर same sides आ रहा है, if both the ends are going on the same direction, that is going to be a south facing tube. That is going to be a south facing tube. दो चीजें याद रखनी है. One is going to be south facing, another one is going to be north facing. तो अगर ट्यूब निकल के ऊपर जा रहा है, this is going inside, और ये जो वाला पार्ट है, this particular part is going to come up. This is known as north facing tube. If it is going inside, and on the same direction it is coming, नीचे आ रहा है, that is going to be your south facing tubes, right? So these are the two tubes you have to remember, right? RAE tubes, right? Apart from that, we are having, this is your red rubber tube. This is your red rubber tube. ये कहाँ पर यूज में लेंगे? रेड रबर ट्यूब वी आर गोइंग टू यूज इन द CO2 laser surgeries. Question has been asked where we are going to use red rubber tube in the CO2 laser surgeries. CO2 laser पढ़ा होगा ENT में. CO2 laser surgeries, if we need to do, we need to intubate the patient, we need to give general anesthesia to the patient, तो क्या करेंगे हम लोग? red rubber tube यूज में लेंगे. These are your flexo-metallic tube. These are your flexo-metallic tube. These are going to be your flexo-metallic tube. These are your kink resistant tubes. इनमें kink resistant होता है, ये मुड़ेंगी नहीं. These are going to be kink resistant tubes. These are going to be what? Kink resistant, है ना? तो अगर किसी की सर्जरी करनी है, सुपाइन उल्टा लेटा के करनी है, right? So what we need to do, we can use these type of flexo-metallic tubes. These type of flexo-metallic tubes we can use, right? These are going to be your double lumen tubes. These are your double lumen tubes. Double lumen tubes. Double lumen tubes हम लोग कब यूज में लेंगे? These are your double lumen tubes. These are the tubes we are going to use if I want to ventilate a single lung. If I want to ventilate a single lung during the lung surgeries, अगर किसी की lung surgery कर रहा हूँ and I want to ventilate a single lung, ventilate a single lung, that is how we are going to use double lumen tube. That is how we are going to use what? Double lumen tube. So these are the important things, right? This is your north facing. North facing is going to go up. अगर same side में जा रहा है, you can remember this is going to be your south facing tube. South is going to be below, that is going to be south facing tube. These are your boogie and stylet. This is your stylet. This is your
बुगी, ये क्या काम में आते हैं? वी आर गोइंग टू यूज इट, इसको हम ट्यूब के अंदर डाल देंगे तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ट्यूब है सपोज, ट्यूब के अंदर आई एम गोइंग टू पुट दिस बुगी और स्टाइल इट, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, इट इज गोइंग टू प्रिवेंट द किंकिंग, मुड़ने से बचाएगा उसको, सीधा अंदर तक लेके जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी फैसिलिटेटिंग द ईटी ट्यूब इंसर्शन टू द ट्रेकिया, तो ये हेल्प करेगी। दीज आर योर बुगी एंड स्टाइलेट, दिस इज व्हाट यू नीड टू remember, right? So this is what about the tubes. Now try to solve. Now it is simple, it is your double lumen endotracheal tube, this is going to be your double lumen endotracheal tube right? Now we are having certain adjuncts. What are these adjuncts we are having? These are going to be your, these are going to be your help, these are going to help you, right? So we are having nasopharyngeal adjuncts, we are having oropharyngeal adjuncts, ठीक है, मुंह में यूज में ले सकते हो और नाक से यूज में ले सकते हो। ओरोफरेंजियल वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द इंपॉर्टेंट वंस, दैट इज गोइंग टू बी योर गुडल्स एयरवे, दिस इज योर गुडल्स एयरवे, ये क्या है तुम्हारा? गुडल्स एयरवे। Remember here the tip should be facing where? Tip should be facing the roof of mouth, should be facing the roof of mouth। दो क्वेश्चन पूछते हैं, टिप कैसे डालनी है, राइट? सो ऑलवेज रिमेंबर दिस इज द टिप दैट वी आर हैविंग, दिस इज द टिप दैट वी आर हैविंग, तो ये जो टिप है ये हमेशा कहाँ जानी चाहिए? इट शुड बी फेसिंग द रूफ ऑफ माउथ, इट शुड बी फेसिंग द रूफ ऑफ माउथ, ऐसे करके एंट्री करना है एंड देन वी आर गोइंग टू स्विफ्ट इट, देन वी आर गोइंग टू टर्न इट टू द 180 डिग्री, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू पुट इट राइट? ऐसे करके इसको डालना है। साइज कैसे लेंगे? Remember how we are going to assess the size, that is going to be from the angle of mouth, so you can remember size we will be taking from the angle of mouth to the angle of mandible, to the angle of mandible। size कैसे assess करोगे? from the angle of mouth, you can appreciate from the angle of mouth to the angle of mandible, to the angle of mandible we are going to assess the size। कैसे डालना है? we are going to put the tip फेसिंग टू द रूफ और उसके बाद में क्या करना है? घुमा देना है, रोटेट 180 डिग्री, दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू गिव द ओरोफेरेंजियल एडजंक्ट्स। सेकंड वी आर हैविंग इज नेजोफेरेंजियल एडजंक्ट्स, नेजोफेरेंजियल एडजंक्ट्स, ये कैसे डालने हैं? ये भी सेम, इसकी साइज कैसे लोगे? फ्रॉम द टिप ऑफ द नोज, टिप ऑफ द नोज टू द tip of ear lobule, to the tip of ear lobule, tip of the nose to the tip of ear lobule we are going to use, right? तो अगर ऐसा कोई ट्यूब दिख रहा है जो नाक से जा रहा है, that is going to be from the tip of the nose to the tip of ear lobule, that is going to be a nasopharyngeal device, that is going to be a nasopharyngeal tube that we are going to use। Goodell's airway question already has been asked, this is also important, right? So till now what we have seen the different devices that we are having, राइट? अपना पेशेंट कहाँ आ गया? अपना पेशेंट ओटी में आ गया, ओटी में आने के बाद में फर्स्ट थिंग वी हैव सीन, उसको लेरिंगोस्कोपी से इंट्यूबेट करना है, लेरिंगोस्कोपिक से वी आर गोइंग टू सी द ओपनिंग, ओपनिंग देखने के बाद में वी आर गोइंग टू पुट द सुप्राग्लोटिक एयरवे डिवाइसेस, एलएमए वगैरह डाल सकते हैं, या फिर इंफ्राग्लोटिक एयरवे डिवाइसेस विच विल बी इनकॉर्पोरेटिंग ईटी ट्यूब्स, ईटी ट्यूब्स विल बी देयर। Okay, then we can use adjuncts, we are having oropharyngeal adjuncts, we are having nasopharyngeal adjuncts, oropharyngeal में Goodell's हो गया, nasopharyngeal में nasopharyngeal tubes will be there, right? So with this we are done, right? Now we are going to do what? अभी क्या करना है? First solve this question, then we are going to see the other things, right? Try to answer this one. Try to answer this one. Which of the following statement is false regarding the intubation? कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है रिगार्डिंग द इंट्यूबेशन? इंट्यूबेशन के लिए कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? व्हाट इज द पोजीशन दैट वी आर गोइंग टू यूज? द पोजीशन इज गोइंग टू बी मॉर्निंग स्निपिंग पोजीशन, मॉर्निंग स्निपिंग पोजीशन, और फ्लेक्शन ऑफ नेक शुड बी देयर, राइट? तो मॉर्निंग स्निपिंग पोजीशन, यू कैन ऑल्सो कॉल इट बार्किंग डॉग पोजीशन। तो इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट और अ फॉल्स स्टेटमेंट? Yes, it is a true statement, it is a true statement। Introduce the laryngoscope from the right hand, so if it is non-dominant, for example I am writing from the right hand, it should be in the non-dominant hand, so it can be a false statement, right? Apart from that, we need to push the tongue away, and what we need to do, we need to see the epiglottis। patient कैसा है? patient लेटा हुआ है, patient का सिर ऊपर करना है, we need to
put do the flexion करने के बाद में we are going to put the laryngoscope from the right from the left hand and we are going to push the tongue away. We need to push the tongue away और tongue away करने के बाद में we need to see the epiglottis. We need to see the epiglottis जब दिख जाए we need epiglottis ऊपर उठ जाएगा, then epiglottis is above the glottis के ऊपर के ढक्कन को epiglottis बोलते हैं, right? So what we are able to see, we are able to see the glottic opening. Yes, it is a true statement. We are able to see the glottic opening, and once we see the glottic opening, then you need to introduce the ET tube. We need to introduce the ET tube, inflate the cuff, and we are going to check for the bilateral breath sounds, right? It is also a tube thing, true thing, right? And lastly, we can do fixation of the ET tubes, and then we can connect the tube to the machine, right? हम oxygen machine जो भी कुछ लगाना है, we can connect the tube, right? So answer in this particular case is going to be B. This is going to be a wrong statement. If it is a right-handed person, it is a controversial thing, but if they have mentioned, then this is going to be the answer, right? Okay, what is the specific action being demonstrated in the provided image below? What is this? What is this action? Is it a jaw thrust or head extension, inline manual stabilization, or head tilt or chin lift? Yes, it is clearly visible. This person is touching the head of this particular patient. This is going to be head and chin involvement. So this is going to be your head tilt and chin lift. Head tilt and chin lift. Head tilt and chin lift, right? What is this particular thing? Here the hands are present on the jaw. दो maneuver याद रखने, ये दो तो याद ही रखने. This is going to be a jaw thrust. This is going to be what? A jaw thrust. Jaw thrust, right? So these are the two maneuvers that you have to remember. One is your head tilt and chin lift. ये कब करते हैं head tilt और chin lift? This is for the increasing the visuality to glottic opening. जब glottic opening नहीं दिख रहा है, then we do what? This particular maneuver. This is known as head tilt. Head को tilt करना है and chin को lift करना है, right? Second maneuver that we are having this for the trauma patient. Very, very important. For trauma patient, what is the maneuver we are going to do? We are going to do the jaw thrust. We are going to do the jaw thrust, right? And what is this maneuver? You are also studying this in ENT. This is known as Selix maneuver. Selix maneuver we are going to use for prevention of what? Prevention of aspiration. Prevention of aspiration, right? We are going to push the cricoid cartilage back. That is going to collapse your esophagus. That is going to prevent the aspiration. ठीक है, तो ये तीन मैनवर याद रखने. इमेज बेस्ड क्वेश्चन आता है. अगर यहाँ पर हाथ रखा हुआ है, दैट इज गोइंग टू बी योर सेलिक्स मैनवर. अगर हेड और चिन दोनों के ऊपर हाथ है, दैट इज गोइंग टू बी योर हेड टिल्ट चिन लिफ्ट. अगर जॉ थ्रस्ट कर रहा है, दैट इज गोइंग टू बी योर, अगर जॉस इन्वॉल्वमेंट है, दैट इज गोइंग टू बी योर जॉ थ्रस्ट फॉर ट्रॉमा पेशेंट्स, राइट? देन नाउ द पेशेंट इज इन द ओटी. पेशेंट को क्या करा हमने? पेशेंट लेके आए थे, पेशेंट को ओटी में लेटा दिए, इंट्यूबेट हम लोगों ने कर दिए. नाउ पेशेंट क्या देख रहा है? पेशेंट देख रहा है देयर आर सर्टेन मॉनिटर्स, और यू माइट हैव सीन दीज मॉनिटर्स, राइट? जिनके अंदर ये वेव्स चलती रहती है. दीज आर द मॉनिटर्स. सो व्हाट आर द मॉनिटर्स दैट वी शुड बी रिमेंबरिंग? तो what are the 5 mandatory monitors that should be present in an anesthesia department or in a OT room, right? So what are these 5 monitors? First is going to be ECG, second is going to be SpO2. क्या क्या होता है तुम खुद सोचो, right? ECG लगाते हैं, ECG में here we are going to see the waves, right? Second is going to be your SpO2, that is going to be your pulse oximetry, oxygen saturation के लिए. Then we are having NIBP, non-invasive BP monitoring we are going to put here, right? We are going to check for the temperature of the patient, and we are going to do an important thing that is going to be capnography. यानी जो patient तुमने intubate किया है, whether this particular patient is correctly intubated or not, right? वो patient का intubation esophagus में तो नहीं कर दिया. That is how we are going to understand with the help of capnography, right? So what are the 5 mandatory monitors? We are going to have ECG, SpO2, NIBP, temperature और capnography, all except question आता है, right? So what are the leads that we are going to see in the ECG? We are going to see lead number 2 for the arrhythmias. Lead number 2 is going to tell us about the arrhythmias. Lead number 5 is responsible for the myocardial infarction, right? 5 क्या दिखाएगा? myocardial infarction तो नहीं हुआ, right? So 2 और 5 हम लोग ऐड करते हैं, right? Apart from that we are having SpO2. We can use SpO2 के लिए pulse oximetry यूज में लेते हैं. And remember this pulse oximetry is based on a law that is going to be Beer-Lambert's law, or also known as law of plethysmography,
law of plethysmography or Beer-Lambert's law. These are the law we have to remember, right? Apart from that, we are having NIBP, non-invasive BP monitoring. That is going to be, we are going to add a BP cuff over here. That is going to measure the blood pressure of the patient, right? Uske baad mein what we need to understand, we are having what? Temperature. We are having temperature. We are having pulmonary artery catheter. टेम्परेचर के लिए क्या करोगे? वी आर नॉट गोइंग टू यूज़ अ नॉर्मल थर्मोमीटर. आई एम टॉकिंग अबाउट द कोर टेम्परेचर. कोर टेम्परेचर के लिए यू कैन यूज़ पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर. वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट. ठीक है. और सेकेंड थिंग यू कैन डू इज गोइंग टू बी लोअर 1/3 इसोफेगस में से मॉनिटर कर सकते हो. दैट इज द मोस्ट कॉमन साइट वेयर वी आर डूइंग द मॉनिटरिंग ड्यूरिंग द सर्जरी, राइट? सो लोअर 1/3 of esophagus is going to tell you about the core temperature, right? And this capnography, we are going to discuss about that in detail, right? So you are going to have these 5 mandatory monitors in the OT room. ये 5 mandatory monitors है. इसके अलावा एक anesthesiologist वहाँ पर present होना चाहिए. That is what is the required, right? Now, what is the most frequently employed method of monitoring the level of anesthesia? This is your previous year question. Try to answer. Previous year question. Try to answer this one. Good evening, Kajal. This is your PYQ. What is the most frequently employed method for monitoring of levels of anesthesia? How do we measure the level of anesthesia or the depth of anesthesia? Apart from those 5 mandatory monitors, we are also having some desired monitors, right? उनके अलावा भी कुछ monitors होते हैं. So remember, अगर ऐसा कोई image आता है, here if you find something like that, you should be answering what? You should be answering, this is your bispectral index. This is going to be your bispectral index. So what are the different monitors we are going to have? Look here. This is your first one. This is your BIS. This is also known as BIS, bispectral index. Bispectral index. इससे क्या पता चलेगा? इससे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया. डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया मतलब कितना एनेस्थीसिया गया है, राइट? कितना बंदा बेहोश है. अगर वैल्यू इज कमिंग अराउंड 0, दैट मीन्स पेशेंट इज इन द कोमा. अगर वैल्यू इज कमिंग अराउंड 100, इसमें वैल्यूज होती है, दैट मीन्स पेशेंट इज fully awake. Patient is fully awake. Even the patient will be awake around 40 to 60, right? What is the value that you have to maintain? That is going to be your around 40 to 60. अगर 40 से कम जा रहा है मतलब पेशेंट कहाँ जा रहा है? कोमा में जा रहा है. पेशेंट कोमा में जा रहा है तो क्या करोगे? एनेस्थीसिया कम कर दोगे. अगर 60 अबाव जा रहा है मतलब पेशेंट उठने वाला है, क्या करोगे? एनेस्थीसिया का डोज बढ़ा दोगे. सो दिस इज योर BIS, bispectral index, which is going to measure the depth of anesthesia, right? Second one we are having, this is your neuromuscular monitoring. न्यूरोमस्कुलर मॉनिटरिंग, उसके हाथ पे लगा के वी कैन चेक द मसल्स आर वर्किंग और नॉट. दिस इज द थिंग. एंड द मोस्ट कॉमन नर्व दैट वी आर गोइंग टू चेक इज गोइंग टू बी योर अल्नार नर्व. दैट इज गोइंग टू बी योर अल्नार नर्व. मोस्ट कॉमन नर्व दैट वी आर गोइंग टू चेक इज योर अल्नार नर्व. तो क्या करेंगे? न्यूरोमस्कुलर मॉनिटरिंग. देखो, एनेस्थीसिया इज अ डिफरेंट थिंग, muscle relaxant is a different thing. All anesthetic agent are not going to produce the muscle relaxation, right? So we are using neuromuscular blockers. तो वो ढंग से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं. Sometimes what happens कि muscles की activity is there, nerve की activity is there, right? We are not giving adequate neuromuscular blockade, right? तो उस केस में what you need to do, you need to remember how we can check the neuromuscular monitoring. Neuromuscular monitoring, that is going to be your, with the help of this particular thing, this device. And most common nerve that we are going to assess is going to be ulnar nerve. And the most common response that we are going to give, stimulus that we are going to give, most common stimulus is going to be train of 4 response. Train of 4 response. Train of 4 response is going to be the thing that we are going to do. 4 बार टैप करना है. 4 बार टैप करने के बाद में 4 बार अल्नार नर्व पे वी आर गोइंग टू गिव द स्टिमुलस. 4 बार टैप करने के बाद में इफ देयर इज अ रिस्पॉन्स, अगर रिस्पॉन्स आ रहा है मतलब क्या है? मतलब एनेस्थीसिया वट एवर न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेट दैट यू हैव गिवन इज नॉट एडिक्वेट, राइट? वो ठीक नहीं है. यू नीड टू इंक्रीज द डोज, राइट? Next we are having these 2 important devices. This is your central venous catheter. This is your central venous catheter. ये तो देखा होगा central venous catheter. You will be seeing catheter. This is going to be central venous catheter. Central vein में डालने के लिए we are having this particular thing. And lastly this particular device that we are going to use. इसमें बहुत सारे
mouth openings will be there, right? We are having this balloon, thermostat. Why? Because this is the Swan-Ganj catheter. इसमें बहुत सारी ओपनिंग होती है. Swan-Ganj catheter. This is your Swan-Ganj catheter, and it will be having multiple openings, and we are going to put it where? In the pulmonary artery. This is also known as pulmonary artery catheter. Abhi padha tha, this pulmonary artery catheter is going to be responsible. We are going to check the temperature. This is the best method. This is the best method that we are having for the temperature probing, right? तो यही है वो. This is your Swan-Ganj catheter that we are going to put, and this is having a thermostat, right? This is going to measure the best temperature for the body, right? So what we are having, अभी बंदा कहाँ आ गया? बंदा एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट के, बंदा इज इन द योर ओटी टेबल के ऊपर है, तुमने इंट्यूबेट कर दिया. नाउ वी आर लुकिंग एट सर्टेन थिंग्स. वी आर हैविंग सर्टेन 5 इंपॉर्टेंट मैंडेटरी मॉनिटर्स. अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर ऑल्सो हैविंग सर्टेन अदर मॉनिटर्स. बाकी चीज़ें भी है. क्या है बिस है? इससे क्या पता चलेगा? डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया. न्यूरोमस्कुलर मॉनिटरिंग, ये पता करने के लिए वेदर द पेशेंट इज adequately anesthetized or not, right? We are having central venous catheter. We are having Swan-Ganj catheter. Central venous डाल सकते हो. You can also use Swan-Ganj catheter, right? So these are the things we are having. What is the most effective approach for verifying the accuracy of intubation during laryngoscopy? Yes, Sandeep is saying. Thank you, Sandeep, to notice all the efforts that I'm doing. Keep studying, guys. It's for you, beta. The most important thing is, I really wish that you get your all questions right and you come to the other side of the fence, right? So what is the most effective approach for verifying the accuracy of intubation during laryngoscopy? कैसे पता करोगे? Air entry on auscultation, ultrasonography, best method. If they want to ask you about the best method, remember anything related with the endotracheal tube, you always go for the capnography. The answer will be in this particular case is going to be your capnography. That is going to be your capnography. Second question, what is the most effective way to verify the placement of endotracheal tube in a 30-year-old male patient who has been intubated for surgery by a final year resident? यहाँ पर क्या चेक करोगे? यहाँ पर रिमेंबर कैप्नोग्राफी इज गोइंग टू मेजर व्हाट? इट इज गोइंग टू मेजर EtCO2. EtCO2 मतलब expired end-tidal volume of CO2. Whatever volume of CO2 is going to come out, it is going to measure that and it is going to show that on the screen, राइट? तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू डू EtCO2 कंसंट्रेशन चेक कर लोगे. अगर सपोज अगर किसी ने इंट्यूबेशन किया और ET ट्यूब को कहाँ डाल दिया? इसोफेगस में डाल दिया. डू यू थिंक वहाँ से CO2 बाहर आएगा? नहीं आएगा सर. CO2 कहाँ से बाहर आएगा सर? CO2 लंग्स से बाहर आएगा. एंड अगर CO2 लंग्स से बाहर आएगा और CO2 बाहर आ रहा है, CO2 बाहर आएगा, तो यू विल बी हैविंग दिस टाइप ऑफ ग्राफ, एंड दिस इज व्हाट इज कैप्नोग्राफी. CO2 का ग्राफी क्या है? कैप्नो मतलब CO2, ग्राफिंग इज capnography, right? So we are going to measure the end-tidal CO2 volume. Understood, right? So this is what is the thing, right? So now let's try to understand what are the different capnographic graphs that you are having. They can be asked in your examination. तो इनके बारे में देखते हैं. Capno मतलब CO2 and graphy मतलब we are going to see the graphs. So EtCO2 के हम लोग ग्राफ देखेंगे expired CO2 के, right? Why this CO2 is going to come out? CO2 is coming out because of metabolism. Simple understanding रखो. Metabolism की वजह से क्या बनता है? Whatever glucose you are eating, it is going to end up into CO2 plus H2O. Ultimately देखो glycolysis होगा, glycolysis के बाद में Krebs cycle होगा, Krebs cycle के बाद में ETC बनेगा, ETC में जाएगा, and ultimately ETC के बाद में energy production के बाद में it is going to make what? CO2 plus H2. Glucose का end product is going to be CO2 plus H2O, not pyruvate. Pyruvate is the end product of glycolysis, right? तो end में क्या बनेगा? CO2 और H2O. वही CO2 बाहर आ रही है. So that means metabolism is sum of anabolism plus catabolism. एनाबोलिज्म मतलब जितनी भी रिएक्शंस हो रही है बॉडी के अंदर, छोटे छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल्स आर गोइंग टू मेक अ बिग मॉलिक्यूल्स. लाइक पेप्टाइड से क्या बन रहा है? प्रोटीन बन रहा है, बड़ा अमाइनो एसिड, मल्टीपल अमाइनो एसिड बाइंडिंग टुगेदर मेकिंग व्हाट? With the peptide bond they are going to make protein. This is your anabolic reaction.
ग्लूकोज खाया, कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाया, it is going to break down, it is going to make glucose, that is your catabolic reaction. So all the reactions that are happening are going to produce what? They are going to release CO2, and this is the CO2 we are going to measure. It is coming from the lungs, and this is what we are going to measure, right? So here we are going to have the graph. This is going to be the baseline, this is going to be, that means nothing is coming, nothing is going out, this is going to be the resting state. Resting state के बाद में there will be expiratory upstroke. expiratory upstroke मतलब क्या हुआ? एक्सपिरेशन हुआ. एक्सपिरेशन में क्या बाहर आता है? लंग्स से हम क्या छोड़ते हैं? दैट इज गोइंग टू बी CO2. So this is the phase that you are going to see at the level of expiration. After that you will be having what? Plateau phase. And after that what is going to happen? This is the point where you are going to what? You are going to measure the EtCO2. This is your question. So they have asked you, where do you measure the level of EtCO2? Exactly where do you measure? So you can remember, this is your question. This is the end of phase 3. End of phase 3 is the place where we are going to check the levels of EtCO2. Or again what you are going to do? You are going to do inspiration. Again you are going to do inspiration. और जैसे इंस्पिरेशन करोगे क्या होगा? ऑक्सीजन बढ़ेगा, CO2 का लेवल कम हो जाएगा. This is how you will be getting the graph. This is how you will be getting the graph, right? अब ये देखो, this is the normal graph. अगर ये ऐसे जाके ऐसे आ रहा है, that is going to be a positive graph, right? Normal EtCO2 कितना बाहर आता है? Normal EtCO2 कितना बाहर आता है? That is going to be 35 to 45 mm of Hg. Normally you will be expiring 35 to 45 mm of Hg. CO2 is going to come out, right? This is going to be a normal graph. अगर 40 के आसपास ग्राफिकल भी क्वेश्चन दे दिया, 40 के आसपास दे रखा है, that is going to be a good intubation. मतलब तुमने ढंग से इंट्यूबेट कर दिए. You are intubating someone, तुमने डाल दी ट्यूब, फिक्स कर दी, जोड़ दिया, सब कुछ चिपका दिया, एवरीथिंग इज डन. नाउ यू आर कनेक्टिंग इट, और कनेक्शन के बाद में तुम्हें आ रहा है 20 या 10. सो दैट इज गोइंग टू बी ढंग से कनेक्ट नहीं हुआ, राइट? इफ you are getting on the graph value around 35 to 45, that is going to be a good intubation, right? This is going to be a good or a right intubation, right? Now we are having certain patterns that you are going to see. What are the patterns that you are going to see? कौन से patterns आते हैं? This is your shark fin pattern. दिस इज योर शार्क फिन पैटर्न. ये कैसा दिख रहा है? शार्क फिन की तरह दिख रहा है. some patterns you have to remember. This is your shark fin pattern, and remember shark fin pattern you are going to see in the cases of partial obstruction. थोड़ा बहुत obstruction हो गया. Bronchial asthma, it is an obstructive disease, right? Okay, you can have bronchospasm. It can be due to anything. It can be due to drugs, it can be due to some other reasons, but if you are having this particular etiology, you will be getting this type of shark fin pattern, right? अगर इस पैटर्न के अंदर there is a cleft, there is a notch, there is a cleft, this is indicative of return of spontaneous ventilation, right? This is indicative of return of spontaneous ventilation. देखो दो चीज होती है, वन इज स्पॉन्टेनियस वेंटिलेशन, सेकेंड वन इज कंट्रोल्ड वेंटिलेशन. स्पॉन्टेनियस मतलब बंदा अपने आप ब्रीदिंग ले रहा है, अपने आप एयर ले रहा है, अपने आप एयर छोड़ रहा है, दैट इज द स्पॉन्टेनियस मेथड ऑफ वेंटिलेशन. सेकेंड इज योर कंट्रोल मतलब ही इज ऑन द वेंटिलेटर, नाउ द मशीन इज गिविंग हिम द कंट्रोल्ड वेंटिलेशन, दैट इज योर कंट्रोल्ड वेंटिलेशन. तो अगर कोई पेशेंट के अंदर, कोई पेशेंट इंट्यूबेटेड है, कोई पेशेंट की सर्जरी चल रही है, एंड इन द ग्राफ यू आर फाइंडिंग दिस टाइप ऑफ कुरारे नोच, Kurare notes, that is indicative of what? The patient started breathing himself. Dose repeat karo. Patient has started breathing himself, right? So that is going to be a return of spontaneous ventilation, right? Next we are having the graph above the baseline. Can you appreciate? This is the graph above the baseline. Graph above the baseline. If the graph is above the baseline, that is indicative of CO2 rebreathing. It is indicative of CO2 rebreathing. यानी पेशेंट क्या कर रहा है? अभी ऑक्सीजन की जगह CO2 को इनहेल कर रहे हैं, एंड दिस पर्टिकुलर पेशेंट इज गेटिंग ऑक्सीजन फ्रॉम वेयर? वी हैव कनेक्टेड दिस पर्टिकुलर पेशेंट विद द एंडोट्रेकियल ट्यूब. इसको जोड़ दिया है, मशीन से जोड़ दिया है, तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? मशीन से आएगी. अगर मशीन में कुछ प्रॉब्लम है, व्हाट विल हैपन? दिस पेशेंट विल बी हैविंग CO2 rebreathing, and CO2 rebreathing you are going to see when the soda lime is exhausted. I am going to make you understand what is this soda lime. तो सर्किट के अंदर सोडा लाइम होता है, सोडा लाइम एग्जॉस्टेशन हो सकता है.
या फिर सर्किट में ही कोई प्रॉब्लम है, सर्किट इशू विल बी देयर। सर्किट इशू, सर्किट मतलब एनेस्थीसिया मशीन से पेशेंट को कनेक्ट करने वाली चीज़ को सर्किट बोलते हैं, राइट। पेशेंट लेटा हुआ है, पेशेंट इंट्यूबेटेड है, पेशेंट की जो कनेक्टर है उसको कनेक्ट किया, किससे, मशीन से कनेक्ट किया, तो सर्किट के अंदर कोई प्रॉब्लम है, दैट इज गोइंग टू बी योर, दैट इज गोइंग टू बी योर दिस पर्टिकुलर थिंग, राइट। सो नाउ ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्या क्या पैटर्न देखे, शार्क फिन पैटर्न, ब्रोंकियल अस्थमा, पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन, ब्रोंकोस्पाज्म, curare notch you will be seeing in the spontaneous ventilation, and this is what you are going to see in the soda lime exhaustion above the baseline, right. Try to solve this question. What is this parameter being assessed by the device depicted in the provided image? ये तो COVID-19 में खूब लगाया तुम लोगों ने. Try to answer this particular question. This is your what? This is बच्चे, this is going to be your pulse oximetry. This is going to be your pulse oximetry. ये क्या है? ये पल्स ऑक्सीमेट्री है. कौन से लो बताए थे? 2 लो बताए थे. इट इज बेस्ड ऑन बियर लैम्बर्ट्स लो. इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ प्लेथिस्मोग्राफी. लॉ ऑफ प्लेथिस्मोग्राफी. देखो सिंपल सी कहानी है. तुम हाथ पे लगाते हो, हाथ के अंदर क्या हो रहा है? ब्लड फ्लो हो रहा है. हाथ के अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है. ब्लड फ्लो हो रहा है तो इस मशीन के अंदर ऐसी चीज़ होती है जो पल्सेटिंग ब्लड को ही फील करेगी, राइट. वेन्स के अंदर ब्लड कैसा फ्लो होगा? दैट इज गोइंग टू बी स्लगिश, वो धीरे फ्लो होगा, राइट. आर्टरीज का ब्लड कैसा होगा? आर्टीरियल ब्लड इज गोइंग टू बी, इट इज कमिंग फ्रॉम द हार्ट, राइट. यू आर चेकिंग फॉर द पल्स. पल्स क्या है? बेसिकली इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर हार्ट, राइट. तो यहाँ से जो ब्लड आ रहा है, यहाँ से जो ब्लड आ रहा है उसमें क्या होगा? मूवमेंट होगा, पल्सेशन होगी. तो इट इज गोइंग टू असेस द पल्सेटिंग थिंग. इसमें दोनों साइड में रोड्स होती है, राइट. एंड वन से एक साइड से रेज निकलेंगी और दूसरी साइड से हीमोग्लोबिन सेचुरेशन जो भी तुमको मेंटेन करना, जो भी असेस करना है वो असेस होकर दूसरी साइड मिल जाएगा. किस वेनस ब्लड को नहीं मेजर करेगी, राइट. सो इसके लिए व्हाट इज इंपॉर्टेंट, इसके लिए गुड ब्लड फ्लो होना चाहिए. अगर अच्छा ब्लड फ्लो है, कोई हाइपोवोलेमिक पेशेंट है तो अच्छे से ब्लड ही फ्लो नहीं होगा, या शॉक वाला पेशेंट है तो उस केस में ऑल्सो वी आर गोइंग टू सी दिस पर्टिकुलर थिंग, राइट. उन केसेस में वी आर नॉट गोइंग टू असेस दैट वेरी नाइसली. सो दिस पर्टिकुलर थिंग वी आर गोइंग टू यूज इन द केसेस ऑफ in the oxygen saturation. ये important है, right. Next we are having is next question. A 40-year-old patient is undergoing surgery under some anesthetic agent, or suddenly this particular patient has during the surgery EtCO2 की वैल्यू क्या हो गई? 100 चलेगी, बहुत ज़्यादा चलेगी, right. Along with high temperature of the body. This is an emergency. What could be the possible reason for this particular scenario except? ये क्या इसका रीज़न हो सकता है? ट्राई टू आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. Try to answer this. What can be the cause for this except? Try to solve this question. A 40-year-old patient is undergoing surgery. वो कोई सर्जरी करवा रहा है, तुमने सारा कनेक्ट कर रखा है, एवरीथिंग इज फिट एंड फाइन. और ड्यूरिंग द सर्जरी व्हाट इज हैपनिंग? EtCO2 वैल्यू नाउ इट इज शोइंग अराउंड 70, 80 और मे बी 100, राइट. बहुत ज़्यादा हो गया 100 तो, बट राइट इट इज़ मोर. EtCO2 is more. Along with the high temperature of the body, what could be the possible reason for this particular thing? देखो, this first of all try to make the diagnosis. What is your diagnosis? What is your diagnosis? क्या हुआ इस पेशेंट को? This is the only emergency that you have to remember. Sorry, this is the only most important question that has been asked multiple times. और बार बार पूछते हैं, सेम स्टोरी पूछते हैं, बस थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, राइट. द डायग्नोसिस इज गोइंग टू बी वंडरफुल. एवरीवन इज आंसरिंग. द डायग्नोसिस इज गोइंग टू बी malignant hyperthermia. Malignant hyperthermia. We've also discussed the mechanism in physiology. This is your malignant hyperthermia. If someone is having malignant hyperthermia, what is the reason? What is the reason? देखो, neuromuscular junction. What is going to happen? Let's try to understand. Right, nerve से suppose I want to contract this muscle, what will happen? Information from my brain is going to come over here to this particular muscle, and then what is going to happen? This information is going to do what? Contraction, right. यहाँ पर contraction होगा तो क्या आ रहा है? ऊपर से क्या आ रहा है? ब्रेन में से क्या करंट कैसे फ्लो करता है? विद द हेल्प ऑफ दिस sodium, potassium, and it will be basically the neurotransmitter will be acetylcholine.
दिस एसिटाइल कोलिन इज गोइंग टू एक्टिवेट व्हाट, ये जाके मसल के पास में जाएगा, ये नर्व वाला पार्ट हो गया, ये मसल के पास में जाएगा और मसल में क्या रिलीज करवाएगा, मसल विल बी हैविंग राइनोडिन रिसेप्टर, इट विल बी हैविंग DHPR, राइट, दे विल बी हैविंग इलेक्ट्रोमैकेनिकल कपलिंग, योर क्वेश्चन एग्जाम क्वेश्चन है याद रखना, दे विल बी हैविंग इलेक्ट्रोमैकेनिकल कपलिंग, इनका जो मूवमेंट होता है वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल होता है, बिकॉज इनके पास में ज़्यादा स्पेस नहीं होता, बहुत कम स्पेस होता है, सो दे विल बी मूविंग इलेक्ट्रोमैकेनिकली, इट्स नॉट इलेक्ट्रोकेमिकल, इट इज मैकेनिकल कपलिंग, राइट। उसके बाद में व्हाट विल हैपन, दिस इज गोइंग टू एक्टिवेट व्हाट, इन दोनों के कनेक्शन की वजह से व्हाट इज गोइंग टू हैपन, देयर विल बी depolarization की वजह से you are having calcium storage in the sarcoplasmic reticulum, and this calcium is going to come out, and calcium I have taught you in physiology as well, calcium के तीन ही function है, it is going to cause contraction in the vessel, वेसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन कराएगा और सेल के अंदर कराएगा एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। सो कैल्शियम इज गोइंग टू कम आउट, इट इज गोइंग टू कॉज इट इज गोइंग टू कॉज व्हाट, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सोसाइटोसिस, और इन तीनों चीज़ों की वजह से क्या होगा, मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा, पेशेंट का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा, और मेटाबॉलिज्म बढ़ने की वजह से CO2 बढ़ जाएगा, और CO2 बढ़ने की वजह से EtCO2 बढ़ जाएगा। अब प्रॉब्लम कहाँ पर है, मेन प्रॉब्लम लाइज इन दिस पर्टिकुलर रिसेप्टर, ये जो रिसेप्टर है, दिस पर्टिकुलर रिसेप्टर राइनोडिन रिसेप्टर is having problem, right? In malignant hyperthermia there will be mutation in the ryanodine receptor, and this ryanodine receptor is mutated, और ये कब पता चलता है, what are the things that are going to aggravate it, so remember all the inhalational agents, all inhalational agents can cause malignant hyperthermia, they can cause malignant hyperthermia. Apart from that, you also need to remember the most important thing, that is going to be succinylcholine. Succinylcholine is the brother of what, succinylcholine is the brother of acetylcholine, succinylcholine किसका भाई है, acetylcholine का भाई है, तो किसकी तरह काम करेगा, एसिटाइल कोलिन की तरह काम करेगा, इट इज गोइंग टू वर्क लाइक एसिटाइल कोलिन, एंड इट इज गोइंग टू कॉज व्हाट, इट इज गोइंग टू कॉज मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, हाइपरथर्मिया क्यों हुआ सर, वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई, ब्लड फ्लो बढ़ गया एकदम से बहुत ज़्यादा, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, व्हाट विल हैपन, हाइपरथर्मिया विल बी सीन इन द पेशेंट। सो दिस इज द स्टोरी, दिस इज द स्टोरी ऑफ मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। So what the question, you need to understand the question very carefully. Most of you are earlier marking what halothane or succinylfluorine, just try to read the question carefully. All the inhalational agent can cause this, halothane can cause this, right, isoflurane can cause this, succinylcholine most important, you have to remember. But in these patients what we are going to give the drug, that is going to be, they are asking about the exception, they are asking about the exception. So this propofol is an IV agent, and this is going to be utilized in the cases of malignant hyperthermia. The drug of choice will be, yes, drug of choice will be IV sodium dantrolene, IV sodium dantrolene we are going to give in this particular case, right, this particular person, this 48-year-old male, we are going to give IV sodium dantrolene, that is going to take care of the thing, right. We need to remove, we need to stop the drug, like we are giving succinylcholine, first we need to stop the succinylcholine, and then we need to give sodium dantrolene, right. This sodium dantrolene you will be, I've taught you in the psychiatry section also, in the malignant neuroleptic syndrome, right. Next question, we are having a 46-year-old chronic smoker, the patient is a chronic smoker, comes to the emergency department with the history of difficulty in breathing. Difficulty in breathing is what, it is going to be beta dyspnea, it is going to be dyspnea. The patient is having what, fever from last 1 days, which of the following pin index number of cylinder can be used to connect to face mask of this particular patient, कौन सा pin index यूज में लेंगे, डिस्निया हो रहा है, बेसिकली पेशेंट इज हैविंग डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, difficulty in breathing, patient is having difficulty in breathing, which is the pin index number you would like to use in this particular scenario, yes, okay, let's try to answer this one. Till then we see the next question, which color combination is used commonly associated with the nitrous oxide cylinder, nitrous oxide का color coding क्या होता है, color coding क्या होता है, right. So we are going to discuss
वी आर गोइंग टू कम बैक टू दीज क्वेश्चंस. ओके, पहले देखते हैं एनेस्थीसिया मशीन क्या होती है. एनेस्थीसिया मशीन क्या होती है, इसके कितने पार्ट्स होते हैं. देन आई एम गोइंग टू टीच यू, देन आई एम गोइंग टू आस्क यू दीज क्वेश्चंस, राइट. सो व्हाट इज गोइंग टू बी एनेस्थीसिया मशीन. राइट नाउ व्हाट वी आर डूइंग, एक पेशेंट आया था कॉलेसिस्टेक्टमी के लिए. वी आर हैविंग द पेशेंट, हम उसका पीएससी किया. पीएससी करने के बाद में पेशेंट को बुला लिया. सपोज ही इज अ स्मोकिंग पेशेंट, तो स्मोकिंग करता है तो 2 महीने बाद में बुला लिया. नाउ द पेशेंट इज लाइंग ऑन द ओटी टेबल. ओटी टेबल पे लेटाने के बाद में वी हैव डन द इंट्यूबेशन ऑफ द पेशेंट. हम लोगों ने एंडोट्रेकियल ट्यूब भी डाल दिया. एंड नाउ वी नीड टू कनेक्ट पेशेंट टू द मशीन. पेशेंट को मशीन से कनेक्ट करना है. कनेक्ट करने से पहले पेशेंट देख रहा है कि यहाँ पर सर्टेन मॉनिटर्स आर देयर. सो वी हैव ऑलरेडी सीन अबाउट द मॉनिटर्स. कुछ मॉनिटर्स होते हैं वहाँ पर. वी आर हैविंग 5 मैंडेटरी मॉनिटर्स. देन वी हैव सीन अबाउट द अदर मॉनिटर्स. Sorry, right. So we are done with this. Now we are going to see, now we are going to connect our patient to the machine. अभी patient को machine से कैसे connect करोगे, let's try to understand. What is the use of this anesthesia machine. देखो सिलेंडर आता है. सिलेंडर, वी आर हैविंग सर्टेन सिलेंडर्स, तो हमको सिलेंडर कनेक्ट करना है. बट अगर डायरेक्ट सिलेंडर मैंने कनेक्ट कर दिया, व्हाट विल हैपन, सिलेंडर के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है. कैन यू यूज इट डायरेक्टली? नो, यू कैन नॉट यूज इट डायरेक्टली. अदरवाइज व्हाट विल हैपन, लंग्स फट जाएंगे, एवरीथिंग विल बी बस्ट, राइट. सो व्हाट वी नीड टू डू, वी आर यूजिंग एनेस्थीसिया मशीन टू डिक्रीज द प्रेशर, टू डिक्रीज द pressure and to mix the gases, in equal concentration, in equal or known concentration, whatever is required, to mix the gases in the known concentration. तो पेशेंट को क्या करना है, कनेक्ट करना है. वी नीड टू गिव द गैसेस टू द पेशेंट इन द नोन कंसंट्रेशन, जितना चाहिए. So we are going to have what, high pressure system. This is going to be high pressure system, जहाँ पर सिलेंडर कनेक्ट होगा. सिलेंडर में ज़्यादा प्रेशर होता है, that is known as high pressure system. Then we are having second part, that is going to be intermediate pressure system, and then we are going to have low pressure system. ठीक है, लो प्रेशर सिस्टम. वी आर गोइंग टू कनेक्ट द पेशेंट टू द मशीन, राइट. तो 3 पार्ट होते हैं इसके, हाई प्रेशर सिस्टम, इंटरमीडिएट प्रेशर सिस्टम, लो प्रेशर सिस्टम. अभी देख लो एक बार के लिए. वी आर हैविंग दीज मॉनिटर्स, दीज आर योर वेपराइजर्स, अलग अलग कलर के. दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ मॉनिटर. और यहाँ से क्या करना है, इसी के पीछे सिलेंडर लगेगा और यहाँ से क्या करना है, हमको पेशेंट को कनेक्ट करना है. दिस इज गोइंग टू बी योर एनेस्थीसिया मशीन. सो इट विल बी हैविंग हाई प्रेशर सिस्टम, जहाँ पर क्या लगेंगे, सिलेंडर लगेंगे. बीच वाला जो पार्ट है उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट प्रेशर सिस्टम. वहाँ पर प्रेशर थोड़ा कम होता है. अल्टीमेट पर्पस इस मशीन का क्या है, प्रेशर को कम करना. ये जो सिलेंडर का प्रेशर है इसको इतना कर देना कि पेशेंट के अंदर ईजी वे में जा सके. वी कैन नॉट डायरेक्टली कनेक्ट द ऑक्सीजन सिलेंडर, हम नहीं कर सकते, राइट. सो वी नीड टू डिक्रीज द प्रेशर, राइट. सो व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स, इसके पार्ट्स के ऊपर क्वेश्चन आता है. हाई प्रेशर सिस्टम में what is the most important thing, that is going to be pin index safety system. What is this PIS? PIS is going to be pin index safety system. क्यों लगाया है pin index safety system? To prevent incorrect attachment of cylinder. नहीं तो लोग क्या करेंगे, some peoples what they do, instead of oxygen, ये लोग ऑक्सीजन की जगह नाइट्रस ऑक्साइड लगा देंगे, लाफिंग गैस लगा देंगे. व्हाट विल हैपन, पेशेंट हंसता हंसता चला जाएगा, राइट. तो इससे बचने के लिए वी आर हैविंग अ थिंग दैट इज नॉन एज पिन इंडेक्स सेफ्टी सिस्टम, राइट. व्हाट आर दीज पिन इंडेक्स दैट यू हैव टू रिमेंबर. तो सिंपली बता देता हूँ. वी आर हैविंग एयर, वी आर हैविंग ऑक्सीजन, वी आर हैविंग N2O, वी आर हैविंग CO2, we are also having CO2, we are having cyclopropane. तो इनके साथ में certain pin index that you have to remember the way I am telling you. So always remember this is going to be 5, 5 and 5. C जिसमें आ रहा है, C is looking like a 6, so that is going to be 6. C जिसके साथ में आ रहा है, that is going to be 6, right. So we are going to have air is going to be 1, A is going to be 1. Okay, oxygen में 2 molecule है, that is going to be 2, 5. Right, nitrous oxide 2 plus 1, that is going to be 3, 5. CO2 if it is in the less concentration, it is going to be 1, 6. More concentration 2, 6. And cyclopropane, remember, it is going to be 3, 6. So these are the pin index that you have to remember. One more you can remember, that is going to be Antonox. Antonox is what?
It is the mixture of N2O and oxygen. It is the mixture of N2O. It is the mixture of what? Ntonox is the mixture of, sorry, it is the mixture of N2O plus oxygen. It is the mixture of N2O plus oxygen, and you can also remember 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So pin index of for this particular thing is going to be 7. For this particular thing is going to be 7. तो देखो पिन इंडेक्स होता कैसा है. दिस इज योर पिन इंडेक्स. यहाँ पर क्या होगा, जो सिलेंडर लगाना है दिस इज गोइंग टू बी 2.5. दिस इज गोइंग टू बी 2.5. ब्लू कलर का सिलेंडर है, दिस इज गोइंग टू बी 3.5 बेसिकली, राइट. सो ब्लू कलर का सिलेंडर है, 3.5 पिन इंडेक्स है. सो ये सेम पोजीशन पे ही लगेगा. इट इज हैज पर्टिकुलर पोजीशन, राइट. इसी पोजीशन पे एक ही सिलेंडर लगा सकते हो. इसमें ऑक्सीजन फिट करने की कोशिश करोगे, नहीं फिट होगा. दिस इज लाइक ए ताला चाबी सिस्टम, राइट. तो जो लगाना है वही लगेगा. Okay, remember this blue color cylinder is going to be N2O. N2O is going to be Neela. N2 is going to be Neela. Black body, white shoulder is going to be your oxygen. Black body, white shoulder. Wherever you are, just repeat with me. Black body, white shoulder is going to be oxygen. This N2O is going to be Neela cylinder. और ये संतरी लग रहा है. This is going to be orange. Orange is going to be संतरी. संतरी is going to be cyclopropane. This is going to be cyclopropane, and these are the pin index that we are having. You can remember air is going to be black body, white shoulders, white quarters. Oxygen is going to be oxygen is going to be black body and white shoulders. Air is going to be black body and shoulders will be black and white. Nitrous oxide is going to be blue. Carbon dioxide कोई काम का नहीं है. Gray color will be there. Cyclo संतरी, you can remember, that is going to be orange. And Antonox is going to be it is a combination of N2O plus oxygen, so it will be having blue body and white quarters will be there. It is a combination of oxygen plus nitrous oxide. So blue body is because of N2O, and oxygen is going to give you white shoulders. White quarters will be there, right. So these are the questions that can be asked in your examination, right. So pin index safety system is going to be a part of high pressure system. Second thing, oxygen is going to be black and white. Okay, this santri is going to be orange, is going to be cyclopropane, and this is blue is going to be nitrous oxide. Air ka pin index, air is going to be 1.5. Oxygen is going to be 2.5. N2O 1, 2, 3, that is going to be 3.5. CO2 is going to be 1.6. CO2 is going to be 2.6, and cyclopropane is going to be 3.6, and Antonox is going to be 7. 7 is going to be the pin index, right. Apart from this is the first thing. Second thing, what is going to happen here, you will be having high pressure में एक और चीज याद रखना है. Here you will be having cylinder attachment. Cylinder will be attached here, राइट. हाई प्रेशर क्यों है, क्योंकि यहाँ पर सिलेंडर चिपका है. 2000 psi, 760 psi, बहुत ज़्यादा प्रेशर है. वी कैन नॉट टॉलरेट दैट. सो दिस इज द पर्पस, फर्स्ट पार्ट ऑफ द मशीन. सेकेंड पार्ट इज गोइंग टू बी इंटरमीडिएट पार्ट ऑफ द मशीन. इंटरमीडिएट में यहाँ पर प्रेशर क्या होता है, थोड़ा कम होता है. 55 से 60 psi आ जाता है. 2000 और 750 से सीधा 55 से 60 psi पे आ गया. 55 to 60 psi. So what is the purpose of the anesthesia machine? To decrease the pressure, right. Second thing, यहाँ पर एक सिस्टम होता है that is known as DIS. वहाँ पर पिस पड़ा था, यहाँ पर DIS पढ़ेंगे. DIS is going to be your diameter index safety system. This is going to be diameter index safety system. Diameter index safety system. That is going to be a DIS, right. In this we are going to see what are the things we are going to have. We are having emergency oxygen flush, that is going to release 35 to 70 liters of oxygen at 55 to 60 psi. ये मशीन के अंदर एक बटन होता है, that is going to, when we are going to press that, you are going to have emergency oxygen release, right. Second, we are going to have flow control valve, that is these are going to be your color coded valves that we are having, right. Air is going to be black, you can remember. Now the patient is lying on the hospital on the bed, right, on the OT के अंदर you must have seen certain pipelines will be traveling, right. So these pipelines are your intermediate pressure system. These pipelines are your intermediate pressure system. और इसमें क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, कौन से कलर की पाइपलाइन होती है. वैक्यूम VY जैसा लगता है, so that is going to be yellow. Oxygen is important, that is going to be white, and N2O is going to be Neela, that is going to be blue.
N2O तो ब्लू होगा। तो यू मस्ट हैव सीन व्हेन यू विजिटेड हॉस्पिटल, तो वहाँ पर कुछ पाइपलाइंस होती है, उन पाइपलाइंस के अंदर क्या होता है, अगर ब्लैक कलर की पाइपलाइन है यू विल बी हैविंग एयर, अगर येलो है दैट वुड बी वैक्यूम, ऑक्सीजन विल बी प्रेजेंट इन द वाइट कलर pipeline, and lastly we are having nitrous oxide that is going to be present in the blue color line, right? If you try to insert this white cable into this blue one, are you able to insert it? No, this is the diameter index safety system, मतलब गलत चीज आप गलत छेद में नहीं डाल सकते। रीजन क्या है? द थिंग इज, सपोज दिस इज योर सी टाइप, दिस इज योर बी टाइप, यू कैन नॉट इंसर्ट द बी टाइप चार्जर इन द सी टाइप, राइट? तो नहीं जाएगा, राइट? सो दिस इज गोइंग टू बी diameter index safety system which is going to be present in your intermediate pressure system। समझ में आया, right? Then we are having low pressure system. Low pressure system, this is the whole thing you will be having present around the body, right? So here we will be having flow meter. Remember, here we will be having flow control valves. This was the question they have asked. तो याद रखना, flow control valves are a part of intermediate pressure system, whereas flow meters are the part of low pressure system. They are going to indicate the flow of gases. ये gases का flow के बारे में बताएंगे। वेपराइजर में वी आर हैविंग दीज वेपराइजर से दिखाए थे मैंने एनेस्थीसिया मशीन में, आगे की तरफ वी आर हैविंग व्हाट, दीज आर द वेपराइजर्स दैट वी आर हैविंग। इनमें भी कलर कोडिंग के हिसाब से चीज़ें जाएंगी। सो वी आर हैविंग फोर इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू नीड टू रिमेंबर। तो जो येलो येलो दिख रहा है, येलो इज लाइक सूरज, सूरज की तरह जो दिख रहा है दैट इज गोइंग टू बी सीवोफ्लोरिन, सीवोफ्लोरिन, राइट? दिस इज गोइंग टू बी आइसोफ्लोरिन। रेड कलर इज गोइंग टू बी हेलोथिन, और ब्लू वाला जो होता है दैट इज गोइंग टू बी डेस्फ्लोरिन। ओके, दैट इज गोइंग टू बी डेस्फ्लोरिन। एंड रिमेंबर द all these three are looking similar, all these three are looking similar, but this one is a little bit different, this blue one is little bit different, and this blue one, desflurane or blue one, is having a special vaporizer, your previous year exam question, that is going to be your tax 6 vaporizer। इस vaporizer का नाम क्या है? tax 6 vaporizer, राइट? सिंपल अंडरस्टैंडिंग रखो, जो भी ये दवाइयाँ आती है ये सब लिक्विड फॉर्म में आती है। ऑल दीज ड्रग्स, दीज आर योर इनहेलेशनल एजेंट्स, ये 4 इनहेलेशनल एजेंट्स हैं। ये सारी दवाइयाँ कैसे आती है? लिक्विड फॉर्म में आती है, इंजेक्शन आता है, ऐसे सिलेंडर तो आता नहीं है। तो वी आर गोइंग टू पुट दैट इंजेक्शन इनटू दीज वेपराइजर्स, और ये क्या करेंगे? उसकी गैसेस बनाएंगे, और गैसेस कहाँ जाएंगी? पेशेंट के अंदर जाएगी, राइट? सो दीज आर, येलो वन इज फॉर द सीवोफ्लोरिन, this purple is going to be for isoflurane, yellow is going to be red, and this is going to be blue. Blue one is a special vaporizer that we are having, that is your tax 6 vaporizer। इसका नाम क्या है बच्चों? tax 6 vaporizer। This was the question they have already asked, right? This is going to be utilized for the desflurane, right? Next question, blue pipeline supplies carries which gas? अभी बताओ, blue pipeline जो हॉस्पिटल के अंदर जा रही है उसके अंदर कौन सी गैस है? उसके अंदर क्या क्या उसके अंदर नाइट्रस ऑक्साइड है? क्या उसके अंदर ऑक्सीजन है? एयर है? वैक्यूम है? ऑक्सीजन इज गोइंग टू बी, ऑक्सीजन अच्छी होती है, दैट इज गोइंग टू बी वाइट। एयर, वी डू नॉट नीड एयर, दैट इज गोइंग टू बी ब्लैक। येलो, येलो से वी से वाई बना सकता हूँ, दैट इज गोइंग टू बी वैक्यूम। एंड नाइट्रस ऑक्साइड एंड फॉर नीला, दैट इज गोइंग टू बी blue, that is going to be blue। Wonderful guys, you guys are answering, I'm happy, right? That is going to be blue, right? Which of the best way to recognize the cylinder? Best way क्या है किसी सिलेंडर को रिकॉग्नाइज करने का? That is going to be the label, that is going to be the label is one of the best ways to recognize the cylinder। Yes, we can use pin index, we can also use color coding, but the color वगैरह ये सब चीज़ें फेड हो सकती है, but the best way is going to be the label देखना है, right? What is the cylinder associated with the black body and white shoulder? Black body and white shoulder is going to be what? It is going to be, definitely sir, it is going to be oxygen, it is going to be oxygen। The color of nitrous oxide cylinder is going to be complete blue, nitrous oxide N2O is going to be complete blue। If they want to ask you about the Antonox, then they will be giving you blue plus white, that is going to be blue plus white, right? Now we are going to see about the different types of circuits। अभी हम सर्किट की बात करेंगे। सर्किट कौन से हो सकते हैं यहाँ पर? ये एनेस्थीसिया मशीन है, सर्किट का फंक्शन देख लो पहले। नाउ यू नो एनेस्थीसिया मशीन हैज 3 थिंग्स, इंटरमीडिएट, हाई एंड लो प्रेशर सिस्टम। हाई प्रेशर में सिलेंडर लगाया, इंटरमीडिएट में पाइपलाइन, दिस वी हैव स्टडीड, एंड लो प्रेशर विल बी कनेक्टेड टू द पेशेंट, राइट? सो दिस एनेस्थीसिया मशीन हैज अ फंक्शन, इट विल बी कनेक्टिंग टू द
patient. Now this machine is going to connect the patient. सिलेंडर डायरेक्ट अटैच नहीं करना हमको, मशीन अटैच करना है, मशीन अटैच हो जाएगी, सिलेंडर से गैसेस सब कुछ अपने आप आएगा, राइट. सो वी आर गोइंग टू हैव 3 टाइप्स ऑफ सर्किट्स ओवर हियर. सर्किट्स 3 तरीके के होंगे, ओपन हो सकता है, सेमी क्लोज हो गया, एंड लास्टली वी आर हैविंग क्लोज्ड सर्किट. 3 तरीके के सर्किट हो सकते हैं. सो हाउ वी आर कनेक्टिंग आवर पेशेंट फ्रॉम एनेस्थीसिया मशीन, दैट इज गोइंग टू बी द सर्किट, राइट. वी कैन हैव ओपन सर्किट बेटा, वी कैन हैव सेमी क्लोज सर्किट, वी कैन हैव क्लोज सर्किट. तो ओपन सर्किट में क्या याद रखना है, ओपन सर्किट जो WTG मॉर्टन ने जो टेस्ट किया था, दैट वाज ऑन द क्लोरोफॉर्म और ईथर, क्लोरोफॉर्म और ईथर जो डालते हैं, यानी विदाउट एनीथिंग. देखा होगा मूवीज में, क्लोरोफॉर्म लगाया बेहोश हो गया, क्या रियल में होता है? नहीं होता है, राइट. इट नीड्स अ लॉट ऑफ टाइम. अगर ऐसा हो जाता तो जरूरत ही क्या थी मशीन की, राइट. सो दैट इज ओपन. सेकेंड, सेमी क्लोज सर्किट्स. एवरी ईयर क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, दैट इज गोइंग टू बी योर मैपलसन सर्किट. इन सर्किट्स को क्या बोलते हैं? मैपलसन सर्किट्स. एंड लास्टली वी आर हैविंग क्लोज सर्किट. इट इज गोइंग टू बी ए सर्कल system. It is going to be a circle system. These are going to be non-portable circuits. ये कहाँ मिलेंगे? ये हॉस्पिटल में OT के अंदर मिलेंगे. These are the circuits which are portable. Semi-closed are going to be portable. You must have seen patient को लेके जा रहे हैं और एक अम्बू बैग से दबा रहे हैं उसको, and some gases are going to the patient. So what are those circuits that we are using? These are your semi-closed circuit. So now let's try to understand. सेमी क्लोज में मैपलसन सर्किट आता है. मैपलसन में 6 सर्किट you have to remember. What are these 6 circuits that we are having? We are having मैपलसन A, B, C, D, E and F. We are having these circuits, right? These are your circuits. यहाँ पर क्या होगा? तुम्हारा पेशेंट होगा, यहाँ पर पेशेंट होगा, राइट. एंड दिस पेशेंट विल बी कनेक्टेड टू दिस सर्किट. और यहाँ से क्या आ रही है? यहाँ से गैस आ रही है. फ्रॉम हियर द गैस विल बी कमिंग. सो हाउ यू कैन डिफरेंशिएट? पहले इस पे क्वेश्चन नहीं आता था, बट नाउ इट इज दे आर गिविंग क्वेश्चन ऑन दिस ऑल्सो. ये सेमी क्लोज सर्किट देख के पूछते हैं, इमेज देख के पूछते हैं कौन सा है. सो जस्ट बी विद मी, यू विल बी अंडरस्टैंडिंग. रिमेंबर, अगर APL पेशेंट के पास में है, दैट इज गोइंग टू बी एडजेसेंट. दैट इज गोइंग टू बी एडजेसेंट. That is going to be adjacent to the patient. This is going to be Mapleson A. This is going to be Mapleson A. अगर पेशेंट के बिल्कुल पास में है, एडजस्टेंट दे रखा है, दैट इज गोइंग टू बी Mapleson A. B में क्या याद रखना है? बोथ फ्रेश गैस वॉल्व एंड APL विल बी टुगेदर. दोनों FGF फ्रेश गैस एंड दिस APL आर गोइंग टू बी टुगेदर. तो बोथ अगर आ रहा है, बोथ ऑफ देम आर टुगेदर, दैट इज गोइंग टू बी Mapleson B. C में क्या याद रखना है? देयर विल बी नो कोरुगेशन. कोरुगेशंस विल बी एब्सेंट. हाउ यू कैन अंडरस्टैंड? C, कोरुगेशंस विल बी एब्सेंट. कोरुगेशंस विल बी एब्सेंट. कोरुगेशंस नहीं है. कैन यू अप्रिशिएट? हियर वी आर हैविंग कोरुगेशंस, हियर वी आर हैविंग कोरुगेशंस, बट Mapleson C दोनों साथ में तो है, बट देयर इज नो कोरुगेशन. सो दिस इज गोइंग टू बी Mapleson C. D is going to be distant. D is going to be distant. APL क्या हो गया? अभी APL पहले पास में था, now APL is distant. That is going to be Mapleson D. और Mapleson E के अंदर what you need to remember? Here there is no exit. There is no exit. Exit नहीं है और ये भी absent है. This particular thing is also absent. That is going to be Mapleson E. And lastly we are having F. F will be having this wall. This particular wall will be present in the F. So that is going to be fresh gas valve will be near. Balloon present है and wall will be near. Okay. This is what this is how you can remember Mapleson A, B, C, D, E, F. अभी इनका uses देखते हैं. What are the different uses of A, B, C, D, E, F? A is also known as, A से याद रख लो, A मतलब alone. A मतलब it will be alone. A मतलब alone. This is going to be alone. Alone रहेगा तो क्या बनाएगा? मैगी बनाएगा. You can remember like that. Alone, or you can also remember ये अकेला बंदा है तो खुद ही सांस लेगा. So you can remember this is also known as McGill's circuit. This is also known as McGill's circuit, right? This is also known as modified Mapleson A. This is also known as leg circuit और coaxial Mapleson circuit. तो ये ऐसा दिखेगा. This is what it will be looking like, right? This is going to be Mapleson A. B और C are not important. B और C छोड़ दो. D याद रखो. D is going to be dependent. D से याद रखो dependent.
डिपेंडेंट कब होते हैं? डिपेंडेंट मतलब किसी और पे डिपेंडेंट है सांस लेने के लिए भी, दैट इज गोइंग टू बी स्पॉन्टेनियस वेंटिलेशन या कंट्रोल्ड में सर्किट ऑफ चॉइस है, दिस इज गोइंग टू बी ऑन द कंट्रोल्ड वेंटिलेशन। कंट्रोल्ड मतलब बंदा खुद सांस नहीं ले पा रहा तो तुम क्या करोगे? मेपल्सन डी यूज में लोगे। बंदा खुद सांस ले पा रहा है, व्हाट यू विल बी यूजिंग? यू विल बी यूजिंग मेपल्सन ए, यू विल बी यूजिंग मेपल्सन ए। और अगर कंट्रोल्ड है दैट इज गोइंग टू बी बेन सर्किट, बेन सर्किट, कंट्रोल्ड वेंटिलेशन इज गोइंग टू बी बेन सर्किट। नेक्स्ट वी आर हैविंग इज मेपल्सन ई, ये बच्चों में यूज में लेते थे आयर्स टी पीस, बट दिस इज बैगलेस, दिस इज वॉल्वलेस। ये जो मेपल्सन ई है इसमें वॉल्व भी नहीं है, बैग भी नहीं है, सो दिस इज गोइंग टू बी बैगलेस एंड वॉल्वलेस एंड यूजलेस ऑल्सो, दिस इज गोइंग टू बी यूजलेस ऑल्सो। तो ये बेकार था ई, राइट? Then we have developed what? We have developed F, Mapleson F. And remember this Mapleson F is also known as Jackson's Reese circuit. This is also known as Jackson's Reese circuit. And Jackson Reese circuit का modification जो किया, this is the modification of Jackson Reese circuit, that is Mapleson F. And this is also known, this is the circuit of choice in pediatric patient, pediatric patient, choice in pediatric age group patients. तो बच्चों का अगर क्वेश्चन आए, सिंपल अंडरस्टैंडिंग देता हूँ, बच्चों का अगर क्वेश्चन आए यू हैव टू मार्क व्हाट? मेपल्सन एफ। अगर कंट्रोल्ड वेंटिलेशन है, बंदा खुद से सांस नहीं ले पा रहा, दैट इज गोइंग टू बी मेपल्सन डी। ओके, अगर खुद से सांस ले पा रहा है दैट इज गोइंग टू बी मेपल्सन ए, ऑल्सो नोन एज मैगिल सर्किट, ऑल्सो नोन एज मॉडिफाइड मेपल्सन ए। अगर इमेज में कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे? इमेज में डिफ्रेंशिएट करने के लिए कैन यू अप्रिशिएट देर इज ओनली वन ट्यूब, देर इज ओनली वन ट्यूब हियर, देर इज गोइंग टू बी अ ट्यूब विद इन अ ट्यूब। अगर दो ट्यूब दे रखी है, इफ टू ट्यूब्स आर गिवन, if two tubes are given you will be thinking in the terms of Mapleson D, Mapleson D. Mapleson D we can use for the spontaneous ventilation also, it is the universal circuit, right? It is the universal circuit, ये सबसे ज़्यादा यूज में होता है, right? This is the A, this is the best for spontaneous ventilation, best for spontaneous ventilation पूछे Mapleson A, can be used, that is going to be Mapleson D, Mapleson D. So try to solve this question. If you have understood, if you are having any issues, do ask me. A 5-year-old child is spontaneously breathing and going under minor elective surgery. Okay. Which of the following circuit can be used over here? Which of the following circuit can be used over here? Which circuit we are going to use? Yes, one tube within another tube is going to be Mapleson D. A 5-year child is going to be spontaneously breathing, spontaneous breathing. Which circuit you would like to use? Is undergoing minor elective surgery, छोटा सा surgery है. What is the circuit that you are going to use? Very good, I am expecting that, Rituraj. But this is how the examiner will trick you. Here it is written 5-year child. Don't look at the spontaneous breathing first. Look at the child. Look at the child. If the child is given, yes, if the child is given, what is the thing you are going to use? You are going to use Jackson-Reese modification. If you are answering A, if you are thinking about spontaneous, that is the wrong thing that you will be thinking, right? So read the question carefully. You should not think about the you should not think about the ventilation first, you should think about the time, right? So that is going to be Jackson-Reese, that is going to be Jackson-Reese, or you can also answer Mapleson circuit F, Mapleson circuit F is going to be the answer, F is going to be the answer. Maggie is going to be A, मैगी खुद बना के खा लेगा, और D is dependent, किससे बनवाएगा? बहन से बनवाएगा, like that, bands, right? And this is going to be Mapleson E, right? Next question we are having. A 29-year-old patient is presented in a surgical emergency, right, with an acute abdomen and was posted for emergency surgery. The anesthetist has decided to give him general anesthesia. Which among the Mapleson circuit is going to be best for spontaneous ventilation in an adult patient? Yes, now try to solve this one. अकेला है, patient is going to be spontaneous breathing, patient is breathing spontaneously. What is the circuit would you like to use? What is the circuit would you like to use? Alone is going to be Magill circuit. Maggie बना के खाएगा, अकेला है, spontaneous ventilation, Mapleson A is going to be the answer. Mapleson A is going to be the answer. Now tell me this question. Now tell me the answer of this particular question.
A 4-year-old child came to the emergency for operation during the removal of aspirated foreign body. Right? With the aid of rigid bronchoscopy during the removal of the foreign body, spontaneous ventilation was maintained for a smaller size endotracheal tube. Which among the following is the ideal anesthetic circuit in this particular case? Here also, very good guys. Here also the answer is going to be Jackson Rees. Always remember pediatric patient. Always remember pediatric patient. You will be going for Jackson Rees or Mapleson F. Mapleson F or Jackson Rees. Don't make this type of questions wrong. ऐसे question गलत करने के है ही नहीं, है ना? Yes, definitely again Jackson. Child के लिए the best thing that we are having is going to be Jackson, right? A 25-year-old patient was posted for exploratory laparotomy due to an abdominal injury, and anesthetist decided to give him controlled anesthesia. Now in this particular case, which circuit is going to be most effective for controlled ventilation? These are all your PYQs. यही पूछते हैं बार बार, सेम चीज़ें घुमा के पूछते हैं डिफरेंट एग्जामिनेशन. So the control ventilation, or if nothing is given, the universal circuit that we are having is going to be your nothing but your Mapleson D. Mapleson D. Mapleson D is going to be the universal circuit, also known as Bain circuit. This is your dependent circuit, control ventilation, and the best one. ये तुमको सबसे ज़्यादा मिलेगा. This green color is not visible. This is this is not visible, but this is what you need to remember. Most commonly, अगर कोई पेशेंट को तुम हॉस्पिटल में ले जाते देखोगे, पेशेंट किसी हॉस्पिटल के अंदर जा रहा है, स्ट्रेचर पे भी है, राइट, व्हाट दे आर ट्राइंग टू सेव द पेशेंट, तो कैसे क्या यूज़ में ले रहे होंगे? ये यूज़ में ले रहे होंगे और कुछ नहीं है, राइट. सो दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट. नाउ दिस क्वेश्चन. A 35-year-old patient has undergone radical hysterectomy under general anesthesia. An anesthetist attached this patient to the following breathing system. What is the name of the breathing circuit shown below? What is this particular circuit shown below? Is it a McGill circuit? Is it a Bain circuit? Is it a Lake circuit? Is it a Humphrey circuit? What is it? McGill is what? Mapleson A. McGill is what? Mapleson A. Bain is what? Mapleson D. Can you appreciate the tube in tube appearance? Tube in tube appearance is going to be Bain circuit, and the most common and the universal circuit. Very, very important. Universal, most common used, and this is going to be Bain circuit. This is going to be your Bain circuit. Bain circuit हो गया, ठीक है. Now अभी सर्किट वर्किट सब लगा दिए, पेशेंट हमारा रेडी है. नाउ ओनली वी नीड टू गिव द ड्रग्स टू द पेशेंट. नाउ वी नीड टू गिव व्हाट? ड्रग्स टू द पेशेंट. तो ड्रग्स में कौन सी दवाइयाँ देते हैं? जनरल एनेस्थीसिया वी हैव सीन. वी कैन यूज इनहेलेशनल एजेंट्स, वी कैन ऑल्सो यूज IV एजेंट्स. CNB सेंट्रल न्यूरोक्सियल ब्लॉकेट. रीजनल में एक रीजन ब्लॉक करना है, सेंट्रल वाला सेंट्रल न्यूरोक्सियल ब्लॉकेट. पेरिफेरी में पेरिफेरल न्यूरोक्सियल ब्लॉकेट. टॉपिकल और इन्फिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया वी हैव सीन. Right, so general anesthesia, inhalational drugs. What are the inhalational drugs? Let me make a flow chart for you. So we are going to have halothine, isoflurane, sevoflurane, desflurane, और भी होते हैं methoxsane, फ्लोरिन, वो ज़रूरी नहीं है, important we are going to discuss, right. IV agents में we can use two types of drugs. देखो ध्यान से देखो, we are having opioids, we are having non-opioids. IV agents में we can use two types of drugs. We can use opioids, we can use नॉन ओपियोइड्स. ओपियोइड्स में क्या क्या देंगे? ओपियोइड्स में मोर्फिन दे सकते हैं, फेंटानिल दे सकते हैं, एल्फेंटानिल, सूफेंटानिल, है ना, रेमीफेंटानिल. सो दीज आर द ओपियोइड्स जो IV एजेंट्स है, राइट. IV एजेंट्स ओपियोइड्स के अलावा नॉन ओपियोइड्स भी है. व्हाट आर द नॉन ओपियोइड्स दैट वी आर हैविंग? वी आर हैविंग 4 इंपॉर्टेंट वंस, मोस्ट कॉमनली यूज्ड, दैट इज गोइंग टू बी प्रोपोफोल, इटोमिडेट, थायोपेंटोन और कीटामीन. Let's take a break for 5 minutes, guys. Pencil is gone. I need to charge the pencil. Just take a break for 5 minutes, or just do one thing. Let me revise it for you, whatever we have discussed. है ना. तो let's revise whatever we have discussed. So we are having what? We are having general anesthesia, regional anesthesia, local anesthesia. General में we can do complete body will be
complete body will be anesthetized, right? Complete body will be anesthetized. Second, regional में there can be central neuroaxial blockade, there can be peripheral neuroaxial blockade. Local में we can use topical drugs, we can also use infiltration, So let's revise what we have seen till now. Just for 5 minutes, I'll do a very quick revision so that you can remember everything here itself. So in the introduction part, we have seen about the history, certain scientists we have seen, certain scientists like W.T.G. Morton, John Snow, Edmund Gaskin Boyle we have seen, right? So August Bayer that we have seen, these are the important scientists. Then we have seen the different types of anesthesias that we are having. Then we have seen the pre-anesthetic checkup. In pre-anesthetic checkup, we have understood patient will be going for the pre-anesthetic checkup के लिए patient clearance के लिए जाएगा anesthesia department में. They will be checking the general physical examination, they will be taking the history, oral cavity का size of tongue assess करेंगे. Apart from that, ASA grading grade 1 2 3 4 5 6 grade will be there. अगर क्वेश्चन पूछे grade 1 is going to be healthy patient, grade 6 for organ harvesting, grade 4 is going to be constant threat, तो ये याद रखना है. मलम पट्टी 3 and 4 is going to be difficult intubation, push pneumonic याद रखना है. अपार्ट फ्रॉम दैट, ये ग्रेडिंग सिस्टम करने के बाद में दे विल बी राइटिंग एनपीओ ऑर्डर्स. एनपीओ में क्या बोलेंगे पेशेंट को, क्या खा के नहीं आना है, कितने टाइम पहले खाना है, कब तक खा सकते हो, राइट? दैट इज गोइंग टू बी एनपीओ ऑर्डर्स. देन वी आर हैविंग प्री एनेस्थेटिक ऑर्डर. प्री एनेस्थेटिक में क्या लिखेंगे, व्हाट आर द ड्रग्स यू आर टेकिंग, व्हाट आर द ड्रग्स यू शुड बी स्टॉपिंग, तो वो वाली दवाइयाँ हम लोग लिख देंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट एनपीओ ऑर्डर, एनपीओ और प्री एनेस्थेटिक के बाद में नाउ द पेशेंट विल बी कमिंग फॉर द सर्जरी. नाउ व्हेन द पेशेंट इज कमिंग फॉर सर्जरी, हम लोग उसको कुछ दवाइयाँ देते हैं बिफोर द सर्जरी. दीज आर नोन एज प्री ऑपरेटिव मेडिकेशन. एंटीबायोटिक 1 घंटे पहले देना है, right? Apart from that, glycopyrrolate is very important, right, for to decrease the secretions. Then we have understood about the intubation. अब उस पेशेंट को इंटूबेट करना है, इंटूबेट करने के लिए उसको बेंजोडाइजेपिन वगैरह दे के लिटा दिया. नाउ द पेशेंट विल बी इंटूबेटिंग. इंटूबेशन के लिए हम लोग क्या यूज में लेंगे, लेरिंगोस्कोप. वी हैव सीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेरिंगोस्कोप्स, right? We are having Miller is going to be straight blade. We are having McCoy, we are having Macintosh मतलब curved blade है. McCoy में एक extra handle will be there, extra lever will be there, right? Then we have seen intubation. लेरिंगोस्कोप से करेंगे, नॉन डोमिनेंट हैंड में पकड़ेंगे, एपिग्लोटिस को उठाएंगे, ग्लोटिक ओपनिंग देखेंगे, एंड देन वी आर गोइंग टू पुट द एंडोट्रेकियल ट्यूब. दैट इज गोइंग टू बी डिवाइस, राइट? इंट्यूबेशन के अंदर वी आर हैविंग अदर थिंग्स, वी आर हैविंग डिवाइसेस, राइट? वी कैन यूज सुप्राग्लोटिक, अबाउ द ग्लोटिक डिवाइसेस. अगर ईटी ट्यूब नहीं डाल पा रहे, ग्लोटिक ओपनिंग नहीं है, तो क्या करोगे, सुप्राग्लोटिक डिवाइसेस डाल दोगे. एलएमएस, वी हैव स्टडीड अबाउट द एलएमएस, लाइक एलएमए क्लासिकल, वी आर हैविंग सुप्रीम, राइट? वी आर हैविंग आईजेल, अम्बू वाला हो गया, राइट? सो दीज आर द एलएमएस. फास्ट ट्रैक वाला हो गया, दीज आर द एलएमएस वी हैव सीन. एलएमएस डाल दोगे, एलएमएस नहीं जा रहे हैं तो एंडोट्रेकियल ट्यूब अगर डाल रहे हो, तो एंडोट्रेकियल ट्यूब में वी हैव सीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंडोट्रेकियल ट्यूब्स लाइक फ्लेक्सोमेटेलिक, वी आर हैविंग रेड रबर ट्यूब, राइट? सो दीज आर द एंडोट्रेकियल ट्यूब. ट्यूब डालने के बाद में यू विल बी डूइंग द फिक्सेशन करने के बाद में नाउ यू नीड टू कनेक्ट इट टू द मशीन. एनेस्थीसिया मशीन से कनेक्ट करोगे. मशीन विल बी हैविंग 3 पार्ट्स, हाई प्रेशर सिस्टम, इंटरमीडिएट प्रेशर सिस्टम, लो प्रेशर सिस्टम. हाई में पिन इंडेक्स याद रखना है, दैट मीन्स जो सिलेंडर है दैट इज गोइंग टू कनेक्ट, राइट? पिन इंडेक्स, 6 पिन इंडेक्स यू हैव टू रिमेंबर. कलर कोडिंग यू हैव टू रिमेंबर. सेकंड थिंग, इंटरमीडिएट, देयर विल बी डायमीटर इंडेक्स सेफ्टी सिस्टम. 4 कलर की पाइपलाइन यू हैव टू रिमेंबर. 4 कलर की पाइपलाइन होंगी. देयर वाइट डिस इज इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट द इनकरेक्ट अटैचमेंट. गलत नहीं लगा दे. किसी को चाहिए ऑक्सीजन, तुम दे रहे हो नाइट्रस ऑक्साइड, हंसते हंसते मर जाएगा, राइट? सो व्हाट विल हैपन, दिस थिंग्स विल हैपन, राइट? थर्ड थिंग इज गोइंग टू बी लो प्रेशर सिस्टम. वहाँ पर 4 वेपराइजर्स आर गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट. दैट इज गोइंग टू बी हेलो इज गोइंग टू बी फॉर रेड, ISO is going to be for purple, CO सूरज येलो होता है, that is going to be for the CO, and lastly desflurane, which is the vaporizer we are using, that is going to be your Tex 6 vaporizer. ठीक है? उसके बाद में हम लोग क्या कर रहे हैं, मशीन है हमारे पास में, पेशेंट है इंट्यूबेटेड, राइट? नाउ वी नीड टू कनेक्ट बोथ ऑफ देम, दोनों को कनेक्ट कर दो. दैट इज कनेक्शन इज विद द हेल्प ऑफ सर्किट. 6 तरीके के सर्किट पढ़े. हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट, सेमी क्लोज में वी हैव सीन 6 सर्किट्स, Mapleson A, B, C, D, E और F. Mapleson A is going to be spontaneous ventilation, also known as McGill circuit. Single tube will be there, right?
स्पॉन्टेनियस वेंटिलेशन, पेशेंट खुद सांस ले रहा है, मैं गिल्स लगा दो. बी और सी नॉट सो इंपॉर्टेंट. डी इज गोइंग टू बी फॉर द डी, सी डी याद रख लो, दैट इज गोइंग टू बी फॉर द कंट्रोल्ड वेंटिलेशन. यानी नाउ यू आर टेकिंग केयर ऑफ द वेंटिलेशन ऑफ द पेशेंट एंड दैट इज गोइंग टू बी फॉर द मेपल्सन. डी इट इज गोइंग टू बी द यूनिवर्सल सर्किट एंड इट इज ऑल्सो नोन एज बेन सर्किट. बेन सर्किट उसको कनेक्ट कर दो. ई का मॉडिफिकेशन एफ होता है. ई बैगलेस है, वॉल्वलेस है, यूजलेस है, राइट. तो ई का मॉडिफिकेशन है एफ. पीडियाट्रिक क्वेश्चन, यू हैव टू आंसर व्हाट, मेपल्सन एफ. ई वाला हो गया, एफ हो गया, राइट. फॉर द डी यू आर गोइंग टू मार्क इन द मोस्ट ऑफ द केसेस. अगर आप पेशेंट को लेके जा रहे हो, आपको ब्रीदिंग देना है पेशेंट को, यू विल बी यूजिंग मेपल्सन डी. दैट इज गोइंग टू बी फॉर द कंट्रोल्ड वेंटिलेशन एज वेल एज दैट इज गोइंग टू बी फॉर द दिस पर्टिकुलर थिंग. अपार्ट फ्रॉम दैट पेशेंट देख रहा है, तुमने कनेक्ट कर दिया, अभी दवाइयाँ नहीं दी है, दवाई देने से पहले पेशेंट देख रहा है कि सब कुछ क्या क्या रखा हुआ है वहाँ पर. सो देर आर सर्टेन मॉनिटर्स, वी आर हैविंग 5 मैंडेटरी मॉनिटर्स, 5 मैंडेटरी मॉनिटर्स हो गए. उसके अलावा सम डिजायर्ड मॉनिटर. बिस्ट वाला क्वेश्चन आता है, अगर हेड पे कुछ दे रखा है, दैट इज गोइंग टू बी बिस्ट. पल्स ऑक्सीमेट्री, 2 थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर. फर्स्ट इज अबाउट द law. What is the law that we are going to use? That is going to be law of plethysmography or Beer-Lambert's law. Law of plethysmography or Beer-Lambert's law. Okay. And second thing that you have to remember is about the this particular SpO2. SpO2 हो गया. स्वानगंज कैथेटर हम लोग कहाँ यूज में लेंगे? स्वानगंज. एनीवन ट्राई टू आंसर. स्वानगंज कैथेटर हम लोग कहाँ यूज में लेंगे? Alright, so this is what we have studied till now. सारे machines हो गए, सारे circuit हो गए. Now we are going to give drugs to the patient. अभी हम लोग क्या करेंगे? Now what we are going to do? We are going to give drugs to our patient. और drugs हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग जनरल एनेस्थीसिया दे सकते हैं, मतलब कंप्लीट बॉडी चला गया. ओके, जनरल एनेस्थीसिया दे सकते हैं, मतलब कंप्लीट बॉडी will be gone, right. Second thing, we can use spinal or regional, right. Spinal कर सकते मतलब second we can use is regional, okay. And third we can use local anesthesia. So this is what by far now we have discussed. Now we will be discussing about the other things. समझ में आ रहा है? Give me a quick confirmation whether you guys are understanding. The video will be long if I will give you the break. I will try to finish it up everything within like 30-35 minutes. I'll be asking questions here. Just give me a moment. All right. So now we are going to discuss about the general anesthesia, regional anesthesia or topical. General में we can have inhalational agents. Second we are having IV agents. Inhalational agents, IV agents will be there. Inhalational में क्या होगा? We are going to have haloisosivudase. IV में we are having opioids, we are having non-opioids. Opioids में we are having morphine, fentanyl और remifentanil. Non-opioids we are going to have propofol, etomidate, thiopentone, and ketamine. Thiopentone and ketamine. These are the 4 important ones that we have to remember. तो क्या याद हुआ? इनहेलेशनल में हेलोआइसोसिवुडेस, आईवी में ओपियोइड्स, मॉर्फिन, फेंटेनिल, सुफेंटेनिल, एल्फेंटेनिल, दैट इज गोइंग टू बी ओपियोइड्स. नॉन ओपियोइड्स में वी आर गोइंग टू हैव व्हाट? प्रोपोफोल, इटोमिडेट, कीटामीन और that is going to be thiopentone, right. Now we are going to discuss about the regional में हम लोग यूज में लेंगे. regional में we are going to use local anesthetic agents, right. So what are these local anesthetic agents? They can be amide, they can be ester. ये किस में डिवाइड है? ये amide हो सकते हैं बच्चों, ये ester हो सकते हैं. amide में we are going to see local anesthesia. You always use what? Lignocaine. Drugs like lignocaine, bupivacaine. So these are going to be your amides. In the ester part, we are going to see about the cocaine, procaine, prilocaine, benzocaine. So these are going to be your cane group of drugs. देखो कैसे याद रखना है. अमाइड में आई आ रहा है, so this thing will be having double I.
these things will be having double I, इनमें सब में double I होगा, ईस्टर में single I होगा, सब में ईस्टर will be having only cane, right? Lastly we are having मसल रिलैक्सेंट्स. मसल रिलैक्सेंट्स दो तरीके के होते हैं. वन इज डीपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट, सेकेंड वन इज योर नॉन डीपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट. डीपोलराइजिंग मतलब क्या हो गया, किसी भी सेल को स्टिमुलेट करना. मतलब व्हाट इज द फंक्शन, इफ आई वांट टू कॉन्ट्रैक्ट दिस मसल, व्हाट आई विल बी डूइंग, आई विल बी सिक्रेटिंग फ्रॉम हियर टू हियर, व्हाट इज गोइंग टू कम, एसिटाइल कोलिन. सो डीपोलराइजेशन मतलब क्या हो गया, एसिटाइल कोलिन के जैसा कुछ दे दो, दैट इज गोइंग टू बी सक्सिनाइल कोलिन, उसका भाई, राइट. एंड सेकेंड थिंग, नॉन डीपोलराइजिंग विल बी हैविंग कुरोनियम, कुरारे group of drugs, curare, atracurium, cisatracurium. So this is what we are going to discuss here. This is the short thing that we will be focusing on, right? So we are going to see general, we are going to see regional, we are going to see muscle relaxants, right? The regional local anesthetics अलग है, muscle relaxants अलग है, right? So now we are going to discuss about the first thing. First thing that we are having is what we are having is, we are having first thing that is going to be halothane. Remember halothane, IV inhalation से start करते हैं. First thing is going to be halothane. Halothane is going to be utilized for रेस्पिरेटरी सर्जरीज. इट इज गोइंग टू बी एजेंट ऑफ चॉइस इन रेस्पिरेटरी सर्जरी. देखो सिंपल जो क्वेश्चन पूछते हैं, वी आर गोइंग टू फोकस ऑन दैट. ये कहाँ पर दे रहे हैं हम लोग, रेस्पिरेटरी में दे रहे हैं, बिकॉज इट इज़ अ गुड ब्रोंको डायलेटर. इसकी खुशबू अच्छी होती है. इट इज़ अ गुड ब्रोंको डायलेटर, इट इज़ अ गुड ब्रोंको डायलेटर. सो वी आर यूजिंग इट अंडर द in the cases of surgeries which is for the respiratory system, right? Second, it is contraindicated in neurosurgeries because it can cause what, increase in intracranial tension. तो इसको नहीं देना है. और hepatic, ये autoimmune hepatitis कराता है. Halothane is responsible for autoimmune hepatitis. These are the by far questions that are coming again and again. इन्हीं को repeat करके पूछता है. तो हेलोथेन के बारे में तीन चीज़ें याद कर लो. वन, इट इज़ गोइंग टू कॉज ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस, H4 हेलोथेन, H4 हेपेटाइटिस, contraindicated in neurosurgeries because it is going to increase the ICT. Third thing, agent of choice in the respiratory surgeries. Next one we are going to have is going to be isoflurane. Isoflurane is going to be irritant to the inhalational, to the respiratory thing, right? And third thing, you are going to find a special phenomena that is going to be coronary steal phenomena. Coronary steal phenomena कहाँ मिलेगा, और reverse Robinot phenomena with the isoflurane. सीवो के बारे में क्या याद रखना है, it is a nephrotoxic compound. सीवो is a nephrotoxic compound, but it is having sweet smell. It is having sweet smell, so it is going to become the agent of choice. इंडक्शन एजेंट ऑफ चॉइस. देखो एनेस्थीसिया देने से पहले क्या करोगे आप, इंड्यूस करोगे. पहली चीज होगी इंडक्शन, देन यू विल बी गिविंग व्हाट, देन सेकंड थिंग यू विल बी डूइंग मेंटेनेंस, एंड थर्ड थिंग विल बी रिवर्सल. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट थिंग विल बी प्री ऑक्सीजनेशन. सबसे पहले किसी को कुछ भी देने से पहले प्री ऑक्सीजनेट कर दो. देन यू विल बी इंड्यूसिंग अ पेशेंट, उसको इंड्यूस करोगे, एंड देन यू विल बी मेंटेनिंग द पेशेंट, एंड देन यू विल बी रिवर्सिंग द पेशेंट. ये पूरा स्टेप होता है, ठीक है. तो वी आर गोइंग टू डू इंडक्शन एजेंट ऑफ चॉइस इज गोइंग टू बी योर सीवोफ्लोरिन. इट विल बी हैविंग स्वीट स्मेल, राइट. सो स्वीट स्मेल है तो एजेंट ऑफ चॉइस इन चिल्ड्रन. तो बच्चों में क्या करना है, बच्चों को इंजेक्शन से डर लगता है, क्या करोगे, सीधा सीवोफ्लोरिन रख दोगे. मीठा मीठा लगता है, स्वीट है इसकी स्मेल. सो व्हाट विल हैपन, पेशेंट विल बी इंड्यूस्ड, राइट. उसके बाद में इसी पे भी मेंटेन कर लो. अगर चाहते हो डेस्फ्लोरिन पे डालना है तो डेस्क पर भी मेंटेन कर सकते हो, राइट. इट इज गोइंग टू बी अ ब्रोंकोडाइलेटर, राइट. डेस्फ्लोरिन इज गोइंग टू बी इरिटेंट, इट इज गोइंग टू बी इरिटेंट, तो इससे इंड्यूस नहीं कर सकते. बट दिस इज गोइंग टू बी द मेंटेनेंस एजेंट ऑफ चॉइस है. मेंटेनेंस एजेंट ऑफ चॉइस है. ओबेस पेशेंट में वी कैन यूज दिस पर्टिकुलर थिंग. ओबेस पेशेंट, इट इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी विल बी यूजिंग, राइट. सो दीज आर द 4 थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर अबाउट द इनहेलेशनल पार्ट. अब इसके क्वेश्चन कर लेते हैं. इनहेलेशनल पार्ट में व्हाट आर द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड. लुक हियर, व्हाट इज द प्रीफर्ड ड्रग फॉर इंड्यूसिंग एनेस्थीसिया इन children? Inducing anesthesia children में your answer will be straight away directly it is going to be your sevoflurane. Halothane we can use, but it has a side effect, halothane hepatitis, right. Which of the option listed below can be utilized for the purpose of inducing anesthesia, sustaining it, and safely perform the endotracheal intubation? Again, इंड्यूसिंग की बात जब भी आएगी, जस्ट अंडरस्टैंड द कीवर्ड.
whenever you are going to think in the terms of inducing, तो दो ऑप्शन तो वैसे ही कट जाते हैं. वन इज गोइंग टू बी इरिटेंट, दैट इज गोइंग टू बी आइसो, एंड सेकंड इरिटेंट इज गोइंग टू बी डेस्फ्लोरेंट. तो इंडक्शन में दो ही चीज़ें काम आ सकती है. वन इज गोइंग टू बी हेलोथेन, सेकंड इज गोइंग टू बी सीवोफ्लोरिन. सो व्हाट यू नीड टू रिमेंबर, अगर किसी को सेफली कुछ देना है, दैट इज गोइंग टू बी सीवो, दैट इज गोइंग टू बी sevoflurane, right? Which of the following options below is not employed for initiating anesthesia in pediatric patient? किसको pediatric patient को क्या नहीं देना है? Yes, क्या नहीं दे सकते? Halothane, yes, we can use it as a sweet smell, right? Second thing, desflurane, sevo we can use, it is also having a sweet smell. Nitrous oxide भी ठीक रहता है, but we already know this desflurane is going to be irritant. This desflurane is going to be irritant, so we are going to avoid desflurane. Very good, Sean Parker, right? Next we are having which inhalational agent is best suited for patient with compromised cardiac functioning? Compromised cardiac functioning में कौन सा best रहेगा? Yes, we can use both of them. We can use iso as well as we can use desflurane. In fact, this desflurane is going to be a little bit better in this particular case. So cardiac patients, you can use iso, you can also use iso or desflurane. You can use iso or desflurane, because this desflurane is going to have rapid onset and rapid offset, and both of them are going to be cardiostable. Both of them are going to be cardiostable. Both of them are going to be cardiostable, right? Which anesthetic agent from the option provided is known to cause toxicity of the liver? So these are all your previous year question I have incorporated. These are looking similar because you have studied now, but if you have not studied, these are going to be difficult. Exam is a pressure cooker situation. Lots of subjects, 19 subjects, lots of things will be in your mind. You will tend to get confused, right? So questions will be simple, right? So what is going to be your answer here? Your answer will be simple straight away. It is going to be halothane. It is going to cause autoimmune hepatitis. It is going to be autoimmune hepatitis. Okay, so now we are going to discuss about the IV anesthetic agent. IV anesthetic agent में we have seen two classes. One is going to be opioids, another one is going to be non-opioids. तो opioids में क्या देखा था? We have seen morphine, sir, remifentanil, sufentanil, alfentanil, right? These are going to be opioids. Non-opioids, we have seen 4: propofol, etomidate, thiopentone and ketamine. These are the 4 that we have seen, right? So now opioids के अंदर क्या चीज़ याद रखनी है? Remember, they are very very cardiovascular stable. Opioids, even if I am teaching you this particular thing in pharma or physio, wherever I am teaching you the same thing, they are going to cause respiratory depression. Very very important. Someone is cancer patient is taking morphine, definitely this thing is going to cause respiratory depression, and it is also going to cause constipation. So tabhi to you guys are taking what? Loperamide. It is a opioid, right? So these things are having this side effect, right? Respiratory depression and constipation are the common side effect for opioid that are going to be present all over, right? But they are CVS stable. They are CVS stable, right? They are going to be CVS stable. Let's try to understand. Then we are having these non-opioids. These non-opioids like thiopentone, propofol, etomidate and ketamine. Let's discuss about one by one, right? This is going to be your thiopentone. Thiopentone is a barbiturate. It is going to be a barbiturate. Barbiturate मतलब it is going to increase the GABA. GABA बढ़ा देगा. GABA से क्या होगा? It is going to depress the brain, right? It is going to be coming in the yellow powder and can be used for narcoanalysis. Narcoanalysis पढ़ाया था मैंने फिजियो में. That is going to be decreased in the cognition. आपका cognition कम हो जाएगा. Cognition कम हो जाएगा तो whatever you know, filters will be gone. जो भी कुछ दिमाग में है, you will be speaking out, and that is why it is known as truth serum. क्यों बोलते हैं इसको truth serum? Right? It is going to be the fastest, and the time period is going to be 11 to 14 second. One arm circulation 11 to 14 second. But remember two important things. It is contraindicated in the patients of bronchial asthma, and second in the patients of porphyria. These two things you have to remember. Porphyria का patient है, bronchial asthma का patient है. Okay, you need to avoid what? Thiopentone. This is going to be your thiopentone. Second one in the list we are going to have is going to be your propofol. This is going to be your propofol.
प्रोपोफॉल में तीन चीज़ें याद रखनी है, एग्स याद रख लो, एग्स, इट विल बी हैविंग एग, इट विल बी हैविंग एग लेसिथिन, तो अगर किसी को एग से एलर्जी, वी आर नॉट गोइंग टू यूज प्रोपोफॉल। सेकेंड थिंग, जी फॉर ग्लिसरॉल एंड एस फॉर सोयाबीन, तो ग्लिसरॉल, एग लेसिथिन और सोयाबीन एलर्जी पेशेंट वी आर गोइंग टू अवॉइड इट। और इसके अंदर ये तीनों चीज़ें पड़ी हुई है, इसके अंदर अगर तीनों चीज़ें पड़ी हुई है तो इट इज़ गोइंग टू गिव पेन ड्यूरिंग इंजेक्शन। इसकी वजह से क्या होगा, सोयाबीन इज अ ऑयल, राइट, इट इज़ गोइंग टू गिव पेन ड्यूरिंग इंजेक्शन। दीज आर गोइंग टू बी एजेंट ऑफ चॉइस इन मल्टीपल थिंग्स। मिल्की वाइट सॉल्यूशन होता है इसका, प्रोपोफॉल देखा होगा, डे केयर सर्जरी में डेली कॉमनली यूज थिंग है। एजेंट ऑफ चॉइस इन द केसेस ऑफ मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, हमने क्वेश्चन किया था मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया का, एक्सेप्शन था दिस प्रोपोफॉल। इट इज़ गोइंग टू हैव एंटी एमेटिक प्रॉपर्टी, यानी सर्जरी के बाद में इट कैन बी यूज्ड एज एंटी एमेटिक थिंग, राइट। न्यूरो सर्जरीज वी कैन यूज दिस पर्टिकुलर थिंग। लिवर और किडनी डैमेज है अगर किसी के, we can definitely do a surgery with the propofol. And day care surgery, the agent of choice is definitely going to be propofol. day care मतलब पेशेंट सुबह आ रहा है शाम को और नेक्स्ट डे मॉर्निंग ही इज गेटिंग द डिस्चार्ज। दिन भर की सर्जरी है, थोड़े टाइम की सर्जरी है, 6-5 जो भी टाइम है, 2-3-4-5 घंटे की, दैट इज गोइंग टू बी डन विद द हेल्प ऑफ दिस इज प्रोपोफॉल, राइट। बट इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन द शॉक पेशेंट, अगर किसी को हाइपोवोलीमिया है, अगर किसी का वॉल्यूम कम है, राइट, हाइपोवोलिमिक शॉक है, कार्डियोजेनिक शॉक है, उन पेशेंट्स में वी आर गोइंग टू अवॉइड व्हाट, वी आर गोइंग टू अवॉइड propofol, we are going to avoid propofol. In those patients we are going to use this particular thing, that is going to be ketamine. Ketamine, it is a thing, it is a best bronchodilator, it is a best bronchodilator. ketamine जो है वो best bronchodilator है and it is having sympathomimetic action. now you must be understanding, शॉक वाले पेशेंट में हम लोग ड्रग ऑफ चॉइस क्या देते हैं, शॉक में क्या हो गया, हाइपोवोलीमिया हो गया, तो what we need to do, we need to do vasoconstriction, and you already know sympathetic nervous system is going to cause vasoconstriction, alpha 1 vasoconstriction, alpha 2, beta 1, beta 2, right. So these are the drugs, it is a sympathomimetic drugs, it is the agent of choice in the shock patient. Bronchial asthma, beta 2 agonist activity, bronchial asthma, it is the agent of choice, right. It is going to cause analgesia and it is also going to cause a special type of anesthesia. This is known as dissociative anesthesia. पेशेंट जागा रहता है, देखता रहता है सब कुछ, बट स्टिल द पेशेंट इज नॉट फीलिंग द पेन, दैट इज द डिसोशिएटिव एनेस्थीसिया. बट इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन दोज पेशेंट्स हु आर हैविंग हाइपर एक्टिविटी, पहले से ही हाइपर टेंशन है, सिंपैथोमाइमेटिक दे दिया, क्या हो जाएगा, हाइपरटेंसिव क्राइसिस विल बी देयर. एपिलेप्सी का पेशेंट है, तुमने दे दिया, क्या होगा, पहले से ही ब्रेन इज ऑलरेडी मोर एक्टिव, व्हाट विल हैपन, यू विल बी हैविंग इंक्रीज इन आईसीटी, पेशेंट विल बी हैविंग प्रॉब्लम्स, राइट. ग्लाउकोमा पेशेंट्स में अवॉइड करना है, तो तीन चीज़ें याद रखनी है. बेस्ट ब्रोंकोडाइलेटर इज कीटामीन, राइट, एजेंट ऑफ चॉइस इन शॉक. what we cannot use in shock we cannot use propofol, no, mostly we are using propofol. Lastly we are having what, we are having etomidate, coming in the name of emidate or etomidate. It is going to be CVS stable, remember it is going to be CVS stable, but it is contraindicated in adrenal suppression. ये जो मैंने points mark कर रहे हैं, these are the important points that has been asked in your examination. ये सारे questions आ चुके हैं, right. So I'm focusing on the most important crisp content. बाकी सारी बहुत सारी चीज़ें बढ़ने के लिए, but I'm focusing on the important thing that can be asked, likely asked, right. So this is contraindicated in the एड्रिनल सप्रेशन. एड्रिनल सप्रेशन का अगर कोई पेशेंट है, वी आर नॉट गोइंग टू गिव व्हाट, इटोमिडेट. इटोमिडेट इज द थिंग वी आर नॉट गोइंग टू गिव इन एड्रिनल सप्रेशन पेशेंट, राइट. सो जस्ट लुक थ्रू दिस टेबल एंड देन वी आर गोइंग टू सॉल्व सर्टेन क्वेश्चंस, राइट. फर्स्ट, थायोपेंटोन के बारे में क्या पढ़ा, नार्को एनालिसिस, फास्टेस्ट contraindicated in porphyria, bronchial asthma. Second, this propofol painful injection. Milky white, agent of choice in malignant hyperthermia, एंटीमेटिक, न्यूरोसर्जरी, लिवर, किडनी, डे केयर, एवरीथिंग. व्हाट यू नीड टू रिमेंबर, कब नहीं देना, शॉक में नहीं देना. शॉक में क्या दोगे, कीटामीन दोगे, सिंपैथोमाइमेटिक होता है, डिसोशिएटिव एनेस्थीसिया करवाता है, राइट. अगर पेशेंट को सीवीएस स्टेबल कुछ देना है, दैट इज गोइंग टू बी योर एमिडेट और इथोमिडेट. बट रिमेंबर, कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन एड्रिनल सप्रेशन, अगर किसी को एड्रिनल सप्रेशन है तो नहीं देना है, right. Now try to solve the question, which of the following intravenous anesthetic agent does not result in myocardial depression. myocardial depression कौन सा नहीं कराता है, मतलब क्या, CVS stable कौन सा है, CVS stable कौन सा है, which one is the CVS stable they want to know.
Yes. Give me your answer. Which one is the CVS stable? CVS stable one is going to be your. Is it going to be your etomidate? Is it going to be your propofol, thiopenton, or ketamine? Yes, my dear doctors. Very good, Sean Parker. That is going to be your etomidate. That is going to be your etomidate. Cardio stable is going to be etomidate. ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं and I really hope you are able to make them correct, right? Propofol के बारे में we have discussed. It is going to be milky white. It is going to be एक EGS याद रखना है इसके बारे में, and day care surgery. All these things will be positive, but the shock patient we should not give. Shock patient में क्या देना है? If they ask you patient is having shock, you will be giving a sympathomimetic drug that is going to be your ketamine. Which of the following agent does not cause pain when injected? कौन सा दर्द नहीं करता है? Remember, propofol, etomidate, thiopenton, all of them are what kind of solution? Milky white solution. Milky white, this is going to be a milky white solution. This is going to be yellow powder. Everything is going to be painful. What is not going to be painful is going to be your ketamine. लोग इसको मज़े के लिए लेते हैं ketamine. Some people are taking this is a illicit drug. Some people are even using it for the fun, right? So that is going to be your ketamine. Which of the following is the absolute contraindication to the use of morphine? Morphine किसको नहीं देना? Absolute contraindication they are asking. Remember, absolute contraindication for morphine is not the bronchial asthma. Is not the bronchial asthma. Bronchial asthma patient में we can even use morphine, right? But in the patient who is having head injury, because this particular thing is going to increase your ICP. Respiratory depression कराता है, but this particular thing is going to increase your ICP, and ICP is going to increase intracranial pressure or intracranial tension बढ़ेगा, and this patient will be having problem, right? So in the patients of head injury we are avoiding what? Morphine. ये भी याद रखना है. We are avoiding morphine, right? We are avoiding morphine. For a patient with cardiac disease, which of the following induction agent would be most suitable? Cardiostable, again they want to know. This is again question, they have repeated the same question. This is going to be your etomidate, cardiostable patient, cardiac surgeries, cardiac disease. This is going to be your etomidate, right? For daycare anesthesia, what is the preferred intravenous induction agent? Daycare surgeries में क्या दोगे? What would you like to give? Yes, wonderful. You would like to give propofol. Propofol is the agent of choice in daycare surgeries. अगर patient को shock होता, if the patient is having shock, would you like to use this propofol? No, we cannot use propofol in the daycare surgery, right? We cannot use propofol in the shock patient, right? Next, which inducing agent is most likely accountable for the patient's hallucination and vivid dreams during recuperation phase of following anesthesia? Yes. So hallucination किस में होता है? Hallucination is seen with the ketamine. Remember guys, hallucination is seen with the ketamine. Ketamine की वजह से क्या होगा? Ketamine की वजह से dissociative type of anesthesia, and you can also have hallucinations in the patients, right? Now we are going to see about the local anesthetic drugs. Local anesthetic drugs में क्या होगा? There will be stoppage of impulsion. There will be stoppage of transmission of impulses locally. So let me give you simple understanding. हम लोगों ने न्यूरॉन पढ़ा था. न्यूरॉन में से क्या होता है? एक्सोन होता है. दिस एक्सोन इज कमिंग आउट एंड these are going to be your dendrites. ये साथ में dendrites होता है, राइट? तो यहाँ पर जो ये एक्सोन होता है, यहाँ पर हम आई हैव टॉट यू अबाउट द सोडियम चैनल्स. दीज आर गोइंग टू बी सोडियम चैनल्स. सोडियम अंदर जाएंगे, डिपोलराइजेशन कराएंगे, उसकी वजह से इम्पल्स आगे बढ़ेगी. नाउ दिस लोकल एनेस्थीसिया आर गोइंग टू इनहिबिट दिस सोडियम चैनल्स. अगर सोडियम चैनल नहीं चल रहे हैं तो क्या डिपोलराइजेशन होगा? नहीं होगा. आई हैव टॉट यू इन द फिजियोलॉजी, विदाउट सोडियम देर विल बी नो डिपोलराइजेशन. इफ देर विल बी नो डिपोलराइजेशन, डिपोलराइजेशन का मतलब क्या था? एक सेल डिपोलराइज होगा, पॉजिटिव होगा, तभी अगले सेल में ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन होगा. तो क्या यहाँ पर इम्पल्स ट्रांसमिट होगी? नहीं होगी. अगर इम्पल्स ट्रांसमिट नहीं होगी तो पेन क्या ऊपर जाएगा? नहीं जाएगा. पेन नहीं जाएगा. ना तुम्हारे एंटीरियर लेटरल और लेटरल स्पाइनोथैलेमिक पाथवेज काम करेंगे. एंटीरियर विल बी टेकिंग व्हाट? एंटीरियर विल बी टेकिंग क्रूड टच. कल भी पढ़ा था, राइट? एंड पेन एंड टेम्परेचर बाय लेटरल पाथवे. तो लेटरल पाथवे भी काम नहीं करेगा. व्हाट इज गोइंग टू हैपन? यू आर गोइंग टू हैव नो सेंसेशन विल बी देयर, राइट? नो सेंसेशन. सो स्टॉप ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस locally
इट विल बी ब्लॉकिंग द सोडियम चैनल। क्वेश्चन पूछते हैं कौन से सोडियम चैनल को ब्लॉक करते हैं। रिमेंबर ओपन सोडियम channels are going to get blocked, and we are adding this particular drug with the adrenaline. What do you know about adrenaline? It is going to be alpha 1, alpha 2, beta 1, beta 2. It is going to work on all the receptor, and it will be majorly causing what? Vasoconstriction. It will be majorly causing what? Vasoconstriction. और vasoconstriction होगा तो क्या होगा? ये ड्रग जो हम लोकली दे रहे हैं, वट एवर ड्रग्स आई एम गिविंग यू लोकली, वो लोकली काम करेगी, वो ब्लड वेसल के अंदर नहीं जाएगी। अगर वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन रहेगा तो वो अंदर नहीं जाएगी, बिकॉज दिस कॉन्सेप्ट आई हैव ऑलरेडी टॉट यू कि जब भी वेसल डायलेट होगी तब उसके अंदर से कुछ निकलेगा, कुछ ना कुछ बाहर जाएगा। सो वेसल इज नॉट डायलेटेड, व्हाट विल हैपन? वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन से क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये जो ड्रग है वो लोकली पड़ी रहेगी और वो ड्रग ब्लड वेसल के अंदर नहीं जाएगी और सिस्टमिक टॉक्सिसिटी कॉज नहीं करेगी, राइट? So we are having two things. One is going to be your ester, another one is going to be your amide. Esters में क्या होगा? Single I will be there. Amides में क्या होगा? Double I will be there. Can you appreciate this double I? Amide में खुद में I आता है तो you will be looking for double I. Lignocaine will be having these double I. Prilocaine, these double I will be there, right? So what are the esters we are having? We are having cocaine, procaine, and chlorprocaine. Cocaine, procaine, chlorprocaine, right? And what are the amides we are having? Amides will be having, remember, double I will be there in the amides. So we are having lignocaine, prilocaine, benzocaine, bupivacaine, all these cane will be there, right? How these things are going to get metabolized? All the amides will be having what? Hepatic metabolism. Remember, all the amides will be having what? Hepatic metabolism, and all the esters will be having metabolism with the help of pseudocholinesterase. Pseudocholinesterase is an enzyme, but the cocaine is the exception. The cocaine is the exception, and exception is the question, right? Cocaine is the exception. Cocaine will be having what? Cocaine will be having hepatic metabolism. Cocaine will be having what? Hepatic metabolism will be there, right? What are the features you should be remembering about cocaine? कोकेन की वजह से वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है, और वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन के साथ साथ क्या हो जाता है? हाइपरटेंशन हो जाता है. दोज पीपल हु आर स्नफिंग द कोकेन, what can happen? Vessels will get contracted, they can have septal formation, right? They can have septal formation. This is your cocaine vasoconstrictor. It can even cause hypertension. Shortest acting agent will be ester or amide में से shortest acting, remember, that is going to be your chlorprocaine. शॉर्टेस्ट एक्टिंग फ्रॉम ऑल ऑफ देम विल बी क्लोरप्रोकेन. बोलो मेरे साथ में, शॉर्टेस्ट एक्टिंग कौन सा होगा? लोकल एनेस्थेटिक्स वी आर डिस्कसिंग, शॉर्टेस्ट एक्टिंग विल बी क्लोरप्रोकेन. विच वन इज द लॉन्गेस्ट एक्टिंग? दैट इज गोइंग टू बी बचे डिबुकेन. डिबुकेन लंबा चलेगा, राइट? सेफेस्ट इज गोइंग टू बी, वी आर यूजिंग एवरी टाइम, दैट इज गोइंग टू बी लिग्नोकेन. And most cardiotoxic, if they want to know, that is going to be bupivacaine. Bupivacaine is the most cardiotoxic one. Most cardiotoxic is going to be bupivacaine, right? What are the complications that can happen after local anesthesia? So these are known as local anesthesia systemic toxicity. What you will be finding? You will be having tinnitus, you will be having perioral numbness will be there. CVS में क्या कॉम्प्लिकेशन मिलेगी? यू कैन हैव अरिथमियास, यू कैन इवन हैव कार्डियक अरेस्ट. कार्डियक अरेस्ट मतलब नॉट हार्ट फेलियर, नॉट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन. कार्डियक अरेस्ट मतलब दिल बिल्कुल बंद हो गया, हार्ट इज कंप्लीटली स्टॉप्ड. यू विल बी डूइंग CPR हियर, यू विल बी डूइंग CPR हियर. व्हाट इज द ट्रीटमेंट? ट्रीटमेंट के ऊपर क्वेश्चन आता है. द ट्रीटमेंट विल बी 20% इंट्रालिपिड इमल्शन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मल्टीपल टाइम्स आस्क्ड क्वेश्चन है. For the local anesthesia systemic toxicity, you will be giving 20% intralipid emulsion. Okay, so what are the things we have discussed in local anesthesia? ये क्या करेंगे? सोडियम चैनल को बंद कर देंगे. सोडियम चैनल बंद मतलब इम्पल्स बंद. लोकली दे रहे हो, लोकली इम्पल्स बंद हो जाएगा. ईस्टर्स कैन बी देयर, अमाइड कैन बी देयर. बेटा ईस्टर्स में कोकेन, प्रोकेन और क्लोरप्रोकेन हो गया. अमाइड में डबल आई वाली चीज़ आ गई. शॉर्टेस्ट एक्टिंग क्वेश्चन पूछा, दैट इज गोइंग टू बी क्लोरप्रोकेन. Longest is going to be dibucaine, safest is going to be lignocaine, or most cardiotoxic bupivacaine. Right? About complication, we are having last CNS symptom दे देंगे. Patient is having tinnitus, there will be numbness, perioral numbness. Okay, ऐसा कोई symptom दे देंगे. You have to think in the terms of last.
राइट। CVS का कोई सिम्टम दे देंगे, पेशेंट इज हैविंग आफ्टर टेकिंग अ ड्रग, पेशेंट इज हैविंग अरिथमिया, पेशेंट इज हैविंग व्हाट, cardiac arrest. You have to think in the terms of last. The treatment for last is going to be 20% intralipid emulsion. First thing you will always do is to stop the drug. Second thing, here in this particular case you can give intralipid, you can also do CPR. Sorry. What about the uses? What are the uses we are going to use? Topical. What are the uses? You have to remember these topical drugs. We are having topical local anesthetics like amla. What is amla? इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, what is amla? So remember, amla is the eutetic mixture of local anesthetics. इसमें दो चीज़ें मिलाएंगे, one is lignocaine, second one is your prilocaine. दोनों चीज़ें मिलाएंगे, lignocaine और prilocaine. कंसंट्रेशन क्या रखना है? कंसंट्रेशन रिमेंबर रखना है 1:1. 2.5% लिग्नोकेन डालेंगे, 2.5% प्राइलोकेन डालेंगे और स्किन के ऊपर लगा देंगे. दैट इज गोइंग टू बी योर टॉपिकल एनेस्थीसिया. कब लगाते हैं? फॉर एग्जांपल आई वांट टू डू अ कैनुलेशन, तो थोड़ी देर पहले लगा दिया कैनुलेशन से. आफ्टर दैट इफ आई एम डूइंग कैनुलेशन, व्हाट विल हैपन? कैनुला लगाऊंगा तो क्या पेन होगा? नहीं होगा. यहाँ के लोकली जो नर्व फाइबर्स है, दोज फाइबर्स विच आर कैरिंग द इम्पल्स, उनमें क्या हो गया? उनमें ट्रांसमिशन बंद हो गया. सोडियम चैनल, ओपन टाइप सोडियम चैनल खत्म. राइट, ओपन टाइप सोडियम चैनल बंद, ट्रांसमिशन बंद, no pain will be perceived. Right. Next we are having infiltration. Infiltration means अगर dental extraction करना है, tooth extraction करना है, or maybe you need to do RCT, what you can do, you can apply the drug near the nerve fiber. कौन सी drugs डालोगे? These are the drugs that we are having. These are local anesthetic drugs. वो नहीं डालेंगे, IV agents नहीं डालेंगे, inhalational propofol, etomidate नहीं डालेंगे. That should be given intravenously. These are your लोकल एनेस्थेटिक्स. राइट, ये कहाँ डालना है? ये अराउंड द नर्व फाइबर डालना है लोकली. राइट, सो वी कैन यूज infiltration method. The drugs is going to be deposited around the nerve fiber. We can use chlorprocaine, dibucaine, lignocaine, bupivacaine, कोई सा भी यूज में ले सकते हो. राइट. Then we are having regional anesthesia. Local पढ़ लिया, general पढ़ लिया. Now lastly we are having regional anesthesia. Regional में we have discussed about two things. One, whatever is in the center is going to be central neuraxial blockade. Whatever is going to be in the periphery, that is going to be peripheral neuraxial blockade. So let's discuss on the central one first. Right, in the central one we are going to have, the first thing is going to be your spinal anesthesia. Spinal, I have told you, spinal मतलब spine के नीचे वाला part will be gone. Right, epidural, it will be covering some part above also. Right, so what you need to remember? Spinal, you need to remember about the where we are going to put the drug. We are going to put the drug into cerebrospinal fluid. सीधा एंट्री करेंगे. एंट्री का रूट पे क्वेश्चन आता है. सीधा एंट्री करेंगे और ड्रग कहाँ पर डालना है? CSF में डालना है. CSF के अंदर ड्रग डालना है. एंड इट इज गोइंग टू बी a one shot technique. It is going to be a one shot technique, less toxic. It is going to be fast and going to be utilized for a short term surgery. 1 to 2 hour की surgery है. We can use spinal anesthesia. What about this epidural? Epidural, above the dura. What are the layers we are having? Dura. Dura will be dur. Right, we are having arachnoid, we are having pia. Pia pass होता है दिल के. Right, so this is going to be pia. Pia matter, arachnoid, arachnoid matter, dura matter. Dura के ऊपर अगर ड्रग डाल रहे हो, that is going to be your epidural space. And these are the drugs. Drugs will be given in the epidural space. The drug should be given in a continuous manner. आपको catheter डालना पड़ेगा and you need to give drug continuously. Right, this can cause more toxicity. This is a slow process and it can be sustained for long term surgeries. Right, long term surgeries. long term मतलब 7 से 8 घंटे की सर्जरी. अगर किसी को डिलीवरी करानी है, अराउंड द टाइम ऑफ डिलीवरी, व्हाट विल हैपन? पेशेंट को पेन होता है, एनाल्जेसिया देना पड़ता है. राइट, सो इन दैट पर्टिकुलर केस वी कैन यूज व्हाट? एपिड्यूरल टाइप ऑफ एनेस्थीसिया. एपिड्यूरल टाइप ऑफ एनेस्थीसिया. व्हाट इज द नीडल दैट वी आर गोइंग टू यूज? वी आर गोइंग टू यूज हियर टू ही नीडल. देखो नीडल के ऊपर क्वेश्चन आता है. दिस वन इज गोइंग टू बी योर स्पाइनल नीडल. दीज आर गोइंग टू बी योर स्पाइनल नीडल. कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे? स्पाइनल नीडल आर विल नॉट हैव दिस पर्टिकुलर थिंग. स्पाइनल नीडल्स will not have wings. These wings are going to be present in your 2E needle. Can you appreciate there is any wing? There is not going to be any wing. So spinal needles are wingless needles. Second thing, you will be having certain markings. Can you appreciate these markings? These markings are going to be present on 2E needle. These markings are going to be present on
टू ही नीडल, ये मार्किंग कहाँ पर होंगी, टू ही नीडल में होंगी। क्या है ना, स्पाइनल नीडल्स में ये होंगी नहीं, स्पाइनल नीडल्स में ये मार्किंग्स एब्सेंट होंगी, दिस मार्किंग्स आर गोइंग टू बी एब्सेंट। सेकेंड थिंग, दिस पर्टिकुलर थिंग, विंग्स इज गोइंग टू बी एब्सेंट इन द स्पाइनल नीडल। तो दो चीज़ें समझ में आई, स्पाइनल में विंग्स नहीं है, मार्किंग्स नहीं है। ओके, and in this particular thing, epidural, we are going to have markings, we are going to have wings, right? स्पाइनल में और चीज़ याद रखनी है, दैट इज गोइंग टू बी, वी आर हैविंग ड्यूरा कटिंग नीडल्स, लाइक वी आर हैविंग क्विंकी, वी आर हैविंग विटकेयर, वी आर हैविंग स्प्रोटी। देखो, ड्यूरा कटिंग विल बी हैविंग क्विंकी, क्विंकी में क्या होगा, पूरा एंड तक है, right? Whitcare, there will be a space, there will be a space, and Sproti, there will also be a space, right? That is going to be pencil pin point needles will be there, right? Roots के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं, ये बेसिक डिफरेंशिएशन के बाद में सेकंड क्वेश्चन दे विल बी आस्किंग ऑन द रूट्स। रूट्स विल बी, व्हाट इज द रूट दैट यू हैव टू रिमेंबर। देखो, स्किन के अंदर जब भी आप एंट्री करोगे, वेन एवर यू आर गोइंग टू एंटर फ्रॉम द बैक साइड, पीछे से जब आप एंट्री करोगे, फर्स्ट थिंग यू विल बी हैविंग इज गोइंग टू बी योर स्किन। Skin, after the skin there will be subcutaneous fascia, there will be supraspinatus ligament, this is your skin, this is going to be supraspinatus ligament, then there will be intra, दोनों के बीच का ligament आएगा, then there will be intraspinous ligament, and then there will be ligamentum flavum, ligamentum flavum will be there, this particular structure, then you will be having durometer, arachnoid, subarachnoid, and below subarachnoid will be what, बिलो सब एरेक्नोइड विल बी CSF, और उसके नीचे क्या होगा, उसके नीचे होता है पिया, राइट? सो हियर यू विल बी हैविंग CSF। CSF तक अगर हम जा रहे हैं तो कौन सा एनेस्थीसिया दे रहे हैं, सॉरी, CSF तक अगर हम लोग जा रहे हैं, वी आर गोइंग टिल द CSF, वी आर यूजिंग व्हाट, वी आर यूजिंग स्पाइनल एनेस्थीसिया। अगर एपिड्यूरल स्पेस के ऊपर ही रुक गए, दैट इज गोइंग टू बी एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। सो क्वेश्चन दे विल बी आस्किंग यू, दे विल बी गिविंग यू द सीक्वेंस देख के क्वेश्चन पूछते हैं। सो जस्ट रिमेंबर विद मी हियर इटसेल्फ, जस्ट रिमेंबर विद मी, वी आर हैविंग सबक्यूटेनियस फेशिया, स्किन, सबक्यूटेनियस फेशिया, सुप्रास्पाइनस लिगामेंट, सुप्रास्पाइनस लिगामेंट बाहर वाला, उसके बाद में दोनों के बीच वाला, दैट इज गोइंग टू बी इंट्रास्पाइनस लिगामेंट। सुप्रा के बाद में इंफ्रा नहीं आएगा, इंटरस्पाइनस लिगामेंट आएगा, एंड देन देर विल बी लिगामेंटम फ्लेवम, देन देर विल बी दिस स्ट्रक्चर दैट इज गोइंग टू बी लिगामेंटम फ्लेवम। अगर एपिड्यूरल है तो यहीं पर दवाई छोड़ दो, यही एपिड्यूरल स्पेस है, इसके थोड़ा आगे ही एपिड्यूरल स्पेस है, दिस इज द थिंग, यहीं दवाई छोड़ दो, सॉरी यहीं दवाई छोड़ दो, दैट इज गोइंग टू बी योर लिगामेंटम फ्लेवम। दिस इज एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। इसके लिए थोड़ी एक्सपर्टीज चाहिए होती है, बिकॉज हाउ यू विल आइडेंटिफाई कि एपिड्यूरल स्पेस में हो, यू विल बी हैविंग लॉस ऑफ रेजिस्टेंस, तो इसके लिए फीलिंग चाहिए होता है, लॉस ऑफ रेजिस्टेंस। सबएरेक्नोइड सिंपल है, अगर CSF तक जाओगे तो CSF का बैक फ्लो आ जाएगा, यू विल अंडरस्टैंड नाउ वी आर इन द नाउ वी आर इन द सबएरेक्नोइड स्पेस, राइट? वो देखते ही समझ में आ जाएगा, बट दिस एपिड्यूरल इज अ लिटिल बिट ट्रिकी, सो यू नीड टू हैव सर्टेन एक्सपर्टीज, राइट? सो दैट इज हाउ वी आर यूजिंग स्पाइनल एंड एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। ये वाला जो चार्ट है इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज गो थ्रू दिस जस्ट बिफोर योर एग्जामिनेशन, right? Now the next thing that we are having is the complication. What are the different complications that can happen, right? So first thing you will be having hypotension. Hypotension के ट्रीटमेंट के लिए क्या करेंगे, हाइपोटेंशन के ट्रीटमेंट के लिए यू कैन गिव अल्फा वन एगोनिस्ट, अल्फा वन एगोनिस्ट दैट इज गोइंग टू बी नथिंग बट योर फिनाइलेफ्रिन। फिनाइलेफ्रिन, फिनाइलेफ्रिन क्या करा देगा, वैसो कंस्ट्रिक्शन करवा देगा, दैट इज गोइंग टू बी hypotension treatment, right? Bradycardia के लिए drug of choice we have already discussed in physiology, in pharmacology you have studied, that is going to be your atropine. Bradycardia अगर हो रहा है, complication, these are the complications of anesthesia, अगर हो रहा है तो atropine दे दो। urinary retention also, I have taught you all these things in the parasympathetic nervous system, right? This is going to be neostigmine, नियोस्टिग्मिन, दिस इज गोइंग टू बी नियोस्टिग्मिन। नियोस्टिग्मिन मतलब क्या हो गया, यूरिनरी रिटेंशन, यूरिन बाहर नहीं जा रहा, कोलिनर्जिक दवाई दे दो, कोलिनर्जिक से क्या होगा, M1 M3 M5, M3 बताया था, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, यूरिन बाहर चला जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी योर नियोस्टिग्मिन, राइट? इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड वेयर, कब कब नहीं देना, अगर साइट पे इन्फेक्शन हो रहा है, व्हेन यू आर गोइंग टू इंजेक्ट समथिंग, आपको अंदर जाना है, यू नीड टू गो टू स्पाइनल, you need to go to subarachnoid space, but this particular site has certain infection, you will be avoiding this. Second thing, you will be having high or raised intracranial tension, इस केस में भी avoid करना है. Third thing, you will be avoiding this in the cardiac cases because it can even cause bradycardia, hypotension. These are the common complications. अगर ये common complications है तो we should be avoiding these in the
हार्ट डिजीज कहाँ यूज में ले सकते हैं? लेबर एनाल्जेसिया, लेबर के अंदर पेन किलिंग प्रोसेस के लिए वी कैन गिव एपिड्यूरल कैथेटर। एपिड्यूरल कैथेटर, उसमें क्या करोगे? लोकल एनेस्थेटिक डाल दोगे, साथ में ओपियोइड भी डाल सकते हो, राइट? पेन किलिंग के लिए वी कैन यूज ओपियोइड। फॉर पेन किलिंग पर्पस वी कैन ऑल्सो यूज ओपियोइड्स। एनाल्जेसिया के लिए हम लोग क्या यूज में ले सकते हैं? ओपियोइड्स यूज में ले सकते हैं। सो नाउ वी अंडरस्टैंड टू थिंग्स सेंट्रल न्यूरोएक्सियल ब्लॉकेट, या तो मैं सब एरिकनॉइड स्पेस के अंदर चला जाऊं और अपना ड्रग एक बार में छोड़ दूं, दैट इज गोइंग टू बी स्पाइनल एनेस्थीसिया, नीचे का पूरा हिस्सा ब्लॉक, राइट? दूसरा, आई कैन डू एपिड्यूरल। एपिड्यूरल में आई नीड टू गो टू अ स्पेस अबाउ द ड्यूरा एंड आई विल बी गिविंग माई ड्रग, दैट इज गोइंग टू बी एपिड्यूरल टाइप ऑफ एनेस्थीसिया, right? Next, try to solve this question. What is the needle shown in the picture? Is it a Whitcare, Sproti, Tuhi, or Quinky Bebok? What is this? So this is going to be nothing but your wing दिख रहा है. If you are able to see wings, there are certain markings. Wings भी दिख रहा है, markings भी दिख रही है. That is going to be nothing but your. This is going to be a case of Tuhi. This is going to be Tuhi needle. This is going to be your Tuhi needle, right? Which local anesthetic among the following leads to an increase in blood pressure? कौन सा बीपी बढ़ाएगा? कौन सा बीपी बढ़ाएगा? बीपी कौन से बढ़ेगा? बीपी कौन से बढ़ेगा बताओ? Which of the following is going to increase the blood pressure? Blood pressure बताया था. This particular thing. Cocaine is going to increase. Vasoconstriction can lead to hypertension. Hypertension, it can lead to increase in BP. So answer will be cocaine. Answer will be cocaine. Cocaine will be the thing, right? A patient presented with headache. Patient is having what? Headache, vomiting, fever. Meningitis was suspected while performing a lumbar puncture. Which of the last structure you will pierce just before entering into lumbar system? So now the question is about the lumbar puncture. They are not directly asking you for the anesthesia, but the question they want to ask you, and they want to know about the layers, that even if you know the layers or not. लंबर पंचर करने के लिए यू विल बी टेकिंग आउट द सैंपल ऑफ CSF. हम लोगों ने माइक्रो में भी पढ़ा था, जब भी मेनिंजाइटिस की बात होगी हम लोग क्या निकालेंगे? CSF. CSF कहाँ से निकालोगे? CSF कहाँ से निकालोगे? सब एरेकनोइड स्पेस में से. सब एरेकनोइड स्पेस में से निकालोगे. तो सब एरेकनोइड में जाने के लिए यू विल बी गोइंग फॉर द एरेकनोइड मेम्ब्रेन. पोस्ट in this particular thing, PDPH is not happening nowadays. We are changing the needles. आपने needles change कर दी. This thing is not happening, right? Ligamentum flavum नहीं, लिगामेंटम फ्लेवम नहीं है. ड्यूरामेटर नहीं है. ड्यूरामेटर ड्यूरा के ऊपर अगर जाना है, ड्यूरा के ऊपर इज गोइंग टू बी एपिड्यूरल स्पेस. एरेकनोइड के नीचे इज गोइंग टू बी और सब एरेकनोइड स्पेस, एंड दैट इज द प्लेस फ्रॉम वेयर वी आर गोइंग टू टेक द CSF sample. Right? What would be the most appropriate approach to manage a young male patient who received a regional block using 0.25 bupivacaine for a minor surgical process, but experienced sudden unresponsiveness and unrecordable pulse shortly after the injection? मतलब क्या हो गया यहाँ पर in this particular case? In this particular case, I have taught you the most cardiotoxic drug, most cardiotoxic local anesthetic is going to be what? Bupivacaine. Most cardiotoxic is going to be bupivacaine. अगर cardiac arrest वाला case दे रखा है, pulseless patient, pulse is not there, carotid pulse is not there, breathing is absent, that is going to be cardiac arrest. That is going to be cardiac arrest, and the treatment for cardiac arrest is going to be CPR. Treatment for cardiac arrest is going to be cardiopulmonary resuscitation. You will be using drugs like adrenaline, atropine. They are going to revive the patient, revive करना है उसको, right? But the ultimate drug here, this is a case of local anesthesia systemic toxicity, and the answer will be CPR. We need to give CPR with 20% intralipid. What is the drug that we are going to use? 20% intralipid. Very good, Sean, right? Wonderful, Rituraj. Wonderful, guys. Okay, now the next question: how do local anesthesia exert their mechanism of action? Next question that they have asked you. I've told you this is going to be your cell body, this is going to be your neuron axon, this is going to be your axon, and then we are having what? These are going to be your synaptic synapse will be there, right? So
How these things are going to get blocked? They are going to block the sodium channel. Sodium channel, कौन सा sodium channel? They are going to block the open type sodium channel. Open type sodium channel is going to get blocked, and once they are going to get blocked, you will be having problem, right? What is the likely diagnosis for a patient who received a 20% intralipid injection during resuscitation? Yes, Returaj Kajal. Yes, I'm going to block the sodium channel. What is the likely diagnosis for a patient who has received 20% intralipid drug? ये बहुत बार क्वेश्चन आता है 20% intralipid injection. So this is the drug we are going to use for local anesthesia systemic toxicity. ऐसे क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, गलत नहीं करने हैं, यही क्वेश्चन आते हैं, राइट? These are all your PYQs, right? During epidural anesthesia, which of the following structures are not penetrated? Now you need to answer. Which of the following structure is not penetrated during epidural anesthesia? सबसे पहले क्या होगा? The first thing that you will be piercing is going to be skin. After skin, you will be having fascia. You will be having fascia. After the fascia, you will be having supraspinous ligament. Then inter between the supraspinous, फिर दोनों के बीच में interspinous ligament. And then you will be having ligamentum flavum. And then you will be having epidural space, right? So what we are not going to pierce in the epidural anesthesia, that is going to be dura mater. Wonderful, guys. Wonderful. Excellent. Right? That is going to be your dura. That is going to be your dura, right? Next, which type of anesthesia is most suitable for pre-eclampsia? Pre-eclampsia में कौन सा anesthesia best है? Pregnant female. Pregnant female. What is the best thing? Are we going to give general anesthesia? No. बच्चा बाहर निकालने क्यों देना है general anesthesia? Caudal भी नहीं देंगे, spinal भी नहीं देंगे. What is the thing we are going to give? We are going to give Umesh, I have already uploaded, I have already covered microbiology in this particular session. Few days back I have covered, you can watch that, right? So this is going to be your epidural anesthesia. How do local anesthesias are going to work? They are going to block the sodium channels. What is the preferred anesthesia for dental surgeries performed in a daycare setting? Daycare setting. Yes, epidural will take long time. It will be working for long time. अगर हमको पेन किलर भी देने पेशेंट को, तो we can give painkiller to the patient for such a long time. Surgery, during the surgery तो चाहिए ही. After the surgery also we need it, right? What is the preferred anesthesia for dental surgery performed in a daycare? Preferred anesthesia in a daycare, that is going to be, we have already discussed, that is going to be infiltration. मतलब अगर टूथ एक्सटेंशन करना है, आरसीटी करना है, आरसीटी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके आसपास क्या डाल देते हैं? मे बी लिग्नोकेन, मे बी जाइलोकेन, मल्टीपल ड्रग्स वी आर हैविंग, वी आर पुटिंग इट ऑल अराउंड द नर्व. सो वहाँ पर क्या होता है, लोकल एरिया विल बी एनेस्थेटाइज्ड एंड देन वी कैन डू द एक्सट्रैक्शन easily, right? In epidural anesthesia, which of the following layer is least likely to be punctured during the procedure? In epidural anesthesia, which of the following layer, epidural में कौन सी लेयर को पंचर नहीं करोगे? Least likely to be punctured during the anesthesia. Are you going to see what? First of all, there will be skin, subcutaneous fascia, then there will be supraspinatus ligament, then there will be intraspinatus ligament, then there will be ligamentum flavum, which is not going to get punctured. That is going to be definitely, that is going to be your arachnoid membrane, right? Arachnoid membrane. Okay, now we are going to discuss about the muscle relaxants. We are having neuromuscular blockade. दो तरीके के neuromuscular blockade I have taught you, depolarizing, non depolarizing. देखो मसल की एक क्वालिटी होती है, we have discussed, मसल को ऑप्टिमल स्टिमुलस चाहिए. ज़्यादा दे दोगे काम नहीं करेगा, कम दोगे तो भी काम नहीं करेगा. इट रिक्वायर्स ऑप्टिमल स्टिमुलस, राइट? सो अगर ऑप्टिमल स्टिमुलस मैंने ज़्यादा दे दिया, दैट इज गोइंग टू बी सक्सिनाइल कोलिन. एसिटाइल कोलिन जनरली जाता है, नॉर्मली व्हाट विल हैपन, नर्व से एसिटाइल कोलिन निकलेगा और मसल में कॉन्ट्रैक्शन करा देगा. नर्व से, आई एम थिंकिंग अबाउट कॉन्ट्रैक्शन, नर्व से एसिटाइल कोलिन निकल रहा है, मसल में कॉन्ट्रैक्शन करा दे रहा है, नॉर्मल स्टोरी.
अगर बहुत सारा बाहर से डीप एसिटाइल कोलिन या सक्सिनाइल कोलिन आ जाए तो क्या कॉन्ट्रैक्शन होगा? नहीं होगा. दैट इज गोइंग टू बी द फर्स्ट कॉन्सेप्ट. आइदर आई कैन गिव डीपोलराइजिंग, मतलब बहुत सारा डीपोलराइज कर दिया, दैट इज गोइंग टू बी डीपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट. What is the example that we are having? That is going to be succinyl choline. Remember, this is going to be shortest acting muscle relaxant. Muscle relaxation क्यों चाहिए? अगर तुम सर्जरी कर रहे हो, पेशेंट ने मुक्का मार दिया, क्या होगा? लग जाएगी, राइट? पेशेंट लात मार सकता है. सो वी रिक्वायर द मसल रिलैक्सेशन, राइट? सो दिस इज गोइंग टू बी shortest acting muscle relaxant. It is contraindicated in nerve and muscle injuries. Very, very important. It is contraindicated in nerve and muscle injuries, and succinyl choline is a thing which is going to be associated with the malignant hyperthermia or bradycardia, right? These are the two important things. It will be having fast metabolism. We can also use this particular drug in the cases of rapid sequencing of induction. अगर किसी को intubate करते टाइम में इशू आ रहा है, so we can use this particular thing also, right? We can also use it for ECT, electroconvulsive therapy. Electroconvulsive therapy we are not doing very commonly nowadays. जो साइकेट्रिक पेशेंट्स होते हैं, वी आर गिविंग द शॉक देते हैं, उनको झटका देते हैं, राइट? दैट इज योर इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी. एंड द ड्रग ऑफ चॉइस नाउअडेज फ्रॉम साइकेट्री, यू कैन राइट methohexitol. The drug will be methohexitol is the drug of choice nowadays, right? And in the cases of difficult airway, we can definitely use succinyl choline. Patient शांत हो जाएगा and you can easily intubate. In non-depolarizing part, we are having two things. Non-depolarizing में amino steroids होते हैं and benzyl isoquinolones होते हैं. Lastly, we are having amino steroids and benzyl isoquinolones. amino में देखो सब में क्या आएगा? No आएगा. इसमें no आ रहा है तो we are having coronium. We are having coronium. All the coronium will be here. And remember, this benzyl isoquinolones will be having these are going to be your curium group of drugs. They are releasing what? Histamine. इनमें से क्या निकलता है बच्चों? हिस्टामिन निकलता है. और जो पुराने ज़माने के लोग होते थे, दोज पीपल विच आर यूजिंग लाइक सुई नीडल हंटिंग, राइट? सो व्हाट दे आर डूइंग, दे आर एडिंग दिस बेंजाइल आइसोकिनोलोन्स और फिर वो अपने शिकार को मारते थे. तो व्हाट विल हैपन टू द शिकार? शिकार के अंदर क्या होगा? शिकार के अंदर हिस्टामिन रिलीज होगा. हिस्टामिन, बहुत सारा हिस्टामिन इज गोइंग टू कॉज व्हाट? ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन ऑफ द शिकार, राइट? ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन ऑफ द एनिमल. एंड सेकेंड थिंग, वेसो डायलिटेशन ऑफ द एनिमल, राइट? तो वहाँ पर वैसो डायलिटेशन हो जाएगा, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा और वो मर जाएगा. इट इज़ अ सीवियस अनस्टेबल थिंग. इट इज़ अ सीवियस अनस्टेबल थिंग. वो जो भी जानवर होता था वो मर जाता था, राइट? इट इज़ गोइंग टू कॉज व्हाट? सीवियर ब्रोंकोस्पाज्म. सांस लेने में तकलीफ होगी, वो मर जाएगा, राइट? सो वी कैन यूज दिस पर्टिकुलर थिंग, बेंजाइल आइसोकिनोलोन. सेकेंड, वी आर हैविंग अमाइनो स्टेरॉइड्स. अमाइनो स्टेरॉइड्स जो हमने बनाया है, इनमें से हिस्टामिन नहीं निकलता. दे आर ऑल्सो मसल रिलैक्सेंट्स. दे आर ऑल्सो मसल रिलैक्सेंट. यहाँ पर मसल काम नहीं करेगी. देखो व्हाट वी वांट टू डू, अगर किसी को तीर मार दिया तो क्या होगा? मसल रिलैक्सेशन हो गया. नॉन डिपोलराइजिंग यहाँ पर बेसिकली ये नर्व में से तुम्हारा एसिटाइल कोलिन आ रहा है, बट दिस एसिटाइल कोलिन इज नॉट एबल टू बाइंड विद द रिसेप्टर. अगर ये रिसेप्टर के साथ में बाइंड नहीं करेगा तो क्या कॉन्ट्रैक्शन होगा? नहीं होगा. यहाँ कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो क्या ये जानवर भाग पाएगा? नहीं भाग पाएगा. दिस इज व्हाट वी वांट, राइट? अपार्ट फ्रॉम दैट, हिस्टामिन रिलीज हो रहा है, हिस्टामिन की वजह से ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, मर जाएगा, राइट? दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, राइट? अमाइनो स्टेरॉइड्स दैट वी हैव डेवलप्ड, they are having no histamine release. Secondary, they are CVS stable. They are cardiovascular stable. तो ये CVS stable है. Apart from that, we can use it in the cases of liver and kidney, right? एजेंट ऑफ चॉइस इन द केसेस ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा. ब्रोंकियल अस्थमा के पेशेंट को ये वाला मसल रिलैक्सेंट दे सकते हो, अट्राक्यूरियम से सट्रेक्यूरियम नहीं, बिकॉज हिस्टामिन रिलीज होगा, पेशेंट विल बी हैविंग एक्सग्रेशन ऑफ द सिम्टम्स एंड पेशेंट कैन डाई, राइट? पेशेंट माइट डाई. सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर. Lastly, we are having cisatracurium and atracurium. Cisatracurium और atracurium किस में आते हैं? ये curium में आते हैं. These are known as curare drugs, right? These are curare, right? So they are going to release what? Histamine. They are going to release what? Histamine, right? Second thing, cisatracurium, atracurium के बारे में दो चीज़ें याद रखनी है. क्वेश्चन पूछते हैं, they are going to undergo a special type of reaction that is known as Hoffman's elimination reaction. दैट मीन्स अगर हम किसी को भी ड्रग देते हैं, कोई भी ड्रग लेते हैं, तो वो ड्रग कहाँ से निकलेगी? आइदर इट विल बी गोइंग आउट फ्रॉम द योर लिवर, आइदर इट विल बी गोइंग आउट फ्रॉम योर किडनी, राइट? या तो लिवर में वो वाटर सोल्यूबल बनेगी, लिवर में कुछ ना कुछ उसमें ऐड होगा, मेटाबॉलिज्म होगा, या फिर उसका मेटाबॉलिज्म कहाँ होगा? किडनी में होगा. अल्टीमेटली इट शुड बी गोइंग आउट फ्रॉम द बॉडी, राइट? तो ये हॉफमैन एलिमिनेशन है, ये एक स्पेशल थिंग है, बिकॉज
the drugs will be having spontaneous metabolism, मतलब ना तो लिवर की ज़रूरत है मेटाबॉलिज्म के लिए, ना किडनी की ज़रूरत है. अगर लिवर ख़राब है तो भी दे सकते हो, किडनी ख़राब है तो भी दे सकते हो. तो इट इज़ सेफ इन द पेशेंट हु आर हैविंग किडनी डिजीज़. तो अगर किसी को मसल रिलैक्सेंट देना है किडनी डिजीज़, और सेफ इन द पेशेंट हु आर हैविंग लिवर डिजीज़, अगर लिवर डिजीज़ का पेशेंट है, किडनी डिजीज़ का पेशेंट है, यू कैन यूज़ दीज ड्रग्स. Right, what are the reversal agents? We are having reversal agents, that is going to be neostigmine plus atropine is going to be the indirect reversal agent. ये याद कर लो as it is. Sugamadex is the direct reversal agent for rocuronium and vecuronium. रो से याद रख लो, it is going to be rocket like, it is going to be faster. Okay, rocket जैसा. Calabadione is going to be for all the non depolarizing muscle relaxants. ठीक है, तो अभी तक क्या कहानी देखी हम लोगों ने. Depolarizing muscle relaxant succinylcholine, non-depolarizing two classes, either aminosteroids, either benzyl isoquinolones. Aminosteroids, no histamine release, C-base stable, safe for liver and kidney. Here atracurium, cisatracurium undergoing Hoffman's elimination, safe for liver and kidney, right? Mevacurium is the shortest one, right? Shortest acting. Bronchospasm करा सकते हैं. These are the things we have seen. These are the reversal agent. These are the 3 reversal agents that we have seen, right? Now try to solve the question. Which of the following is the fastest clinically available non-depolarizing muscular blocker? Exam question. Fastest non-depolarizing पूछ रहे हैं. That is going to be rocket, like I have told you, rocket, and that is what is rocuronium. It is going to be fastest rocket, right? And we are going to use for modified RSI also. Modified RSI मतलब modified rapid sequencing of induction. अगर किसी को फटाफट इंड्यूस करना है, वी कैन ऑल्सो यूज दिस पर्टिकुलर ड्रग, राइट? इन द प्रोवाइडेड इमेज द पेशेंट न्यूरोमस्कुलर मॉनिटरिंग was following, which of the muscle, which of the nerve is going to be depicted blue? कौन सी नर्व यूज में लेते हैं, कौन सी नर्व यूज में लेंगे? दैट इज गोइंग टू बी अल्नार नर्व. ये देखा था हमने न्यूरोमस्कुलर मॉनिटरिंग. मसल ब्लॉकेड इज अनदर थिंग. Okay, muscular blocker is another thing, neuromuscular blocker is another thing, it's not anesthesia. Anesthesia के अंदर हम लोग एक और कंपोनेंट लेते हैं, that is muscular blockade, right? क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर मसल ब्लॉक नहीं होगी, एनेस्थीसिया का मतलब एब्सेंस ऑफ सेंसेशन, राइट? उसी का एक कंपोनेंट है मस्कुलर ब्लॉकेट, राइट? सारी ड्रग्स मस्कुलर ब्लॉकेट नहीं करती, वी नीड टू समटाइम्स ऐड दीज ड्रग्स, राइट? नेक्स्ट वी आर हैविंग a patient who received a supraclavicular brachial plexus block with 0.5% bupivacaine. किसी को 0.5% bupivacaine दिया, develops hypotension. bupivacaine is the most cardiotoxic. इसको क्या हो गया? हाइपोटेंशन हो गया. इसको क्या हो गया? अरिथमिया हो गया. व्हाट विल बी द फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन? ट्रीटमेंट के लिए क्या देंगे? द डायग्नोसिस विल बी लास्ट. The patient is having hypotension and arrhythmias. What is the first line? Hypotension और arrhythmia में Sean, you are not going to do CPR. You are not going to do CPR in the cases of hypotension or arrhythmia. जब बिल्कुल बंद है, cardiac arrest है, then only you will be doing CPR. Remember this thing. जब तक you are having pulse, जिंदा है बंदा, तब तक CPR नहीं देना है उसको. अगर breathe कर रहा है, अगर pulse आ रही है, need not to give CPR. Okay, CPR नहीं देना इसको, right? What you need to give, the drug of choice for last is going to be 20% intralipid solution. This is what we have discussed. Okay, 20% intralipid infusion emulsion, that is what we are going to give. Okay, a patient with high bilirubin levels and high serum creatinine is planned for a surgery. बिलुरुबिन लेवल ज़्यादा है, मतलब क्या इंडिकेट करना चाह रहे हैं? हेपेटिक टॉक्सिसिटी, राइट? एंड सीरम क्रेटिनिन ज़्यादा है. ज़्यादा मतलब क्रेटिनिन इज इंडिकेटिव ऑफ व्हाट? हाई जीएफआर मतलब किडनी डैमेज है. किडनी डैमेज है तो दैट इज गोइंग टू बी व्हाट? दैट इज गोइंग टू बी मसल रिलैक्सेंट. कौन सा यूज में लोगे इसमें? इन दिस पर्टिकुलर केस you are going to use a short acting muscle relaxant, that is going to be a mevacurium. Remember, it is going to be shortest acting है. इसका साइड इफेक्ट कम होता है, राइट? It is going to be shortest acting, right? Now we are going to discuss whatever we have studied. Now you will be helping me to make the table. फटाफट बताना. देखो,
सिंपल क्वेश्चन जो पूछते हैं, आई हैव गैदर्ड ऑल ऑफ देम हियर एंड यू विल बी आंसरिंग मी. सो आईवी एजेंट पढ़े, इनहेलेशनल एजेंट पढ़े, मसल रिलैक्सेंट्स पढ़े, 3 चीज़ें पढ़ी है. आईवी एजेंट्स में हार्ट डिजीज के अंदर एजेंट ऑफ चॉइस वी हैव सीन प्रोपोफोल, इटोमिडेट, थायोपेंटोन और कीटामिन. तो एजेंट ऑफ चॉइस इन हार्ट डिजीज सीवीएस स्टेबल क्या पढ़ा था बच्चों? इटोमिडेट पढ़ा था, राइट. सेकेंड, वी आर हैविंग आस्थमा. इन द केसेस ऑफ आस्थमा द आईवी एजेंट ऑफ चॉइस इटोमिडेट, थायोपेंटोन, कीटामिन और प्रोपोफोल में से क्या होगा आस्थमा पेशेंट के अंदर? दैट इज नथिंग बट योर ketamine, right? Shock patient के अंदर, now you have to answer shock patient is having what? Shock. Patient is having shock. What is the agent, IV agent of choice would I like to use? Can I use propofol? Can I use thiopentone? Can I use etomidate? Can I use ketamine? What is the agent of choice in the shock patient? In the shock patient, what is the thing that we are going to use? These are all clinically important research we can use in different situation. All they have asked is the important ones, like shortest acting which one, longest acting which one. We can use this one also, right? What is this agent of choice in the IV agent of choice in the cases of shock? Remember, shock के patient में we have discussed ketamine is a sympathomimetic drug. It is going to be sympathomimetic. Sympathomimetic था ketamine. Sympathomimetic था, याद आ रहा है? So ketamine was the sympathomimetic one and it is going to be utilized in the cases of shock. Daycare surgery, agent of choice is going to be propofol. Neurosurgery, even the agent of choice is going to be propofol. In the inhalational cases, heart disease, desflurane and isoflurane we have discussed. In asthma, what is going to be utilized? In the cases of asthma, what we are going to use? Asthma के लिए क्या यूज में लोगे? We can use halothane, we can also use sevoflurane. अस्थमा पेशेंट, 2 ब्रोंकोडाइलेटर है हमारे पास में. इनहेलेशनल में 4 इंपॉर्टेंट पढ़े थे, हेलो, आइसो, सीवोडेस, राइट. दीज आर द 2 इंपॉर्टेंट वन दैट वी आर हैविंग. हेलो एंड सीवो, बोथ ऑफ देम आर यूज्ड इन द अस्थमा, राइट. शॉक पेशेंट के लिए बेस्ट विल बी डेस्फ्लोरेन, देन वी कैन ऑल्सो यूज आइसोफ्लोरेन. डे केयर सर्जरी वी कैन यूज desflurane for the maintenance agent of choice, and neurosurgery iso is going to be better for the neurosurgeries. What about this muscle relaxants? We are having vecuronium. Okay, heart disease we can use vecuronium, right? Heart disease we can use vecuronium. अस्थमा पेशेंट के अंदर नो क्रोनियम वाले याद रखने अस्थमा के अंदर, right? Because they will not lead to what? They will not lead to release of histamine, right? Next we are having this particular thing pancuronium. तुम्हारा pancuronium भी आ गया. That is going to be utilized in the cases of shock patient. In the cases of shock, these are your muscle relaxant, right? Day care surgery, that is going to be shortest acting, that is going to be your mevacurium. And neurosurgery, all of them are going to be good. Neurosurgery में as such कोई लेना देना किसी का नहीं है. So muscle relaxant we can use, typically we can use all of them, but generally we are going for the coronium groups. Right? So these are certain questions. Now we will be discussing about oxygen delivery system. Very important, guys. Nowadays they are asking question on the oxygen delivery system. Nowadays they are asking more questions on the oxygen delivery system. Nowadays they are asking more questions on the oxygen delivery system. So first of all, tell me what is FiO2. FiO2 means fraction of inhaled oxygen. For example, in the environment, there is 100% of oxygen. Out of that 100%, you are able to take 21%, right? 21% को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ? 21 by 100, that is going to be 0.21, right? तो confuse नहीं होना. This can also be written like that, okay? So sometimes they will write you in the question 0.21, 0.65, 0.45. That means what? FiO2 मतलब fraction of inhaled oxygen out of all the gas. तो whatever air that I am inhaling, जितना भी एयर में इनहेल कर रहा हूँ, आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर एयर ओनली 21% इज गोइंग टू बी ऑक्सीजन, एंड दैट इज व्हाट इज नोन एज फ्रैक्शन ऑफ इनहेल्ड ऑक्सीजन, राइट? नाउ वी आर हैविंग 2 important devices. Second thing you have to remember is about the flow meters.
फ्लो मीटर्स, दो चीज़ें याद रख लो, वन इज़ योर FiO2, सेकेंड वन इज़ योर फ्लो मीटर। ये फ्लो मीटर होते हैं, ये देखे होंगे हॉस्पिटल में लगे होते हैं, राइट, नियर द बेड दे विल बी प्रेजेंट, और इनसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। हियर वी कैन कंट्रोल द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, कम ज़्यादा यहाँ से हम लोग कर सकते हैं, दैट इज द फ्लो मीटर। दो चीज़ें याद रख लो, ठीक है। नाउ वी आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ डिवाइसेस, वन इज लो फ्लो डिवाइस, अनदर वन इज योर हाई फ्लो डिवाइस। लो फ्लो में वी कैन यूज नेजल कैनुलास, सिंपल फेस मास्क हो सकता है, फेस मास्क विद रिजर्वायर, फेस मास्क विद रिजर्वायर। हाई फ्लो में प्रेशर हाई होगा, that is going to be your venturi mask, nebulizers, high flow nasal cannulas, and we are also having ambu bag. Let's try to understand what are these things. So if someone is having mild hypoxemia, थोड़ा सा ऑक्सीजन की कमी है, what you can use this type of nasal cannulas, these type of nasal cannulas। कितना FiO2 दे सकते हो इससे, important is this thing, कितना FiO2 दे सकते हो, 0.24 to 0.45%, मतलब 45% ऑक्सीजन दे सकते हो इससे मैक्सिमम। फ्लो रेट विल बी, फ्लो रेट उससे कंट्रोल कर सकते हैं, वी कैन कंट्रोल इट फ्रॉम द फ्लो मीटर, दैट इज गोइंग टू बी 2 to 6 लीटर ऑफ ऑक्सीजन पर मिनट यू कैन गिव, that is how you need to understand, that is treated for the mild hypoxemia case, right। Simple face mask that we are using, these are also known as Hudson mask। यहाँ पर you can give 60% ऑक्सीजन, ये याद करना पड़ेगा, 35 to 60% ऑक्सीजन you can give, and the flow rate will be 6 to 10 liters per minute, right। Then we are having rebreathable and non-rebreathable mask that has been asked in your examination। So remember, rebreathable will be giving 6 to 10 liter of 6 to 10 liter per minute, and it can give 60 to 70% of oxygen, right। Non-rebreathable may be 60 to 80% oxygen can be given, but the flow will be more। Non-rebreathable में क्या होगा, flow will be more। This is the face mask with reservoir, यहाँ पर क्या दे रखा है, reservoir दे रखा है। I'm going to make you solve the question, you will understand, right। Venturi mask में क्या याद रखना है, here FiO2 विल बी 100%। इसमें क्या होगा, ये ऐसे वॉल्स मिलेंगे, ये डिफरेंट डिफरेंट कलर की अगर चीज़ें मिल रही है, इफ़ यू अप्रिशिएट दिस डिफरेंट डिफरेंट कलर की चीज़ें, दैट इज गोइंग टू बी योर वेंचुरी मास्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेंचुरी मास्क, राइट। ऐसे अगर डिफरेंट कलर की चीज़ें मिलेंगी, FiO2 यहाँ पर क्या होगा, फिक्स्ड होगा, फिक्स्ड 100% विल बी दैट। नेबुलाइजर तो वी आर गोइंग टू नेबुलाइज, वी आर गोइंग टू यूज टू वेपराइज द ड्रग, हम लोग इसमें कैप्सूल डालते हैं, व्हाट विल हैपन, इट विल बी कन्वर्टिंग इनटू ब्रीदेबल फॉर्म, राइट। नेक्स्ट इज योर HFNC सिंपल है, ये मशीन याद रखनी है, इसके अंदर क्या होगा, एक ह्यूमिडिफायर होगा, दिस मशीन विल बी हैविंग ह्यूमिडिफायर। इसमें हाई फ्लो नेजल कैनुला है, इसमें गैस बहुत फास्ट आएगी, राइट। इट कैन चेंज द FiO2 21 to 1, 21 to 1 मतलब 100% ऑक्सीजन दे सकते हैं। फ्लो विल बी हाई, कितना हाई फ्लो, 60 लीटर पर मिनट, वी कैन गिव 60 लीटर ऑफ ऑक्सीजन पर मिनट, ओके। सो दैट इज गोइंग टू बी योर HFNC, राइट। हीटेड गैस जो आएगी यहाँ से हीटेड आएगी और ह्यूमिडिफाइड आएगी, यानी कि ब्रीदेबल आएगी, मतलब साइनसेस की ज़रूरत भी नहीं है, राइट। अगर इतना स्पीड से दे रहे हैं तो वो साइनस उसको ठंडा गर्म करे, उसकी भी ज़रूरत नहीं है, इट इज़ गोइंग टू बी ऑटोमेटिकली हीटेड एंड ह्यूमिडिफाइड, राइट। एंड दिस इज योर बैग एंड मास्क वेंटिलेशन। इसमें भी हम लोग चेंज कर सकते हैं 0.21 to 1, कैसे चेंज कर सकते हैं, अगर इसको कनेक्ट कर दिया, इफ़ वी हैव कनेक्टेड दिस विद द एनी काइंड ऑफ सर्किट, सेमी क्लोज सर्किट पढ़े थे, अगर कनेक्ट कर दिया दैट इज गोइंग टू बी गिविंग 100%। मशीन से कनेक्ट कर दिया 100% दे देंगे, मशीन से कनेक्ट नहीं किया, नॉर्मली चल रहा है, नॉर्मली तो एनवायरमेंट की गैस जाएगी, दैट इज गोइंग टू बी 0.21 और 21%, दैट इज गोइंग टू बी योर 21% ऑफ ऑक्सीजन विल बी गोइंग, राइट। दिस इज वॉट वी आर यूजिंग इन द मैकेनिकल वेंटिलेशन। तो एक बार देख लो इसको, वी आर हैविंग माइल्ड हाइपोक्सीमिया इन द केसेस ऑफ नेजल कैनुला, सिंपल फेस मास्क, अगर ये बैग दे रखा है विद द रिजर्वायर, बैग नहीं दे रखा विदाउट रिजर्वायर, राइट। देन वी आर हैविंग हडसन में ये छोटे छोटे पॉइंटर्स याद रखने, राइट। नेबुलाइजर इज गोइंग टू मेक द गैसेस लिक्विड टू इनटू ब्रीदेबल फॉर्म, राइट। एंड HFNC में ह्यूमिडिफाइड हीटेड गैसेस विल बी देयर, 100% भी मिल सकते हैं, राइट। 60 लीटर्स पर मिनट इज द फ्लो रेट। हाई फ्लो नेजल कैनुला, नाम में लिखा है high flow nasal cannula, this is also nasal cannula, right। this is a mask, this is a Hudson mask, and bag and valve you can give 0.21 to 1%, 0.21 to 1%, right। so that is what you need to remember, this is the oxygen delivery system। Now try to answer, which device in conventional oxygen therapy will provide the highest FiO2, highest FiO2 किस में मिलेगा, highest FiO2 मतलब highest fraction of
highest fraction of FiO2 is going to be 100% ऑक्सीजन. भाई 100% ऑक्सीजन से ज़्यादा तो क्या ही दे दोगे, 100% से ज़्यादा तो कुछ नहीं दे सकते. सो वेयर डू यू गेट दिस highest FiO2? Conventional oxygen therapy, you will be getting highest FiO2. Yes. हाईएस्ट गैस किस में मिलेगा? हाईएस्ट गैस अगर देखो इसी क्वेश्चन में इफ दे विल आस्क यू ह्यूमिड और हीटेड गैस, अगर इसी क्वेश्चन में आई विल ऐड दिस पर्टिकुलर थिंग ह्यूमिड और ह्यूमिडिफाइड और हीटेड गैस विद हाईएस्ट FiO2, हाईएस्ट फ्लो, योर आंसर विल बी व्हाट? हाईएस्ट फ्लो, highest FiO2, highest flow, that is going to be क्या हो जाएगा? वंडरफुल, वंडरफुल गाइस, वंडरफुल. दैट इज गोइंग टू बी HFNC हो जाएगा, है ना. विच ऑफ द फॉलोइंग एयरवे डिवाइसेस हेल्प्स टू मेंटेन 24 to 60% FiO2 irrespective ऑफ द पेशेंट्स ब्रीदिंग कंफर्ट? यहाँ पर फिक्स्ड होता है, फिक्स होता है मतलब हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, राइट. दिस पर्टिकुलर थिंग आई हैव टॉट यू फिक्स्ड FiO2, दिस कैन even give up till 100%. ओके, इसमें ये जो चीज़ें हैं these are the valves, इनसे हम लोग चेंज कर सकते हैं. these are the valves, we can change the oxygen flow also, right? we can change it also, right? so we can shift on 24 to 60 with the help of these Venturi mask. इसमें हम color coding चलता है, इसमें we are having different color coding and we can use it according to the color coding, right? यहाँ पर क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, पेशेंट को ब्रीदिंग एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा. सो दीज आर द हाई फ्लो डिवाइसेस. ये जो हाई फ्लो डिवाइसेस है, दीज हाई फ्लो डिवाइसेस, जैसे मैंने तुम्हें बताया था व्हाट आई हैव टोल्ड यू अबाउट द स्पॉन्टेनियस वेंटिलेशन प्लस कंट्रोल्ड वेंटिलेशन. स्पॉन्टेनियस में क्या कर रहा था, बंदा खुद से सांस ले रहा था, एक में खुद से सांस ले रहा था, दूसरे में ऑटोमेटिकली मशीन इज गोइंग टू गेट कंट्रोल्ड वेंटिलेशन, है ना. तो वैसे यहाँ पर क्या होगा, मशीन इज गोइंग टू बी रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, राइट. Identify the equipment shown in the image below. What is the equipment that we are having over here? Can you appreciate? It is having humidifier, nasal interface. So this is going to be your high flow nasal cannula. This is going to be your HFNC nasal cannula. What about this? This is your PYQ. This is your previous year question. What is this? Identify the mask in the image used for the patients of COVID-19. Yes, this is going to be a non-rebreathing mask, non-rebreathable mask. This is what we have seen, right? So these are the important things. Just go through this particular thing once again, right? Now we are having what? Fluids. Now we are having last things, that is going to be your fluid. So we are having two types of fluids. One is going to be crystalloid, another one is going to be colloid. Crystalloid हो सकता है, कोलोइड हो सकता है, राइट. क्रिस्टलोइड, कोलोइड, लाइक यू मस्ट हैव सीन, लाइक वी आर हैविंग 0.9% NaCl. तो ये 0.9 ही क्यों लिखा हुआ है? 0.9 का मतलब क्या है? इट इज आइसोऑस्मोलर, इट इज आइसोऑस्मोलर टू प्लाज्मा. हिंदी में समझाऊं तो प्लाज्मा के अंदर, ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है, उसके अंदर मिक्स करोगे तो सेम कंसंट्रेशन है. ऐसा नहीं है कि नमक का पानी घोल के चढ़ा लोगे तो ठीक होगा, राइट. सो दिस 0.9% इज गोइंग टू बी आइसोस्मोलर, मतलब ये उसी कंपार्टमेंट के अंदर रहेगा. ब्लड के अंदर डाला तो ब्लड के अंदर ही रहेगा. अगर ये हाइपरटोनिक होता, आई टोल्ड यू इन द फिजियोलॉजी, अगर ये हाइपोटोनिक होता या हाइपरटोनिक होता, हाइपरटोनिक मतलब ये पानी को इकट्ठा करता, तो सेल्स में से वाटर विल बी कमिंग इनटू योर ब्लड वेसल, राइट. अगर ये हाइपोटोनिक होता तो ये खुद चला जाता सेल्स के पास में, जैसे हम लोग डेक्सट्रोज यूज़ में लेते हैं. डेक्सट्रोज क्या होगा? हाइपोटोनिक डेक्सट्रोज हम लोग यूज़ में लेते हैं, वो सेल्स के पास चला जाएगा, रिहाइड्रेशन कर देगा. इन द केसेस ऑफ डिहाइड्रेशन वी आर यूजिंग दैट, राइट. cellular rehydration, right. So we are having crystalloid, we are having colloid. Colloid is going to be, अगर किसी का रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, सपोज इफ समवन इज हैविंग रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, 2 लीटर ब्लड लॉस हो गया. अगर 2 लीटर ब्लड लॉस हो गया तो उसको कितना क्रिस्टलोइड चढ़ाओगे, कितना कोलोइड चढ़ाओगे? सिंपल अंडरस्टैंडिंग इज दैट जितना लॉस हुआ है उसका 3 टाइम्स चढ़ेगा क्रिस्टलोइड. अगर NaCl चढ़ा रहे हो, अगर RL चढ़ा रहे हो, NS चढ़ा रहे हो, तो कितना चढ़ेगा? 3 टाइम्स.
for every 1 liter loss of fluid, you need to give 3 liter. You need to give 3 liter of fluid. So if someone is having 1 liter loss of blood, that you will be giving 3 liter fluid to that particular patient. तो यहाँ पर अगर किसी का 2 liter blood loss हुआ है, तो you will be giving 6 liter of normal saline, or 6 liter of RL will be there, right? That is going to be the right thing. But what about colloid? If you want to give colloid, you need to supplement it in the ratio of 1:1, like we are giving blood for blood. If we are giving blood for blood, that is going to be a colloid, right? That is going to be a colloid, right? We are having things in the colloid like dextran. This is what is a colloid. This is your albumin. Albumin बहुत महंगा आता है. Albumin का क्या function होता है? What is the function of albumin? I've taught you multiple times. This is going to maintain the BCOP. BCOP मतलब ये blood को गाढ़ा करके रखेगा. It is going to make the blood thick. Till the time it is present in the blood vessel, the blood will be thick. As soon as this albumin is gone away, maybe it can be proteinuria of your nephrotic or nephritic syndrome. Maybe it can be liver cirrhosis. बन ही नहीं रहा है albumin. What is the symptom you will be having? ये यहाँ पर नहीं है तो क्या होगा? पानी बाहर आ जाएगा. पानी will come out and it will get accumulated in the cavities. एल्बुमिन का फंक्शन होता है ब्लड को गाढ़ा करके रखना. अगर एल्बुमिन नहीं है तो पानी बाहर आ जाएगा. If it is coming into abdominal cavity, we call it what? Ascites. That is why we are seeing the symptoms of ascites in the cases of hepatic failure and cases of cirrhosis. लिवर काम नहीं कर रहा है, एल्बुमिन नहीं बनेगा. एल्बुमिन नहीं बनेगा तो क्या होगा? ascites होगा. किडनी खराब है, प्रोटीन यूरिया हो रहा है. प्रोटीन कौन सा बाहर जा रहा है? एल्बुमिन बाहर जा रहा है. एल्बुमिन नहीं है ब्लड के अंदर. व्हाट विल हैपन? दिस वाटर विल लीक आउट. This water from the blood vessel will leak out and get accumulated in the interstitial space, and it will be presenting as a ascites, right? So this is the albumin. The function is to maintain BCOP, blood colloidal oncotic pressure. The function is to maintain blood colloidal oncotic pressure. These are your normosole. This is your normosole. This one is your plasma light. We are having RL, ringer lactate. We are having NS, right? These are the colloids and crystalloids that we are having. Replacement, I have already told you, like in the cases of RTA, 2 liter of blood loss, how you will replace with 6 liter of fluid. Here you will be giving 2 liter of colloid, right? Replacement ratio is going to be 3:1 in the cases of crystalloid. It is going to be 1:1 in the cases of colloid, right? What are the examples? NSRL, plasmalate A, normosole. What are the examples? Blood, albumin, starch, dextran. These are the examples of what? Colloid. These are the examples of colloid. Now try to solve this particular question. A 56-year-old male patient was brought to the emergency unconscious, and patient is reported with the chest pain about an hour ago. Along the way, lost consciousness. He is a known case of ischemic heart disease, diabetes mellitus. He has features consistent with cardiac arrest. Cardiac arrest जैसे feature है. What would be useful fluid in this particular situation? What is the fluid you would like to give? Patient is having cardiac arrest. मतलब blood flow नहीं हो रहा है. तो क्या चाहोगे? कौन सा solution दोगे? Either you can use normal saline, either you can use RL. Along with that, you are also, cardiac arrest is the symptom, is a disease, right? And this particular disease, which particular disease? It's not like Rituraj, it is not like which one is better. It is like which one is available. If you are having blood and your patient is having blood loss, on the right time, if you are having blood, you can give blood as well, right? But if there is nothing, we can use crystalloid. Crystalloids are the emergency drugs or most commonly used things, right? We are always giving RL. If someone is having blood loss, like hemoglobin is 9, we are not going to give him blood, right? We are going to give what? We are going to give fluids. Normal fluids are also helpful, right? So that is what we are going to do. In cardiac arrest, this particular patient, the drug of choice will be adrenaline. It is going to cause activation of alpha 1, alpha 2, beta 1, beta 2. That is going to activate all the receptor. The patient will be reviving again, right? So in this particular case, the drug of choice will be the drug that we will be using is normal saline. Dextrose, they are going to go into your cells. If they are going to go into your cells and not retaining in your blood vessel,
तो बीपी कैसे बढ़ेगा? ब्लड वेसल के अंदर नहीं है तो बीपी नहीं बढ़ेगा. व्हाट वी वांट वैसोकंस्ट्रिक्शन, वी वांट टू इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, तभी तो बंदा जिंदा होगा. यू आर प्रेसिंग द हार्ट, you are trying to increase the heart rate, you are trying to restart your heart, you need to have more bp. Okay, next thing, a 30-year-old male patient presented to emergency with the physical examination finding suggestive of severe dehydration. Now the patient is having severe dehydration. He is commenced on intravenous fluid at the rate of 1800 ml per hour. What cannula would provide the highest rehydration in this particular patient? So which of the cannula is going to give you the maximum flow rate? Which of the following cannula is going to give the maximum flow rate? Yes, Rituraj, yes, Kajal, right? So which of the following thing is going to give you the maximum flow rate? कौन सा कैनुला इनमें से सबसे ज़्यादा flow rate देगा? Yes, anyone? 5 more minutes I will take, don't worry about it. Right, so that is going to be a gray color cannula. Gray color, let's try to understand. So this is the mnemonic that we are having the lava is present in the lowermost part. The lava is going to be present in the lowermost part. जमीन के नीचे lava होता है, lava. Then we are having soil, then we are having grass, then we are having pink flower, आसमान होता है, and sun होता है. These are the things. And mnemonic कैसे याद रखोगे? What are the gauges? What are the gauges that we are going to have? We are having 14, 16, 18, 20, 22, 24 and 26 gauge. This is going to be your 26 gauge and this is going to be your space. Okay, one more mnemonic you can remember, and that is going to be O great God, please bless your people. You can remember any of them. Oh great God, please bless your people. Or you can also remember सबसे नीचे ज़मीन में लावा होता है, then we are having soil, then we are having grass, then we are having on the grass we are having pink flower. For the color coding we are having sky, we are having sun, and then we are having space. Anyway you can remember, you have to remember this. Okay, let me write it for you. So which one is having the greatest diameter? That is going to be your 14 gauge. 14 gauge is the cannula you are going to use in the road traffic accident. You were asking me, right? If someone is having 2 to 3 liter of blood loss, how you will be giving the blood? You will be injecting two large bore cannulas. That is going to be your 14 gauge cannulas, and you will be giving a lot of fluid to the patient. So that is going to have a capacity. Let me write the capacities for you. This is going to be your orange color. This is going to be your orange. Orange will be having capacity of 250 to 300 ml. 250 to 300. Second widest that we are having, because we do not have orange in the question, right? Second widest that we are going to have is going to be your gray color, and this gray is going to be 50 kam color, that is going to be 150 to 250 ml. And remember, both of them are going to be utilized in the trauma cases. Both of them are going to be utilized in the trauma patients, and trauma gray and orange cannulas, very important, right? Then we are having what? This green. This is your protein. This is your green color cannula. This one is going to be your pink color ka flower, right? So this green and pink, you can remember, green is going to have 100 to 120 ml flow rate, right? And pink is going to have 55 to 85, sometimes 85 or 80, you can remember, right? 80. These are going to be utilized in the adult people. These are going to be utilized in the adult people. So you can remember any of them. O, that is going to be orange. G is going, great is going to be gray, and next God is going to be for green, and please is going to be for pink. Then we are having what? Bless. B is going to be your blue color cannula. Blue color cannula will be having flow rate of 22 to 50. 20 to 50. Okay, then we are having this yellow, and lastly we are having this purple. This blue is going to be 20 to 50, yellow is going to be 15 to 20,
and purple is going to be 10 to 15. 10 to 15. These are going to be, purple is going to be utilized for the childrens which are premature, which are born preterm babies. We are going to use purple color cannulas, right? We can also use them in the very old people, we can use purple color. Yellow we are going to use in the pediatric patients, and this blue also we are going to use in the pediatric patients. So this is how you can remember the simple thing that you can remember. That is going to be, people is going to be for this one, this is going to be yellow, this is going to be blue. Here you are having pink, green, gray, and O, right? So this is pretty much that you have to remember about the table, right? So if they ask you which one is going to have the biggest diameter, that is going to be orange. 10 to 15 is going to be for the purple, 15 to 20 yellow, blue is going to be 20 to 50, 50 to 80 you can remember like that for pink, and 100 to 120 is going to be for green, and 150 to 250 for the gray, and lastly we are having maximum diameter, that is going to be your orange one, that is going to be your orange one. Now we are having last thing, these are your important one liners that has been asked in our examination. तो इनको फटाफट करते हैं, and you will be helping me to solve these questions, right? These are the two last slides that we are having. Try to answer this one, right? So we are going to have which agent not used in the patient with egg allergy. एग एलर्जी, आई हैव टोल्ड यू अबाउट द EGS. कौन सा यूज में नहीं लेना है EGS में? फार्मा, वी आर स्टडिंग anesthesia now. Pharma is already done on the app. We are having for propofol. We are going to have which agent not used in patients with egg allergy, that is going to be EGS. Egg lecithin will be there, egg lecithin will be there, and there will be soybean. So these are the things you have to remember, right? Next, should not be used if open for more than 6 hours. Which of the following anesthetic agent should not be used if it is open for more than 6.5 hours? कौन सा यूज में नहीं लेंगे? कौन सा यूज में नहीं लेंगे? Remember, it is again your propofol. It is again your propofol. Propofol. Okay. Most common used in daycare surgery. I hope all of you know this. Daycare surgery में सबसे ज़्यादा commonly used anesthetic agent, that is going to be nothing but your propofol. Propofol. Okay. Which causes adrenal suppression? Which of the following causes adrenal suppression? Adrenal suppression, I can also tell you that it is cardiostable agent, cardiostable IV agent. Both of them are going to be in the favor of same thing. Both of them are, the answer will be same, and it is going to be IV में चार पढ़े थे, propofol, thiopentone, etomidate and ketamine. So which one is going to be cardiostable? Which one is going to be cardiostable? Yes, very good guys, that is going to be your etomidate. That is going to be your etomidate. Which of the following is going to cause hallucination and delirium? Which of the following is going to cause hallucination and delirium? किसमें dissociative anesthesia मिल रहा था? किसमें dissociative anesthesia मिल रहा था? Dissociative anesthesia will be seen in the, which is the agent of choice in the cases of shock? Sympathomimetic drug. Which is the agent of choice in the cases of shock? कौन सा था? That is nothing but your, wonderful, that is nothing but your ketamine. Excellent guys, that is going to be your ketamine. Most painful on IV injection is going to be propofol, because it is having what? EGS. Egg lecithin will be there, glycerol will be there, soybean will be there. So it is going to be very, very painful. It is going to be very, very painful. बेस्ट IV ब्रोंकोडाइलेटर, IV एजेंट्स में चार ही पड़े थे, उनमें से भी बेस्ट ब्रोंकोडाइलेटर कौन सा था? प्रोपोफोल, इटोमिडेट, थायोपेंटोन, और लास्ट वी आर हैविंग व्हाट? ketamine, right? Last we are having is ketamine, right? So that is going to be nothing but your ketamine. That is going to be your ketamine. Ketamine is a best bronchodilator. Second gas effect or diffusion hypoxia, we are going to see it with the nitrous oxide. Which of the following is going to be preferred in children? Children में कौन सा यूज में ले रहे थे? Inhalational agent, that is going to be your sevoflurane. Sevoflurane is the preferred inhalational agent in the children.
Answer this one. Preferred for induction in asthma patient. Preferred for induction in asthma patient. तो asthma के patient में we have discussed, one we can use halothane, second we can use is sevoflurane. Halothane we can also use sevoflurane. Which one is going to be preferred in induction in cardiac surgeries, neurosurgeries और liver surgeries? कौन सा यूज में लेंगे? वी कैन यूज न्यूरो से याद रखा था हम लोगों ने, आइसोफ्लोरेन में न्यूरो के लिए यूज में ले रहा था. यू कैन ऑल्सो रिमेंबर कार्डियक और लिवर में भी यूज में ले सकते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज गोइंग टू बी प्रिफर्ड फॉर इंडक्शन इन रीनल, लिवर एंड कार्डियक फेलियर? अगेन रीनल और लिवर फेलियर में कौन सा दे सकता हूँ? डेस्फ्लोरेन भी दे सकता हूँ. एक चीज़ याद रखना, अगर कार्डियक दिया हुआ है, कार्डियक में हम लोग डेस के साथ में नहीं जाते, राइट? वी आर गोइंग टू गो विद द डेस्फ्लोरेन हियर इन द लिवर एंड रीनल फेलियर, राइट? शॉर्टेस्ट एक्टिंग डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर. डीपोलराइजिंग में तो एक ही पढ़ा है, एसिटाइल कोलिन डीपोलराइजेशन कराता है, तो और क्या डीपोलराइजेशन कराएगा? दैट इज गोइंग टू बी योर सक्सिनाइल कोलिन. दैट इज गोइंग टू बी योर सक्सिनाइल कोलिन, राइट? शॉर्टेस्ट एक्टिंग नॉन डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर, नॉन डीपोलराइजिंग, दैट इज गोइंग टू बी नॉन डीपोलराइजिंग मस्कुलर ब्लॉकर. कौन से याद आ रहे हैं? कुरोनियम एंड कुरारे. कुरोनियम एंड कुरारे. सो शॉर्टेस्ट एक्टिंग वाज योर मीवाक्यूरियम. मीवाक्यूरियम देखा था, राइट? फास्टेस्ट एक्टिंग नॉन डीपोलराइजिंग, दैट इज जस्ट लाइक द रॉकेट, रोकुरोनियम. एंड हॉफमैन एलिमिनेशन कहाँ देखा था? दैट इज सीन विद द atracurium and cis atracurium. So this is pretty much I want to teach you about this particular anesthesiology, right? One more thing that I want you to understand, you have to see one more thing from the emergency medicine part or from whatever notes you are having. So that is about the CPR management, that is basically BLS and ACLS. BLS, ACLS, this thing you have to see from your notes once again. If you are having issues, do ask me, no issue with that, right? Thank you so much for all the patience. These are my Instagram and Telegram. I'm going to put the link, the PDF over here. And the thing is, we should plan it and do it. We have mostly covered most of the questions you will be able to solve after this particular session. So feel free about it and just try to solve the question. If you find any difficulties, feel free to contact, right? And thank you so much for all the patience. I hope now you will be understanding this particular subject and no issue with this thing. Thank you Rituraj. It's a pleasure. I'm happy that I can help you, right? Thank you guys. See you in the next subject. Next subject that I would be taking is going to be medicine. I think tomorrow, or maybe tomorrow, is medicine, and after that I'm also going to take FMT. 5 subjects we have already covered, right? 5 subjects we have already covered, right? You can watch that also and share. Please share also, right? Thank you guys.